回首来路，尽管乱云飞渡，我们践行上海精神而取得成功。展望未来，世界动荡变革，我们仍需遵循上海精神，脚踏实地，砥砺奋进，更好发挥组织功能。一是坚持求同存异，志同道合是力量，是优势；求同存异是胸怀，是智慧。上海合作组织成员国都是朋友和伙伴，要尊重彼此差异，保持战略沟通，凝聚集体共识，加强团结协作，把合作盘子做大，把各国禀赋用好，把促进本地区和平稳定和发展繁荣的责任共同扛在肩上。二是坚持互利共赢，深化发展战略对接，高质量共建“一带一路”，在共商共建共享中增强地区发展动能，增进人民福祉，利用超大规模市场优势和各成员国经济互补优势，提升贸易和投资便利化水平，加强能源、基础设施、绿色产业、数字经济、科技创新、人工智能等领域合作，在彼此成就、共创未来中，共同迈向现代化。三是坚持开放包容。亚欧大陆孕育了古老文明，引领过东西交融，推动着人类进步。各国人民自古互通有无，取长补短。上海合作组织成员国要在人文交流中相知相亲，在经济合作中鼎力支持，携手打造利己达人、美美与共、和和共生的文明百花园。四是坚持公平正义，弘扬正确二战史观，反对冷战思维，阵营对抗和霸凌行径，维护以联合国为核心的国际体系，支持以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，倡导平等有序的世界多极化，普惠包容的经济全球化，推动构建更加公正合理的全球治理体系。五是坚持务实高效，持续推进上海合作组织改革，加强资源投入和能力建设，让组织机制更完善，决策更科学，行动更高效，尽快启用应对安全威胁与挑战综合中心和禁毒中心，尽快建成上海合作组织开发银行，
为成员国安全和经济合作提供更有力支撑。各位同事，中国始终将自身发展同上海合作组织发展联系起来，同各成员国人民对美好生活的向往联系起来。截止目前，中国对上海合作组织其他成员国投资存量超过840亿美元，同其他成员国年度双边贸易额突破5000亿美元。推动上海合作组织更好发展，中方始终讲求一个实字。中方计划在有需要的成员国实施100个小而美民生项目，今年年内向成员国提供20亿元人民币无偿援助。未来3年，对银行联合体成员行新增发放100亿人民币贷款。从明年开始，在现有基础上，将上海合作组织专项奖学金名额翻一番，实施上海合作组织博士生创新培养计划，供育学术科研卓越人才。未来5年，在成员国建设10所鲁班工坊，提供1万个人力资源研修培训名额。各位同事，志之所趋，无远弗届。让我们牢记初心使命，积极担当作为，以更加昂扬的姿态、更加务实的举措，推动上海合作组织行稳致远，朝着构建人类命运共同体的美好未来坚定前行。我就说这些，谢谢。
with the two leading powers in this part of the world. And then, of course, there is this very important conversation that is taking place. Look at the body language there. That's the Prime Minister. He is making a point. So perspectives are being exchanged. Who is the elephant in the room they're talking about, viewers? I would love to have been the fly on the wall here and have lent a ear to this conversation. These three people, without interpreters, are talking, they're confabulating. This beats just about any long-term engagement that you can have at a bilateral level, because this is completely in confidence. Three leaders speaking one language, trying to get on the same page. This really is, in live time, viewers, a reordering of the consensus globally. And it's happening even as the Prime Minister, very conscious of imagery, has put this out under his own handle. So this is very significant. People in the West are going to see the Prime Minister having tweeted these two photographs. As you can see, viewers, both these photographs from his own handle. This has not gone out from MEA, this has not gone out from the Namo page, but it has gone out from Narendra Modi's own handle, and it is a message. It's a very, very clear message to the world, specifically to the West, specifically to Washington, specifically to Trump, if Trump is listening, that India is going to exercise its strategic options, it's going to diversify its interests, and as General Kulkarni was saying, there are absolutely no permanent enemies. They're only permanent opportunities, and how well he put that. And this is what this photograph is signifying. So the Prime Minister saying, through his own handle, interactions in Tianjin continue, exchanging perspectives with President Putin and President Xi during the SCO summit. Now, remember, coming into this summit, President Putin had given an interview to Xinhua news agency, and he had talked about how BRICS can come together and make a huge difference globally. And that will trigger Mr. Trump, there is no doubt about that. And she urges making a global governance system fairer and more equitable. So this is also something that President Xi has said in his address. So the stress on the words, global governance system fairer and more equitable. Who, viewers, without taking names, is making the global governance system unfair and inequitable? That's the question that you can spring forth from this particular tweet that has been put out by President Xi. Also, President Xi has emphasized support for a multilateral trade system. Multilateral is the word that he has used. So President Xi emphasizing this term. Why? Because the Americans want to dictate terms to the global South, want to dictate terms to the non-West. They want to dictate terms in how trade should happen, what are the rules of trade that should be followed. But President Xi coming out very clearly and saying that there should be a support for a multilateral trade system at a time when the WTO, when the United Nations are failing. Sanjay, I just want to come to you, and Siddhant also, for perspective. Sanjay, first to you. Important statements. The Prime Minister putting out this tweet from his own handle, and that's got to count for something. It certainly will, Rahul, but while you are seeing all this before you, please don't forget to thank a certain gentleman in Washington who has done so much to make all this happen. The fact is that this is going to be a coming together that's not likely to just be frittered away or likely to just disappear. Putin has not taken orders clearly from Trump. Prime Minister Modi hasn't. Xi has seen the tariffs on China go from 10% all the way to 145, down to 30. And when Navarro adds in the other tariffs, the fentanyl tariffs, he adds it up to more than 50. At the same time, fresh threats from Trump that he may make it 200 if something doesn't happen his way. Xi is not going to accept a position for China as a yo-yo on Trump's ordering. This is a very clear shift that all the countries, all these three countries have made individually and are now making collectively. And let's not be ungrateful and let's not forget to thank Trump for this.
Well, I love the way you put it sarcastically across. Yes, we have to thank Trump. That's also the overriding sentiment. Siddhant, very, very quickly, are we expecting any reactions coming out of MEA on that statement that has been made by Navarro? What are you hearing? And after that, I'll take a very quick break. Well, right now, Rahul, we've been told that there's going to be no statement coming from Ministry of External Affairs, at least for today, because most of them are busy in Prime Minister's visit. But definitely, may not be today, but in days to come, MEA may not be directly countering what Peter Navarro has said. But definitely, we would get to hear something from them. Okay, well, we're going to be looking at that. We're going to take a short break very shortly. But Siddhant, I just wanted to quickly come across the very fact that the Prime Minister has tweeted this from his own handle is a message that is going out. And it'll also be, of course, commented upon domestically. Yesterday, there was so much commentary that was coming from the opposition, which was at some levels or the other taking pot shots at the Prime Minister for interacting with President Xi without actually turning the screws on China, etc., etc. You heard all of that. But this is both domestic and international signaling, isn't it? Well, absolutely, Rahul. In fact, the optics is very encouraging, but at the same time, talking about the interest, Rahul, then Russia is a time-tested partner of India, and China is the biggest neighbor of India. This is also very important to highlight. So it is very important to improve, to maintain ties with Russia and also to improve relations with China, and it's in India's interest. Also, very important to highlight that yesterday when Prime Minister Modi sat with President Xi, perhaps the border question was discussed. The fundamental issue is still remains the border issue. I'm going to have to take a very quick break. We'll come right back, Siddhant, to you, because we're going to be building up, of course, to the Prime Minister's speech, and after that, the interesting meeting. Vietnam first, and then we okay. My Prime Minister already. Thank you. Perfect.
the Prime Minister's left is a very important media advisor to him, Mr. Joshi, Mr. Hiren Joshi, and there are others, of course, and the entire group of interpreters are at the back. So the Prime Minister making that address from his position, and in just a short while we're going to have that live feed, and the Prime Minister is going to stress, as he has always done in this particular gathering, on the importance of developing trade links, diversifying India's interests, and of course most importantly on the issue of terrorism, which plagues most of the countries in this, especially cross-border terrorism. So you have the Prime Minister there talking, and in just a short while, viewers, we're going to get you that that feed. The audio will come shooting through, and I just want you to get a sense really of this hall, and you can see everyone's turned to the screen, everyone's listening very intently to what the Prime Minister is saying. I'm a little further away, so I'm not very close to the speaker, but right there in the foreground you can see a large number of journalists from other countries noting what the Prime Minister is saying. There's a long shot now, and you can get a better sense of where the Prime Minister is sitting, so you can see straight on around if that were a clock, then the Prime Minister is at about 1 o'clock in that clock, and that's where he's seated, and that's where he's speaking with members of the Indian delegation, and he's addressing this entire hall. And from the indications that we are getting, the speech is going to be focused on terror. Let me also quickly bring in Siddhant on this. Siddhant, you've been speaking to MEA insiders. This speech would have been prepared keeping a large number of cues in mind. What do you make of the preparation that has gone into this address? Well, that's right, Rahul, and it's very important to highlight that since the very beginning, India has been reminding China that cross-border terrorism is going to be an important issue for India during the SCO summit. In fact, Raksha Mantri Rajnath Singh, Rahul, when he went to attend defense ministers' meet at that point in time, since cross-border terrorism was not mentioned in the joint declaration, he refused to sign the joint declaration. After him, S. Jaishankar went to China in July, and in fact, he also gave a very strong message and stated India's position on cross-border terrorism, both during his meeting with the Foreign Minister Wang Yi of China, and also at the time of speaking at the SCO Foreign Ministers meet. In fact, in August, when Wang Yi came to India, he was again briefed on India's position, both by NSA Doval and S. Jaishankar. So we could expect a strong statement coming from Prime Minister Modi on cross-border terrorism, and perhaps a portion of that statement could definitely become the part of joint declaration, if joint declaration happens. Well, these pictures, as you can see, viewers, have been first broadcast into the media center here in Tianjin, and therefore you're not getting a live feed still. That will be deferred live, and it will come to you in a few moments, and you're going to see a lot of people sort of crossing, and that's because this is a busy media terminus where media from all across the globe is focused, and they're all at this moment watching those visuals coming through. There are a large number of others who are reporting on it. There are others, of course, who are taking notes to file their copies. There is a bunch of print as well as, of course, broadcast journalists. But let me just go straight across to Mr. Dogra. Mr. Dogra, the Prime Minister's speeches in the past have focused on a gamut of limited issues when it comes to the SCO. Do you think he's going to widen the ambit this time? Well, since in our discussions also, your interactions with other panelists, world order has come in repeatedly. Let me just clarify that world order is a big thing. It includes Bretton Woods 3, it includes the entire UN system and many more. So it's not the world order that is going to be changed. What will be changed and should be changed is the global high table, where, as I said earlier also, England and France should have no place. So I think Prime Minister's one of the points of focus might be that the world is changing and we must also adapt
accordingly, meaning thereby that the high table must be rearranged. Second is terrorism. There is no Vietnam first and then we okay. My prime minister already. Thank you. Perfect. Do stay on with me, Mr. Dogra, because I'm going to have to take a very short break. We'll be right back to you and get a sense of your comments on what the Prime Minister has eventually said. We're coming right back to you, so don't go. This is News 18 Network.
Please down, please. Please down. Sorry, sir. Please slow down a little bit. It's getting fair.
尊敬的各位同事，欢迎大家出席上海合作组织成员国元首理事会第24次会议。从世纪之初的黄浦江畔到今天的海河之滨，上合组织会议。从世纪之初的黄浦江畔到今天的海河之滨，上合组织走过不平凡的发展历程，为维护地区安全、促进共同发展、增进人民福祉作出重要贡献，树立了新型国际关系的典范。中方担任轮值主席国以来，各位同事关心支持中方工作，成员国各界代表积极参加中方主办的活动，落实阿斯塔纳峰会重要共识，上海合作组织政治、安全、经贸、人文合作走向成员国面临的安全发展任务更加繁重，中方愿同各方以这次会议为契机，总结经验，擘画蓝图，共同推动上海合作组织迈向高质量发展、高水平合作新阶段，携手构建更加紧密的上海合作组织命运共同体。下面我们开始今天的会议。请记得非常好。
The photo session now begins. Начинается фотосъемка. Спасибо. Thank you. 我们慢慢走啊，别着急，我们慢慢走，慢慢走啊，有慢慢走啊，有时间。东哥，往里边走，那边。往这边走，我们慢一点，慢一点往这边走过去。慢点，慢点，慢点。塔斯马加姆接通。亚洲航航长，经。Vietnam first and then we. Okay. 阿萨德汗。东盟。My prime minister already. Thank you. Perfect. Nice. 部长列别杰夫。上。舍耶夫。
马尔代夫总统。老挝人民革命军。印尼外相。塔斯马加姆接头。亚洲航航长。 And you can see that this is the rearrangement of the world order as we know it. Here are three leaders who represent the non-West countries. Two of them frame their politics as anti-West. Of course, India doesn't. India is the democracy. But you can see these pictures. There's President Xi, there's President Putin, and there's an Indian Prime Minister, Narendra Modi. All of them know each other quite well, as you know. They go back a long time. Prime Minister Modi knew President Xi from when Prime Minister Modi was the Chief Minister of Gujarat. And of course, over the last 10 years, these leaders have met at least 4 or 5 times. There has been a bit of a ebb in the ties of recent, and of course, we are trying to improve those relationships. Anand Narasimhan joins us also from New Delhi in the studio. Anand, over to you. Well, morning Rahul and morning to our viewers. It's been quite an interesting development, morning this last 4 or 5 hours, Rahul. 2 significant utterances or instances. One, the pictures that you were talking about, and the other one that is the comments that come from the White House Special Advisor. Now, there are multiple ways to look at what Peter Navarro has said, but clearly America is rattled. America is trying and drum up a certain level of frenzy about this, but clearly what one can see is that America is rattled. The other thing, the bonhomie between the three leaders, especially the way Prime Minister Narendra Modi greeted Vladimir Putin, and the three people standing there and engaging along with their interpreters. This is not just about regional cooperation. This is also sending a message back to Donald Trump, saying that the more you try and push us to a corner, the more we are going to organize ourselves and push back. Is that fair to read in that manner? Absolutely. There's a, when those pictures were coming through this particular venue, a large number of reporters from all countries were running to the screen. And they were trying to catch a closer glimpse, because this is the rearrangement really of the global order. It's been dictated for so long from the West, from Washington, D.C. after the Second World War, as you know, Anand. But it's a clear message that is going out that, look, we won't frame our outlook anymore. The countries of the East, the global South, will not frame its own politics, its own geopolitics in the laws and the rules that have been dressed up by the institutions of the West. So there has been a lot of talk, as you know, Anand, about the unrepresentative nature now of the United Nations, the WTO,
which are not open to the concerns of the global south. So this particular meeting, this particular summit is an important staging ground really for these three countries. And look, it's not just that photo of the bonhomie. As they enter the plenary hall, you have the Prime Minister in the middle, suggesting that, look, India is now, Bharat is the fulcrum of this new global rearrangement. I won't call it, a complete overhaul of the global order. We're still a few years, maybe a few decades from that point, but certainly a rearrangement in the manner in which geopolitics is going to be conducted, and also significant expression or symbolic expression of the tilt now in geopolitical power, in the way it's flowing in the world. So these countries have differences. That's not paper over them. Yes. But nonetheless, they're making an effort to send a message. So that's fundamentally where some of us are looking at this from. No, what's the buzz on ground, Rahul? You've been covering this continuously. You're seeing the developments happen on ground. With these leaders, the way they are meeting, the way they are engaging, are these nations going to be able to set aside their differences and work towards economic cooperation? Because right now, more than weaponizing arms, it's trade that's being weaponized. And all these nations depend on each other, especially Bharat. The way that we are developing and we are growing, we realize that for the smaller technologies, for some essentials, we are dependent on China because China is way ahead. China itself has not seen a certain amount of growth. It can only absorb a certain amount of debt. If there is a huge slowdown, that's huge pressure on Xi Jinping. Russia, on the other hand, the more it gets isolated by the West, it needs its regional partners to engage in trade. And the rupee-ruble trade keeps the dollar out. So there is also this entire slow progression towards the de-dollarization of the entire geo-economy. These are all multiple dynamics. And you've got a headline with you. Yes. Yeah, so, from the ground, you're absolutely right, Anand, that, the SCO needs to become a viable platform. Right now, there are just too many differences for it to become a viable platform. One of its defining principles is building mutual trust and also, of course, cooperation and security issues. With Pakistan in the room and some other countries who don't quite see the world in a manner where everyone should have a win-win equation, obviously that becomes a bit difficult. But if you really look at this newspaper, this is the China Daily. It's the most circulated newspaper in the English language in this part of the world. You look here at the bottom and you see that the bilateral equation, that those conversations that happened yesterday, a meeting that went on beyond its stipulated time by 20 minutes, right, is very prominently featured. And there's a whole editorial insight on this, and that editorial is here. If you look at that, and it says, neighbors cooperation, pas de deux, will be salient boon for global south. So a great emphasis is being put on this equation between New Delhi and, of course, Beijing. We shouldn't get ahead of ourselves. Correct. It's very difficult after typically these, high optic meetings between the Prime Minister and the principal of China to sometimes get swept up in the bonhomie. And then, of course, reality bites us. And I think we've been here about 3 times already. There have been false starts. But this time, I think, as you were saying, there are different pressures. And those pressures are making these leaders a little more pragmatic and therefore perhaps wanting to come together. And President Xi, if you just heard his message, talks really about securing the interests of the global south. So he's pointed out that we will not broach any interference from third powers in our affairs, and we would like to conduct our affairs bilaterally. That is also what was expressed by the two leaders when they met yesterday. And there's been a significant realteration of the language. So earlier they said, let's not our differences turn into disputes, but now they're saying that we don't see each other as rivals. So fundamentally, if they can walk the talk, there's going to be transformation. Well, you've had an early start and you've been holding fort for a while. So if you want to take a short, dip out and then coffee break and then perhaps join us back, you're most welcome. But if you are feeling up for it, Rahul, would like you to stay on the conversation because General Pandey is with us and Professor Swaran Singh with us. So, you were saying something?
You know me, we worked long enough together. I'm the eager beaver. I'm always up for it. So yeah, then stay on. So then, fantastic. So General Pandey is with us and Professor Swaran Singh with us. General Pandey, Rahul is on ground. He's spoken with Chinese reporters, senior reporters from CCTN. He's looking at the China Daily. He's also tracking what's happening. And these pictures speak for themselves. Professor Swaran Singh and General Pandey, good morning and Jai Hind. General Pandey, your thoughts first up. Yeah, good morning. And firstly, I could see Rahul. His eyes are looking actually tired, right? While he's very used to holding nights after nights, and we saw it during Operation Sindoor time. But coming to this point here, this SCO, the bilateral issue, very unfortunate that today India has got a great chance to project itself, because Modi is the only one in that entire SCO meeting who's not hemmed except for the tariff which has come from and we look at it as an opportunity. Xi, it is very important for him to show success in this meeting because of his internal pressures and the external environment which is pushing him into a corner because he stepped out too early, too fast, right? In a variety of, on the territorial part, on the land borders, on the seas and everything, and of course the debt and the so that is one part. Look at Putin though. The second most important person in the SCO when it was actually formed was Putin, and both, it was China centric, but both were very important players. Russia is again today into one corner and is fighting with his back behind the wall. Possibly the entire Western environment is against this one individual, not even I'll say the country. The only person who's there has got some power say is Modi. But what is happening? The media today is watching how many minutes of meeting happened. 40, 55, 60, 61. So it is a pressure on Modi, Prime Minister, to come back with some very credible outcomes, which doesn't happen because the outcomes have already happened. This was 1 year long process, started October last year. 10 months have passed. Number of things have happened in 10 months for actually continue to engage with China. So you have de-escalation having taken place, disengagement having taken place. You got with the Wang Xi in your, Mount Kailash Yatra had already started. 2-3 very important parts have already been put across. But everybody is now focusing on the security part of the bilateral and SCO, which is going to be extremely difficult. Please look at everyone. There are about 24 players, the leaders who are there. 10 of the member countries, 2 of observers, and 14 I think are 12 or 14 are the dialogue partners or something like that. Each one of them has got a conflict going either on the border or within the country. Are they challenged? You look at Myanmar, you look at Pakistan, you look at Azerbaijan also. Azerbaijan. All of them are conflicted. So while internal and external dynamics are playing there in terms of security environment, the Indian media and the political establishment is asking Modi to focus only on border, right? And our border issue, and unfortunately I am coming from the military background, so possibly it may not be very palatable to everybody, but I look at it that should he hold hostage development of 1.4 billion people to what niggles we continue to have on the border, or else we continue to prosper and progress. And I think I've spoken on your channel and of course with Rahul also, when big nations talk to each other, they continue to stab, parley, use weapons, do side shows and inner shows. That is geopolitics. That is geopolitics. But they continue to engage in terms of trade. Look at US and Russia. In spite of last three and a half years, the trade continued without anybody knowing or talking of it. Correct. While they may hold you hostage as India, because Trump wanted to be nominated for Nobel. But the fact of the matter is, Putin came out on the stage and said, in last 8 months, 20% of trade has gone. EU is engaging with Russia while pumping Ukraine with arms and this thing. So when you want to arrive as a big nation, responsible nation, you have to understand that you need to shake hand, continue to shake hand while continue to do other things in the business. Security gets subsumed in trade and commerce, which is larger requirement for 1.4 billion people of our country.
So weaponizing is not only trade is getting weaponized, technology is getting weaponized very actively and fast, actively. And even politics. Please understand, with the Soros things happening, and you see what yesterday Navarro made mention about India, that Brahmins are making money, and this is a typical Soros narrative, or even the the deep state, Soros-backed deep state entering into the White House. It's a very interesting turn of events, but it also highlights, General Pandey, the desperation. How is the American reaction being? Rahul is here. So how is the American reaction being read on ground, Rahul, by the grouping that is present there in Tianjin? How are they reading the way the Americans are reacting? And then Professor Swaran Singh, I'll bring you into this. Yes, Rahul. Well, I've been interlocuting with, of course, ME officials, and at this moment they don't want to comment on somebody like Navarro, specifically because of the tone he's chosen. I think General Pandey has made some very interesting comments there. But the Indian government has made it very clear that right now they're not going to take the bait. They're not going to get into that. Trump loves theater, and he wants to give himself an opportunity to react in a manner which others will not be able to, counter. So he's itching for New Delhi to perhaps be provoked enough, take the bait, and say things that he can seize upon and position as, look, India being unreasonable. But I can tell you that there has been a huge conversation in this particular hall amongst journalists, and some of them come from countries where it is state media. So they are really the spokespeople for their countries, and they talk about how India has shown the way, that Prime Minister Modi has shown the way to the rest of the world, how to actually conduct diplomacy at a time when America is flexing hard diplomatic power. It's a strange inversion, because over the last few decades it was the Chinese that were exerting hard diplomatic power, and there was a term for it also. But it's the Trump who is now borrowed or taken from the Chinese rule book, given up soft power and adopted this hard carapace as he's going into the world and trying to dictate terms. But these are the pictures, and just look at these pictures. These are being now put out by government. So this is a deliberate attempt at sending out a message, Anand, and these pictures show you the three leaders, and look at this long deliberation between President Putin and Prime Minister Modi. If this is not going to get Washington's goat, then nothing else will. And that just happened a few moments before they lined up for that. But there's Prime Minister Modi who strides in, and you can see that all the two leaders first engage in a sort of deep conversation, and then guess who comes in? And this triad could have been with others, but it wasn't. It was only these three leaders that actually met. So this would have been coordinated also, perhaps. And this message is going out, and the interpreters then follow in to basically translate for everybody. And there's such ease here of body language, despite the differences. I mean, we're coming off the Galwan Heights, the chill at the Galwan Heights, but look at the ease. True. We'll do a deep dive on that in just about 2-3 minutes. Let's just get Professor Swaran Singh in and his thoughts. From the India point of view, Professor Saab, even Bharat has a point to prove. Bharat is facing the highest amount of tariffs in this region, perhaps, or among the current set of nations. After China, Bharat has been singled out. There is a huge pressure coming in from the West. On the other hand, we are coming at the back of not interacting with China directly in the last 7 years. And we are on the cusp of a growth story. ये बस मिस हो गई तो हम पूरा मिस हो जाएंगे. That's how critical this is, the next 5-7 years. So, from Bharat's point of view, what is our net takeout beyond the optics? We'll come back to the optics in a bit, but yes, strategically. I think seriously, China can be a useful partner if we can cultivate and manage the irritants. In that sense, already a lot of conversations are already taking place, as you know, between various Indian private companies to look for joint ventures with the various Chinese companies, and we are in fact facilitating and relenting on our tightening of regulations on Chinese investments. We have already been easing the visa again, first with technical staff, now even with managerial staff of Chinese nationals. The trade is sought to be balanced by encouraging China's production in India under Make in India, for Make for the World, etc. So, because China is a world leader in manufacturing sector, between 30 to 34% of global manufacturing happens in China,
and currently 2 to 3 dozen sectors in technology where China is taking a world lead even over United States can potentially be something which India can use in this coming decade to catapult its manufacturing sector. You would remember same was the story of China. China was producing and sometimes still continues to produce for Western companies. At some stage, experts used to say China's world trade actually is only 44% Chinese. Rest is all Western trade produced in China and going around the world. So that kind of partnership between China and India is a possibility. Something is moving in that direction. But let me underline just one point. I agree with Rahul. India's response to Trump team has been that we are not going to take the weight. We are going to showcase how India has several other takers. So Indian Prime Minister is in Beijing attending 3 levels of meetings. In bilateral meeting yesterday, he already underlined that we need to focus on trust and managing of the border. And today in trilateral, there is a meeting of President Putin, President Xi Jinping, and Prime Minister Modi. You remember they met twice in June of 2018. And then India had moved into Vietnam first and then we. Okay. My Prime Minister already. Thank you. Perfect.
外强。埃及。蒙古国总。吉尔吉斯。亚美尼亚总理夫人。صلح أحسن塔吉克斯坦总统。印度总统莫迪。阿塞拜疆夫人。晚上好，非常高兴能够见到你。乌兹别克斯坦总统。热烈祝贺你，非常高兴见到你，王老师。非常感谢。
俄罗斯总统普京。Please down, please down. Sorry, sir. Please slow down a little bit. Give me fair. Okay. Done? Just done. Thank you.
可以开始。谢谢。
स्वीकार्य नहीं होंगे। हमें मिलकर आतंकवाद का हर रंग में, हर रूप में विरोध करना होगा। ये मानवता के प्रति हमारा दायित्व है। एक्सेलेंसी, अब मैं दूसरे स्तंभ सी यानी कनेक्टिविटी पर अपने विचार रखना चाहूंगा। भारत का हमेशा से मत रहा है कि मजबूत कनेक्टिविटी से केवल व्यापार ही नहीं बल्कि विश्वास और विकास के द्वार भी खुलते हैं। इसी सोच के साथ हम चाबहार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसे इनिशिएटिव पर काम कर रहे हैं। इनसे हम अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ संपर्क बढ़ा सकते हैं। हमारा मानना है कि कनेक्टिविटी के हर प्रयास में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान होना चाहिए। यही एससीओ चार्टर के मूल सिद्धांतों में भी विदित है। कनेक्टिविटी that bypasses sovereignty, losing trust and meaning. Excellency, तीसरा स्तंभ है O, यानी opportunity. Opportunity for cooperation and reform. 2023 में भारत की अध्यक्षता के दौरान नई ऊर्जा और विचारों का संचार हुआ है। स्टार्टअप और इनोवेशन, ट्रेडिशनल मेडिसिन, यूथ एम्पावरमेंट, डिजिटल इंक्लूजन और शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज जैसे नए विषयों को अपने सहयोग में जोड़ा। हमारा प्रयास था कि एससीओ को सरकारों के परे भी ले जाए। सामान्य मानवी, यंग साइंटिस्ट, स्कॉलर्स और स्टार्टअप को भी आपस में जोड़े। हमारे पीपल टू पीपल टाइम को दृढ़ता देने के लिए मैं आज एक और सुझाव रखना चाहूंगा। एससीओ के अंतर्गत एक सिविलाइजेशन डायलॉग फोरम बनाया जाए। इससे हम अपनी प्राचीन सभ्यताओं, कला, साहित्य और परंपराओं को वैश्विक मंच पर साझा कर सकते हैं। एक्सेलेंसी, आज भारत रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मूल मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। कोविड हो या वैश्विक आर्थिक अस्थिरता, हमने हर चुनौती को अवसर में बदलने का प्रयास किया। हम लगातार वाइड रेंजिंग रिफॉर्म पर काम कर रहे हैं। इसे देश में विकास के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए भी नए अवसर खुल रहे हैं। मैं आप सभी को भारत की विकास यात्रा से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। एक्सेलेंसी, यह खुशी की बात है कि एससीओ भी समय के अनुरूप इवॉल्व हो रहा है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग और साइबर सिक्योरिटी जैसी समकालीन चुनौतियों से निपटने के लिए 4 नए केंद्र बनाए जा रहे हैं। हम इस रिफॉर्म ओरिएंटेड माइंडसेट का स्वागत करते हैं। वैश्विक संस्थानों में रिफॉर्म के लिए एससीओ सदस्य आपसी सहयोग बढ़ा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर हम एकमत होकर यूएन रिफॉर्म का आह्वान कर सकते हैं। ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को
आउटडेटेड फ्रेमवर्क में कैद रखना भावी पीढ़ियों के प्रति घोर अन्याय है। नई पीढ़ी के बहुरंगी सपनों को हम पुराने जमाने की ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते। स्क्रीन बदलनी ही होगी। एचसीओ मल्टीलेटरलिज्म और इंक्लूसिव वर्ल्ड ऑर्डर का मार्गदर्शक बन सकता है। मुझे खुशी है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर आज एक स्टेटमेंट जारी किया जा रहा है। एक्सेलेंसी, हम सभी पार्टनर्स के साथ समन्वय और सहयोग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एससीओ के अगले अध्यक्ष किर्गिस्तान के राष्ट्रपति और मेरे मित्र प्रेसिडेंट जपारोव को शुभकामनाएं देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। So Prime Minister Narendra Modi there speaking about security, connectivity and opportunity, and underlining and mentioning the Pahalgam attack there, saying that security and separatism are two big concerns. And Rahul, somewhere it looks like his office is already anticipating what the opposition would say. There are a lot of memes, lot of jibes. The Congress has tweeted, Jairam Ramesh has said, Prime Minister Narendra Modi has... हमें मिलकर
会开始。谢谢。
Vietnam first and then we my friend is there already. Thank you, thank you, thank you.
印尼外长。埃及。蒙古国总。吉尔吉斯。亚美尼亚总理夫人。马里克。صلحي أحسن. 塔吉克斯坦总统。印度总统莫迪。阿塞拜疆夫人。乌兹别克斯坦总统。
Please down, please. Sorry, sir, please slow down a little bit. Give me fair. Okay. Done? Just done. Okay. Эти принципы верны и незыблемы по сей день. Именно на них выстраивается и деятельность Шанхайской организации сотрудничества, объединяющей единомышленников, приверженных идеям построения справедливого многополярного миропорядка. К нынешнему заседанию Совета глав государств подготовлен солидный пакет документов. А в главном документе Тяньцзинской декларации отражены согласованные подходы стран-участниц по насущным вопросам глобальной и региональной повестки дня. Конечно, отмечу и принимаемую сегодня стратегию развития ШОС до 2035 года, которая предопределяет магистральные направления деятельности Шанхайской организации в политике, экономике, безопасности, гуманитарной сфере. Темпы развития сотрудничества в рамках ШОС действительно впечатляют. Например, средний прирост валового внутреннего продукта стран-членов в прошлом году составил более 5%, промышленного производства 4,6%. Поступательно растет и встречная торговля. Все это выше мировых показателей. Во взаиморасчетах все шире используются национальные валюты. Мы выступаем за выпуск совместных облигаций государств-членов, за создание в ШОС собственной платежно-расчетной и депозитарной инфраструктуры, за формирование банка совместных инвестиционных проектов. Все это позволит повысить эффективность наших экономических обменов, обезопасить их от колебаний внешней конъюнктуры. В рамках ШОС последовательно выстраивается разветвленная и конкурентоспособная транспортная инфраструктура. Растут объемы автомобильных, железнодорожных и мультимодальных перевозок. Налажено тесное таможенное взаимодействие. Активно внедряется электронный документооборот.
полным ходом реализуется одобренная нами в прошлом году стратегия энергетического сотрудничества до 2030 года. Принимаемая сегодня в ее развитие профильная дорожная карта нацелена на проведение скоординированной и сбалансированной политики в сфере энергетики на всем пространстве Шанхайской организации сотрудничества. Как отмечали уже многие коллеги, расширяются связи участников организации в области науки и образования, и окружающей среды, спортивных и молодежных обменов. Успешно работает университет ШОС, объединяющий 77 вузов из наших государств. Регулярно проводятся форумы ректоров университетов, активизируется диалог между студентами, аспирантами и преподавателями. Уважаемые коллеги, наша организация последовательно наращивает влияние в решении актуальных международных вопросов, выступает мощным локомотивом процессов глобального развития и утверждения подлинной многосторонности. И, конечно, ШОС вносит ощутимый вклад в укрепление атмосферы сотрудничества и взаимного доверия на всем Евразийском континенте, помогая тем самым заложить политические и социально-экономические предпосылки для формирования в Евразии новой системы стабильности, безопасности и мирного развития. Системы, которая пришла бы на смену отжившим евроцентричным и евроатлантическим моделям и учитывала бы интересы максимально широкого круга стран, была бы подлинно сбалансированной. А значит, не допускала бы попыток одних государств обеспечить свою безопасность за счет безопасности других. Пользуясь случаем, хочу сказать, что таких же подходов российская сторона придерживается и в отношении кризиса вокруг Украины. Напомню в этой связи, что этот кризис возник не в результате нападения России на Украину, а в результате государственного переворота на Украине, который был поддержан и спровоцирован Западом. А затем попытками с помощью вооруженных сил подавить сопротивление тех регионов Украины и тех людей на Украине, которые этот переворот не приняли, не поддержали. И вторая причина кризиса заключается в постоянных попытках Запада втянуть Украину в НАТО, что, как мы многократно подчеркивали и говорили, причем на протяжении многих лет, представляет прямую угрозу безопасности России. Кстати, в результате государственного переворота на Украине в 2014 году было устранено то политическое руководство страны, которое не поддерживало вступление Украины в Североатлантический блок, в НАТО. В этой связи мы широко ценим усилия и предложения Китая, Индии, других наших стратегических партнеров, призванные содействовать урегулированию украинского кризиса. Отмечу, что понимание, достигнутое на недавней российско-американской встрече в Верхах на Аляске, надеюсь, также идут в этом направлении, открывая дорогу к миру на Украине. В ходе намеченных сегодня и завтра двусторонних встреч я, безусловно, проинформирую коллег более детально и подробно о результатах переговоров на Аляске. Мы, кстати говоря, вчера в ходе обеда, которого наши хозяева устроили для участников наших встреч в рамках ШОС, мы уже с председателем Си Цзиньпинем говорили об этом. Эта работа началась, я его подробно проинформировал о том, что у нас достигнуто в ходе переговоров с президентом Соединенных Штатов. И, конечно, чтобы украинское урегулирование носило устойчивый и долгосрочный характер, должны быть устранены первопричины кризиса, о которых я только что сказал, и о которых говорил неоднократно ранее. Восстановлен справедливый баланс в сфере безопасности. Разумеется, одной из приоритетных задач ШОС видится поддержание стабильности в странах-участницах и по периметру внешних границ.
Россия поддерживает подготовленный к нашему заседанию проект программы противодействия экстремизму до 2030 года и готова включиться в реализацию этого документа. Крайне важным также считаем выносимое на подписание сегодня соглашение об учреждении в Ташкенте универсального центра ШОС, который займется реагированием на весь спектр современных вызовов и угроз, и об открытии в Душанбе отдельного антинаркотического центра. Рассчитываем, что эти центры начнут работу уже в самое ближайшее время. Завершаем. Хотел бы поблагодарить китайских друзей за весьма результативное заседание глав государств ШОС. Уверен, что вопросы выполнения достигнутых здесь, в Тяньцзине, договоренностей будут предметно рассмотрены на заседании Совета глав правительств ШОС, которое, как условлено, пройдет в ноябре в Москве. Будем рады видеть делегации всех ваших стран, дорогие друзья. Естественно, желаю успеха президенту Киргизии Садыру Нургазевичу Жапарову и киргизским коллегам, которым после нынешнего саммита переходят функции председательства в Шанхайской организации сотрудничества. Благодарю вас за внимание. Vietnam first and then we My minister already. Thank you, thank you, thank you. Perfect, perfect.
蒙古国总统。吉尔吉斯。亚美尼亚总理夫人。صلحوا أحسن. 塔吉克斯坦总统。印度总统莫迪。阿塞拜疆夫人。晚上好，非常高兴。乌兹别克斯坦总统。热烈祝贺你，非常高兴见到你，王老师。
Please down, please. Sorry, sir, please slow down a little bit. Give me fair.
Please down, please down. Sorry, sir, please slow down a little bit. Oh. Give me a fan.
从世纪之初的黄浦江畔到今天的海河之滨，上合组织走过不平凡的发展历程，为维护地区安全、促进共同发展、增进人民福祉作出重要贡献，树立了新型国际关系的典范。中方担任轮值主席国以来，各位同事关心支持中方工作，成员国各界代表积极参加中方主办的活动，落实阿斯塔纳峰会重要共识，上海合作组织政治、安全、经贸、人文合作走向成员国面临的安全发展任务更加繁重，中方愿同各方以这次会议为契机，总结经验，擘画蓝图，共同推动上海合作组织迈向高质量发展、高水平合作新阶段，携手构建更加紧密的上海合作组织命运共同体。下面我们开始今天的会议。请记得非常的。可以开始。谢谢。
Vietnam first and then we. Okay. Thank you very much, sir. My Prime Minister already. Thank you. Perfect.
蒙古国总统。吉尔吉斯。晚上好。亚美尼亚总理夫人。صلحي أحسن. 塔吉克斯坦总统。印度总统莫迪。阿塞拜疆夫人。晚上好，非常高兴能够见到你。乌兹别克斯坦总统。热烈祝贺你，非常高兴见到你，王老师。Вас приветствую.
Just please down, please. Please down. Sorry, sir. Please slow down a little bit. Oh. Give me a fan. Okay. Done? Just come. Thank you.
Just down, please. Just down. Sorry, sir. Please slow down a little bit. Oh. Give me fair. On the line, a significant, if not realignment, a certain reset of how global, alliances and partnerships are going to work going forward. Well, it is optics for sure, Zaka, and very powerful optics. But optics are used as an important tool in diplomacy, as a way to send a message. I mean, you could not have, you did not see these smiles and handshakes between Prime Minister Modi and President Xi Jinping, say, 2 years back. So optics do send a message. Yes, I think all sides are cognizant of the fact that officials in Washington, in the White House, will be watching the pictures coming out of Tianjin today, which is why
I think they're all like Rahul said, posting these pictures from their official handles to tell the world that this is a convergence of leaders who are trying to build an alternative to the Western-led order. So optics for sure, but optics with a message and optics not without substance. Because if you look at the joint statement, you see that each side has sort of safeguarded their position, at the same time shown the intent to work together, whether it's the BRI, where India is focusing on the north-south corridor, the Chinese are talking about the BRI and how that is a good alternative at a time when the Americans are scaling back their engagement, or terrorism, a big win for India there. I'm sure you've discussed this, that Pahalgam has been mentioned in the joint statement and signed by all leaders. So India has been able to reaffirm its position. India has been able to keep its interests intact here, at the same time shown a willingness to work with others. And that is a message for sure for Washington. I want to get one more question to both of you before we go to our guests. And I'll start with Palki. Yes, this is a significant sort of signaling, no doubt about it. It could be optics, it could be more than optics. Like you said, in diplomacy, optics count for a lot. I know people who've made careers reading body languages of leaders. But the point is that how is this going to be viewed in Washington? How is this going to be viewed in London, in Paris, in Berlin, at a time when willy-nilly the onus of peace in Ukraine, the onus of trying to end that war and move it in the direction of peace, India too has been made a party to it by Trump and his oil tariffs. Palki. I think Washington should see this as a moment to reflect on its actions, on how what was meant to bring them leverage, the tariffs and the sanctions, has sort of backfired with all of these countries coming together. India would not have probably gone this far. If you look at the joint statement, Zaka, India has joined others to condemn Israel and the US and their strikes on Iran, and that is not the kind of language that India would have probably used in the past. It has said that we need to look at the Palestinian cause and we need to look at the Iranians, but words do matter again. So I think India has also shown its displeasure very clearly, very subtly, and sometimes not so subtly. And Washington would be watching this. We are seeing the frustration in the statements of Peter Navarro, which are plunging into absurdity now, talking about the caste issue in India and so on and so forth. So that shows that they've not been able to sort of read the room well, and now the frustration is building up. I wonder how Donald Trump is going to respond to this, whether we'll see posts on Truth Social. He has been very vocal in his opposition to the BRI, saying he's going to punish all those countries, but he's not really said much about the SCO. Maybe he does not know enough about this group, or he does not see it as a threat yet. But after looking at the pictures that have come out of Tianjin this weekend and the statements of the leaders, I'm sure there'll be a reaction from Washington, and hopefully it will trigger some sort of an introspection on what they're trying to do, how they treat their partners and rivals, and how it is not serving their interests, or anyone's interest for that matter. All right, Palki, thanks for that. Rahul, just going through the joint declaration that's been adopted by all leaders, big win for India in terms of the fact that the Pahalgam attack has been explicitly mentioned. It has been condemned by all members. This was the reason why, when the defense minister visited back in June, the reason why they didn't adopt it unanimously was because they refused to mention Pahalgam. So a big win as far as the issue of terrorism is concerned, and the specific mention of Pahalgam in the joint declaration. Also, as Palki was mentioning, there are other things which are there where India also may have had to compromise a bit, including the reference to the attack on Iran, the reference to the Jafar Express attack. What do you make of the joint statement, looking at the language? I think it's a very important document, because we do tend to forget that the Chinese have made quite an effort in Tianjin to accommodate India. Now, if you just go by the optics once again, you saw Shehbaz Sharif cutting a very lonesome figure, forlorn figure, as he looked on as the triad came together. Now, there are other countries like Turkey, etc., that have helped Pakistan in the recent past, especially militarily. All of them would have been chafing at the messaging that has gone out with regards to specific reference to Pahalgam. All of them will see themselves as culpable in some way or the other to build Pakistan's capacity to be this agent or agent provocateur of terror in this particular region, specifically against India. So there's a larger message going out from Tianjin that, look, I think we need to start putting the past behind us. One of our affirmative principles is to ensure regional security and, very importantly,
ensure against anyone impinging on the territorial sovereignty and integrity of the other country. So a beginning is being made. I just want to add a caveat. Yes, there has been a condemnation of Pahalgam, but has there been action on terror? There is also another statement about terror financing. India is very keen to build consensus globally through the FATF to bring back a sanctions regime on Pakistan. And if somehow or the other we can incorporate major consensus on this issue, we might see progress. So that is another end outcome. But as ends go, we need to define those ends. We need to realize those, actualize those ends. Those ends need to be actualized for this statement to actually begin to assume a more substantive, less symbolic, more substantive, actualized form. That's the test. Whether the Chinese will help India go out to the United Nations to sanction terrorists, etc., that'll be the actual test. Let's see if these countries walk the talk. It certainly is. The proof of the pudding is in the eating. Let's see if that plays out the way India is hoping and has been, campaigning for and lobbying for a number of years. Now, Rahul, we'll come back to you as and when that bilateral meeting begins. We were expecting that to happen at around 9:45 India time. It's been an hour and a half, so it's been delayed. But you could see the images of this is where the meeting is going to happen between President Putin and Prime Minister Modi. It's an important, very, very consequential bilateral meeting, not least because Trump and his policies have really sort of tied India in to becoming a stakeholder, if you will, in getting peace in Ukraine. He has basically said that until India puts pressure on Russia, people like Navarro even going to the extent of saying that it's Modi's war. And the statement that he made overnight, which has now gone viral this morning here in India, saying that Brahmins are profiting, it's not just, inaccurate, factually wrong, it is absolutely insulting. And it is, in a way, poking your finger in the internal affairs of India. Such a person has no business talking about what's going on in India. And even as a slight, even as an insult, that is something that is extremely, extremely gravely offensive, no doubt about it. So the picture on your left of Prime Minister and President Putin sharing a car ride to the venue where the bilateral will happen. And in the bilateral, once the cameras go away, there will be substantive conversations on what is President Putin's vision, what is his timeline as far as getting peace in Ukraine is concerned, because willy-nilly, like I said, the secondary tariffs, the oil tariffs that have been imposed in India are linked to Russia moving towards a path of peace in Ukraine, whether we like it or not. You could call it unfair, and that's what the MEA has said. It's unfair, it's unjustified, it's unreasonable, all of which is true. But at the same time, it is also a reality that India needs to get rid of the oil tariffs. All right, these are the pictures of both the leaders entering the car. You can see a Russian journalist there shooting this, and in the background you can see both the leaders walking together, President Putin offering the car ride, and then Prime Minister Modi hopping in to President Putin's cavalcade, and then both of them riding off to the venue where the bilateral will happen. I want to now open this up to our guests. Anil Trigonath is a former diplomat. Lieutenant General S.L. Narasimhan is joining us, former member of the National Security Advisory Board, and here in our studios, former General Officer Commanding of the 15 Corps, Lieutenant General D.P. Pandey is here in our studios. Ambassador Trigonath, I'll start with you. I mean, I asked this to my colleagues in Tianjin as well, that look, optics do matter in diplomacy. Pictures speak 1,000 words, more so in your profession, in your world. How will these pictures be viewed? Are they being seen as a fundamental reset of ties in this part of the world between Russia, India and China, or are they just being consumed for the optics that are emanating from Tianjin? Will they be viewed in Washington, in London, in Berlin, etc., as a significant reset of ties, or merely just diplomatic optics that happen on the sidelines of a summit? Well, thank you, Zaka. In fact, as far as Russia and India are concerned, or President Putin and Prime Minister Modi are concerned, this is no optics. This is very clearly a very substantive, powerful, strategic partnership, which has been in display all along, not from now alone. The fact that the way they were bantering with each other, walking with each other hand in hand, and the three of them were also talking at one time, conveyed a message, very clear message. And this is not the first time that President Putin and Prime Minister Modi are traveling together. If you remember, during Prime Minister Modi's visit to Sochi, even though it was a short visit, President Putin drove him personally around in the car
for nearly and spent about 10.5 hours with Prime Minister Modi. So they share a very tremendous understanding and bond and mutual respect for each other, which is what was on display here. So as far as Russia and India are concerned, I can say that it is no optics. Nobody has to read. All the Western countries, including the United States, understand that. Even Trump himself wants to be very pally with Putin, as we have seen it in Alaska and elsewhere. So it is not that this is going to really cause them any star. However, the relationship which is improving now between India and China, that is something that will naturally bring about concern there in that case. And all three getting together, not in a bloc formation, which has, of course, been very clearly conveyed in the statement also, declaration that was issued, that this is not a bloc. So this is something that is being said here, and that is very important because India does not believe in blocs or anything anti-West or something like that. These are passing phases in every history. We have a passing phase in the US relationship. But I personally feel that what happened between India and the US is actually should be a great eye-opening for us. That dependence on the United States is totally unreliable and can be untrustworthy. They have been always trying to undermine our strategic interests very often, even though saying something different, because we know about what China is. We know about others. But with the United States, if you thought that democracy and also that has all been, so I think it's come as a blessing in disguise. And Peter Navarro type of people are actually cementing that perception. Okay. And that is so let me ask, there might be impediments, General Pandey is here in our studio, there might be impediments and limits, let's say, not impediments, but more limits to the coming together of Russia, India, China. But for now, given the context of the, really troublesome times that we're having with the United States, particularly with the Trump administration, when you have leaders of three big countries meeting like this, there is shared bonhomie, there is a degree of conviviality between the three of them. It may not amount to much. It's optics, no doubt about it, but optics do matter in diplomacy. How and why do you think this is important? Coming as it does, if this were to happen 1 year ago, maybe people wouldn't have paid as much attention, but it's happening now, when the whole world is fed up of these Trump tariffs, and India in particular has been hurt by the Trump tariffs. These pictures coming out of Tianjin now, why are they important, General Pandey? So, I think I must accept one point that Prime Minister Modi since the time, last about a decade and all, his approach to engage with foreign leaders has been warm, effusive. He's stepped across. He's changed the paradigm of how leaders engage with other leaders. So that is one thing which he has done. But the response which comes out, like the similar response was there in the first Trump 1.0. But this time, post-Operation Sindoor, something has flipped. And unfortunate that Trump has lost the narrative with India. And what is happening, I'll just keep it aside. But this optics is something very significant because two top leaders of the world today are traveling in the same vehicle in a third country, right? It makes a huge impact. And look at the contradictions. The contradictions are, on one side, that Trump and his the sidekicks are calling for India as perpetuating or feeding into the Russian-Ukraine war. Whereas Russia and Ukraine are having a different voice and chatter on the subject. Zelensky has spoken to Prime Minister Modi at least 3 times, and just prior to his arrival here, he's had a long conversation to urge him to possibly allow for peace to prevail. So, and the release of this information which has come about, the diesel going out to Ukraine is another major message. So you look at the whole thing that today Putin in his message, he is the only person, possibly leader, who's used the SCO platform to make a conversation about possibly America on this subject, that he's talking of the country should not interfere into security of other countries and such like statement. So I think he's complimented India and China for trying to resolve the conflict proactively. So these are contradictions which are happening. I guess somewhere the Trump administration needs to actually have a hard look that where are they going wrong. And this SCO meeting was decided long time back. Correct. But the kind of effort this time Chinese have gone through in last about 3 to 4 months to ensure that Prime Minister Modi comes and
comes and attends it, attends this thing, and the coverage which has come about into the newspapers. In fact, the only bilateral which has been talked about, there have been multiple bilateral or Xi with other countries, this thing. The photographs and the conversations have come out in the front page of this thing. So I think this is one of the rare times where the countries are proactively engaging India to come about. But the sensible posturing which the country has done today is that there are no negative comments, only symbolic messaging which is going out. This, on various tweets and stuff like that. So if I can ask General Narasimhan, I agree with General Pandey. Obviously, the messaging that's come out, the statements that have come out from the Chinese side, even the Indian side yesterday after the bilateral, very, very positive, very, very encouraging, no doubt about it. And frankly, if these three countries come together, and there was this postulation of an RIC, or a Russia, India, China, RIC as it was called, a subgroup within BRICS, to come together. If that were to actually happen, it will be a significant groundbreaking shift in diplomacy. But at the end of the day, General Narasimhan, there are inherent contradictions also, and inherent limits to how far India and China can come together, how far India and Russia can come together. How would you characterize what's happening in Tianjin right now? Is it a significant reset, or is it sending out a message at a time of great global flux that India is not deprived of partners, it is not tied to the West in any form or fashion, that it can choose to be friends with Russia at the same time? The President of Ukraine is calling the Prime Minister of India, saying that please, when you have the conversation with the President of Russia, please impress upon him to move towards the path of peace. So clearly India is also showing that we're not tied to any camp, and we can choose to be friends with whoever we want to be friends with. Thank you very much, Zaka, for getting me on your show. I think you're absolutely right. The thing that we need to look at is, I want to put a little bit of caution in all this positive statement that are coming out at this point in time. The reason is, if you look at the statement that came out from India and China after the bilateral meeting yesterday, I hardly find anything new in those statements. So all the three mutuals were mentioned, border was mentioned, everything else was mentioned. And similarly, the Chinese also have been mentioning the same thing that they've been saying from earlier. So I don't see a sense of something new that has happened in this bilateral meeting that has come up. So basic thing is, both the sides have stated their position. There is some forward movement. People-to-people contacts can increase. 75th anniversary of the diplomatic relationship is come this year, and so therefore some activities will take place. So these are actually cautious steps moving forward. All the same, it is a step moving forward. That is how I think I will see the India-China bilateral meeting that took place. I've not been able to read the joint statement as yet, but one of the headlines that is coming up is that SCO has been able to condemn the terrorism as a subject. Yeah. Which actually was indicated when Mr. Wang Yi came here, and if you look at the foreign ministry statement immediately after that, they had mentioned that Mr. Jaishankar has raised this in a strong manner with Mr. Wang Yi, and Mr. Wang Yi had accepted that it should be condemned in all forms of terrorism. So I think that is a move forward. Coming to this photographs and all which are coming up of the three leaders coming up, etc. If you look at the meeting yesterday, when Mr. Modi came in, when Mr. Putin came in and met Mr. Xi Jinping and his wife, you find there is a conversation going on between Mr. Xi Jinping and Mr. Putin. Whereas all other leaders just shook hands, took a photograph and then moved on. Today, this other photographs have come up where all the three leaders are meeting together and spending some time together. So there is definitely a move forward to indicate the kind of cooperation that all the three countries are willing to do on the issues of natural interest, mutual interest for them. So that is something that we need to keep in mind. The other thing is about the Russia, Ukraine and Mr. Zelensky's call, which General Pandey mentioned. This has actually been happening for a long period of time. If you take your mind back, Mr. Modi spoke to Mr. Putin as well as to Mr. Zelensky. So this is something which has been going on, and India has been maintaining that war is not the way, diplomacy is the way, talks are the way. That I think is the message that is getting pushed by India even in these meetings. I think this is the way I see this entire thing happening. Like there is a message which is going out to US that is definitely there. But the point is, as General Pandey mentioned, this meeting was decided 1 year ago.
when this meeting will take place. The movement of the relationship between India and China has been going on for the last about 1 year since we signed the agreement in October 24. So these are all actually things in progress. But I think they are coming to some kind of a culmination here, and a move forward can be expected from this. On the RIC, I think we need to have our expectations a little calmer. Basically, because RIC is a loose kind of an organization, it doesn't have a formal structure. So this is something that I think we need to take it with a bit of caution. I think we have been actually in the RIC. There have been, I think, since 2018 or 19, there have been no RIC meetings have been held. Yeah. So there have been efforts to restart this process. So that process we'll have to wait and watch as to how this progresses. No, for China, Ambassador Trigonath, this would be a big coup, because China is very clear in its head about its foreign policy that if there is any great power competition that is going on in the world right now, it is with the United States. It's between China and the United States. They already have Russia sort of in their corner. India, they always considered to be in the American corner. They were very wary about things like Quad, etc. And now, given what India and the US are going through over the last 3-4 months because of the tariffs, the extremely almost hostile statements that are coming out of various aides in the White House, the likes of Besant and Navarro and so on, they would be happy to sort of price out India from the US camp. And even if India is a neutral party, which is not, either in the US camp or in the Chinese camp, the Chinese would consider that to be a bit of a coup. Ambassador Trigonath. Well, I don't think so that they will consider it a coup. They definitely have been also wanting. You see, let's say both policies of India and China, in my view, are very similar in many ways. One is China wants to keep some kind of a peace for about 20 years so that it is able to displace the United States from being number one. And India wants to have these 20 years of peaceful times to become the developed country by 2047. Yeah. So similar policies. So basically, both are attempting to have some kind of a peace and tranquility. The Chinese misadventure has failed and flopped, and therefore they have decided that there is no point continuing on that path of friction. And this is what happened in Kazan eventually. After Kazan, we have seen that the frequency of interactions between the Indian leaders and the Chinese leaders has been quite significant. And there have been step-by-step approaches that have happened. In fact, just a few days ago, before this meeting, we have the WMCC and then the special representatives meeting between NSA. Now, at that time, it was very clearly institutional mechanisms have been outlined to deal with the border issue, how we are going to resolve it, how we are going to solve it, which are the kind of experts group will meet. So, which has been halted for a very long time now. So this is something I believe is definitely a desire. Secondly, both of them understand that Trump is an aberration in the US politics. So it is not that India is going to just jump over with happiness towards China or not. We will have to be very vigilant now. Chinese have shown their teeth. The Americans have shown their teeth. So now we have to see how we are going to grit along these kind of equations that are going to emerge. Okay. I'm going to take a break. When I come back, I'll come to General Pandey as well as General Narasimhan. We did see some significant statements. For the first time, for example, in yesterday's statement after the bilateral meeting, both sides referred to India and China as partners, not rivals. I thought that was a significant statement. But at the end of the day, as my colleague Rahul Trivshankar was saying a moment ago, the proof of the pudding is in the eating. So you've had the first step, which is disengagement at the border. But what about the next two steps? De-escalation and eventually de-induction. You still have 50,000 troops on either side of the line of actual control. That is not a normal relationship. You need the armies to go back to their barracks, as it were pre-2020, pre-Galwan. Do we have a roadmap for that? Do we have some concrete details in that direction? Or is this situation going to continue beyond the flowery language that we saw in the joint statement as well as in the SCO declaration that was adopted this morning? I want to take a quick break, but when we come back, we'll get both the generals and their thoughts on that. This is News 18 Network. India's largest news network. हमारे शानदार स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए मैं राष्ट्रपति शी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।
आज उज्बेकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है। कल किर्गिस्तान का राष्ट्रीय दिवस था। इस अवसर पर मैं दोनों लीडर्स को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। एक्सीलेंसी, पिछले 24 वर्षों में एससीओ का पूरे यूरेशिया क्षेत्र की एक्सटेंडेड फैमिली को जोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारत ने एक सक्रिय सदस्य के रूप में हमेशा कंस्ट्रक्टिव और सकारात्मक भूमिका निभाई है। एससीओ को लेकर भारत की सोच और नीति 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित है। SCO, S सिक्योरिटी, C कनेक्टिविटी, O अपॉर्चुनिटी। पहले स्तंभ S यानी सिक्योरिटी के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि सुरक्षा Welcome back. We're still in conversation with our guests on some significant developments coming out of Tianjin, China on the SCO summit. I want to ask General Pandey here, we saw significant statements both yesterday after the bilateral between India and China and today again at the SCO when the declaration has been adopted. But beyond the statements, India and China don't have a normal relationship. We still have troops on either side of the LAC. There were agreements of 93, 96 which were violated by China. What is this new normal that we are moving towards? So please let's draw reference to the engagement between the Americans and Soviet Union and thereafter with Russia. While they kept on fighting for space, controlling the space which was required to be managed for their security considerations, their trade continued to increase. Like Americans, when they are engaging with the Chinese, the trade continues to go along. The Taiwanese have got invested so much in China, so is Japan, so is Philippines. So when you are actually engaged, you need to look at the interest of 1.4 billion people rather than get stuck onto the boundary question. But yes, internal politics drives that you need to keep on harping on resolution of border situation. Similarly, if you are going to stall talks and trade because somebody is giving weapons and support to the Pakistanis who are actually in contest with us, possibly we will be hemmed that we will not be able to sell our defense industrial product to anybody in the world, right? Can India go towards an isolation? It's not possible. So I think what the Prime Minister is trying to do is manage the issue of the border subject. We have gone quite ahead. After 5 years, after nearly 4 years, we are able to carry out disengagement. To say that de-escalation and de-induction will happen immediately is a matter of a debate, because I think we have lost total trust in what Chinese are capable of. Therefore, for us to actually trust them is going to be very difficult immediately. It will take some time to happen. But are we going to stall the trade factor? We need huge number of stuff from the Chinese today, right? You look at the rare earth material, magnets, you require tech, you require infrastructure, you require FDI to be fed into our telecom sector, the tunneling, equipment which is required. There are huge things which have to be required. Otherwise, what will happen is that if we continue to stick to issues at the border itself, right, we will find that we are getting behind the curve, which we are already, right? But herein comes the caution that beyond the photo ops, we have to understand that these are actually people coming together. But actually how they are going to be rolled out over a period of time is matter of detail, which you'll only see coming out later. But the caution remains for India that for us, America continues to be a very, very important strategic partner. We just cannot do away with it. And the Chinese also possibly understand that.
Okay, General Pandey, we'll leave it at that. Thank you very much for this extended time that you've given us. I want to get a quick word from General Narasimhan as well on this point. You know, India had been saying, and I think the External Affairs Minister made that clear some time back, that look, we don't have a normal relationship with the Chinese, and we can't have a normal relationship until the border becomes normal. Now, we've started one part of the three-part process of disengagement at the border that was agreed to in Kazan last year. The other two parts still remain. And as General Pandey said, I don't see that happening in the next few months. It might take much more time. But at the same time, India has also agreed to sort of ease restrictions when it comes to visas, direct flights, resuming the Mansarovar Yatra, possibly moving in the direction of greater trade engagement with China, more investment from Chinese firms, etc. Something that was stopped after Galwan happened. Do you see this as okay in a sort of parallel track, while on the one hand we will continue to press for resolution of the boundary issue, other parts of the relationship cannot come to a standstill? 3 points I want to mention. First point is, we have never said that we will put the boundary issue, resolution of the boundary issue as a prerequisite. We have said maintenance of peace and tranquility along the line of actual control is a prerequisite. These two are two different, hugely different things. So we never said boundary issue it should be resolved before we progress on the other matters of the relationship. That is point number 1. Point number 2, even in that foreign ministry statement when Mr. Wang Yi had come here, there was a mention about de-escalation and the discussions going on the de-escalation part. So de-escalation will continue. Simultaneously, we never stopped the investments from China fully. Even after Press Note 3 was implemented in April 2020, approximately 300 plus applications had come from the Chinese, out of which more than 100 applications have been approved for investments in India. So there is a process that is being followed. We never stopped the entire thing. But the problem is that we need to like General Pandey mentioned, we are dependent on China for many of our industry's requirements. That we need to actually ensure that we get it from them. Therefore, we need to actually have that relationship also simultaneously going. Tunnel boring machines, fertilizers, and things like that is something that we have been saying for a very long time. Plus, the entry of our companies into China has been a major problem, which Chinese have been saying that they will facilitate it, but they have not done it so far. So the proof of the pudding is in eating. The statements have come out, which is very good. Ultimately, we will have to wait and watch as to how they translate on ground. That is extremely very important. Okay. In any case, we are not making the resolution of the boundary question as a prerequisite. It is the peace and tranquility along the line of actual control that is a prerequisite. And to that extent, I mean, to be fair to both sides, after Galwan in the last 5 years, no shots have been fired. Since certainly, post-June of 2020, no shots have been fired. So there is a degree of peace and tranquility. But is it normalcy? No, it is not. We'll take a break. And when we come back, I want to take this forward because, look, what the pictures coming out of Tianjin will be viewed very, very closely in Washington, in Berlin, in London, in Paris, at a time when everyone is trying to move the needle towards a certain degree of peace in Ukraine. The Ukrainians want it. The Americans want it. That's why President Trump had the summit in Alaska with President Putin. President Putin has his own calculations as to the pace at which he wants to move towards peace and what are the conditions that need to be met before the peace agreement can be signed. And India, willy-nilly, whether we like it or not, President Trump, because of his unjustified and unreasonable oil tariffs, has made India a stakeholder in ensuring that there is a degree of peace between Russia and Ukraine. We'll talk about that on the other side as we await this bilateral meeting between President Putin and Prime Minister Modi, which was due to begin at 9:45. It's been delayed by almost 2 hours now. We'll take a quick break. When we come back, hopefully we'll have first pictures and first details of that bilateral meeting between the two leaders. This is News 18 Network. India's largest news network. हमारे शानदार स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए मैं राष्ट्रपति श्री का
हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आज उज्बेकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है। कल किर्गिस्तान का राष्ट्रीय दिवस था। इस अवसर पर मैं दोनों लीडर्स को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। एक्सेलेंसी, पिछले 24 वर्षों में एससीओ का पूरे यूरेशिया क्षेत्र की एक्सटेंडेड फैमिली को जोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारत ने एक सक्रिय सदस्य के रूप में हमेशा कंस्ट्रक्टिव और सकारात्मक भूमिका निभाई है। एससीओ को लेकर भारत की सोच और नीति 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित है। SCO, S सिक्योरिटी, C कनेक्टिविटी, O अपॉर्चुनिटी। पहले स्तंभ S यानी सिक्योरिटी के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि सुरक्षा, शांति और स्थिरता किसी भी देश के विकास का आधार है। किंतु इस मार्ग में आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद बड़ी चुनौतियां हैं। आतंकवाद सिर्फ हम चाबहार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसे इनिशिएटिव पर काम कर रहे हैं। इनसे हम अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ संपर्क बढ़ा सकते हैं। कनेक्टिविटी दैट bypasses sovereignty, losing trust and meaning. Brought to you. This is News 18 Network. India's largest news network. हमारे शानदार स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए मैं राष्ट्रपति शी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आज उज्बेकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है। कल किर्गिस्तान का राष्ट्रीय दिवस था। इस अवसर पर मैं दोनों लीडर्स को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। एक्सेलेंसी, पिछले 24 वर्षों में एससीओ का पूरे यूरेशिया क्षेत्र की एक्सटेंडेड फैमिली को जोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारत ने एक सक्रिय सदस्य के रूप में हमेशा कंस्ट्रक्टिव और सकारात्मक भूमिका निभाई है। एससीओ को लेकर भारत की सोच और नीति 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित है। SCO, S सिक्योरिटी, C कनेक्टिविटी, O अपॉर्चुनिटी। पहले स्तंभ S यानी सिक्योरिटी के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि सुरक्षा, शांति और स्थिरता किसी भी देश के विकास का आधार है। किंतु इस मार्ग में आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद
Welcome back to our continuing coverage of the big SCO summit in Tianjin. The SCO countries have unanimously adopted a declaration which condemns the Pahalgam attack of April 22nd. But the images from this morning, Prime Minister Modi, President Putin of Russia, walking past other leaders on the stage, including Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif, and then reach the end of the stage where the three of them, that is Prime Minister Modi, President Putin and President Xi Jinping of China, have a degree of conviviality. They are talking, there are notes exchanged, there are smiles and laughter all around. These images matter in diplomacy because this will be viewed, may I say, with a great degree of trepidation and suspicion in Washington, in London, in Berlin, at a time when stopping the Russia-Ukraine war and finding peace in Ukraine has become a top priority, certainly for the West. It has become for the Trump administration. It has become for Europe. But under what terms? And willy-nilly, Trump, with his unreasonable and unjustified oil tariffs, has also put India as a stakeholder in trying to get peace in Ukraine. So that meeting between Prime Minister Modi and President Putin is going to be extremely crucial, not least because of India's own self-interest in getting out of these secondary tariffs on oil, the extra 25% that's been imposed by the Trump administration, which many here in India and around the world have said is absolutely uncalled for. So if India wants to escape the tyranny of those secondary tariffs, at least. No one's talking about the first set of 25% reciprocal tariffs, but certainly the second set of oil tariffs, if it wants to escape the tyranny of that and the unjustified and unjustifiable nature of it, then it's also in India's interest that there is a degree of peace in Ukraine. I want to go back to General Narasimhan. As we await that meeting, General Narasimhan, India for the longest time, since the war in Ukraine began, has been maintaining that, look, this is not our war. We don't want to take a position on it. We've not voted either for Ukraine or against Ukraine or for Russia or against Russia in the numerous votes that happened at the United Nations General Assembly and Security Council. In fact, India's position was also that, it was the US and Europe that encouraged India to buy Russian oil. But now the very same thing that they encouraged us to do 3 years ago, that is being held against us. And now India has no option but to also double down and buy more Russian oil, because it's not just a question of economics. It's not just a question that it's cheaper than other oil, but it's also a question of national sovereignty. India decides where it wants to buy oil from. And India now has a stake in ensuring that Russia and Ukraine move towards a modicum of peace, if not a full peace agreement. How do you see the importance of today's meeting as we count down to it? It is a very extremely important meeting. There is no gainsay. There's no second guessing that. It's a very, very important meeting. And as you are aware that India and Russian relationship has been standing steadfast through thick and thin for a very long time. Whether there is pressure from external issues or otherwise, this relationship has been going. And India took the principled stand on Russia-Ukraine campaign. In fact, that famous statement of our Prime Minister, "This is not the era of war," is something which is quoted everywhere at this point in time. So we have always stood for the correct kind of thing that we see. And we also actually condemned Russia for the action that they took place in Sumy some time back, where the humanitarian issues were involved. So we have taken a righteous position. I think that has helped in actually many of the countries have come around to our position at this point in time on the Russia-Ukraine campaign. Notwithstanding what the American administration has been saying in the last few days, I think even the Americans understood the importance of India in this Russia-Ukraine campaign. So many statements have come out, even out of US, that India has got a major role to play in bringing this war to an end. So if you put all this together, I think it is a very, very important meeting. We will all look forward to what is the outcome of this meeting, which is going to be extremely important for not only both these countries, not only for the region, but also for the entire world at this point in time. I also want to talk a little bit about the joint statement, the joint declaration that's been adopted by consensus, unanimously by the leaders of the SCO, which specifically mentions the Pahalgam attack. It condemns it. It also talks about cross-border terrorism, condemning it. And India has also had to make a few compromises. For example, the Jafar Express attack that happened in Pakistan, that's been mentioned in the joint statement. All parties, all countries have condemned that as well. Also, what I thought was very interesting was all countries condemn the unilateral actions taken by Israel and the United States against Iran. Now, these are, again, very sensitive topics as far as India is concerned, but India has also sort of made some compromises there, because the last time when the defense minister was there in Shanghai back in June, India refused to sign the joint declaration because it didn't mention Pahalgam at all. You are very right.
the defense minister did not sign that statement, basically because Jafar Express was mentioned, whereas Pahalgam was given a go by. Correct. So that was not acceptable to us, because our foreign policy on terrorism has been maintaining that we condemn all forms of terrorism. So that is something we need to have that going. So to that extent, I think even if the Jafar Express has come into it, it is another terrorism act that has taken place. Therefore, I think the condemnation is very much in order, because we condemn all forms of terrorism. On this issue of Israel, please understand, we never supported the Hamas action of October 7th, 2023, basically because it was an act of terrorism. So that is something which we condemned immediately after that. However, we also have actually given our own remarks and our own condemnation of excessive use of force in Gaza. So I think we have taken again a righteous position out there, and then see where the terrorism is there, you need to condemn it. Where the excessive use of force is there, like we did in Sumi, we condemned Israel also in that particular thing. So if you look at it from that angle, I think this particular statement will just come up, I think caters for both. Okay, General Narasimhan, just give me a moment. We're just getting in breaking news from Tianjin. So this all-important bilateral meeting between India and Russia, between Prime Minister Modi and President Putin, has just begun. So the meeting has just begun. It was supposed to happen at 9:45. It's been delayed by a couple of hours because the joint declaration, the leaders' statements at the opening session of the SCO summit, that took some time. But now we have word from Tianjin that the meeting between Prime Minister Modi and President Putin has just begun in Tianjin. In fact, both leaders traveled in the same car. President Putin offered a ride to Prime Minister Modi in his motorcade, and they took the same car, and you saw those pictures earlier as well. Now the meeting has well and truly begun. A whole range of things for both leaders to discuss, not least the secondary sanctions or secondary tariffs on oil, on importing Russian oil that's been imposed on India by the Trump administration, which India has called unfair and unjustified. And of course, the Trump administration has tied this in towards a direction of peace or a path of peace in Ukraine, and to eventually get the Russian side to agree to a peace agreement and to finally put an end to the war in Ukraine. And India has also been made party to it. India has been made a stakeholder to this. So that's going to be one huge issue that will be discussed in this bilateral. Also remember, India has invited President Putin for the annual summit that happens between India and Russia. He's supposed to travel to India later this year. So that again is something the Prime Minister will reiterate, the invitation to visit India later this year for the annual Indo-Russia summit. And more importantly, the direction in which both security relations as well as economic relations are traveling at a time of great tumult in the world because of the Trump tariffs. President Putin had a meeting with President Trump just a few days ago in Alaska. There they agreed that the direction in which it will be moving, the story will be moving, is towards some form of a peace agreement in Ukraine. And India, willy-nilly, like I said, has been made a stakeholder in garnering peace in Ukraine. In fact, President Zelensky had a phone call with Prime Minister Modi just as he landed in Tianjin and just before his meeting with President Putin. Rahul Shivshankar is now joining us live. So the meeting has begun between Prime Minister Modi and President Putin. Has been delayed by a couple of hours. What's on the agenda? What's on the talks table this morning for both leaders? Well, there are 3 or 4 issues. Of course, Ukraine is going to take center stage. We've already had a call between President Zelensky of Ukraine and, of course, the Indian Prime Minister in the lead up to this, where they talked about trying to get India to interlocute on behalf of the West. So that is one definitive pillar of that meeting. The other, of course, is a re-emphasizing and cementing of the trade relationship between the two countries. There are acres of room still for improving that trade relationship in a manner that it becomes more balanced. Over the last couple of years, the shift in the trade relationship has been markedly in favor of Russia, because India has been purchasing fuel from Russia at a huge amount of fuel from Russia at a level that it hasn't been in the past. So clearly there's an imbalance there, and that has to be reset. There's already a commitment that has come from Lavrov in the run-up to this meeting, if you remember, Zaka, where it was explicitly stated that the Russians would open their markets to Indian products. So as India looks to diversify its trade, Moscow is going to be a big market. And of course, the continued optics that we're seeing
going to feed into this meeting. There's going to be talk about regional cooperation, solidarity, and of course enhancing the strategic and security relationship. So those three big ticket issues going to be occupying center stage in that conversation. But what is very interesting is that the two leaders decided to ride in that automobile that belongs to President Putin. You've got visuals of that. And they left the SCO venue for the Ritz-Carlton, which is a significant gap, about 15-20 minutes, even at the speed at which one of those cars travel, and had a one-on-one. So when I sort of prompted my contacts in the MEA, they said, no one has a clue. The dynamics there clearly overshadowing at this moment, and the suspense will be brought into the room. The delegates are there, and I'm trying to get information as to who is there from the Russian side. Being told that that news will be available. Yes, I've got that news. It's Manturov, Peskov, Lavrov are the three people who are there right now. Obviously, Lavrov is a familiar figure, not only globally but also in India. The other two are important aides of President Putin and individuals who are close advisors in that cabinet of his. So these are the three men who matter, who are in that room. The Indian side represented by pretty much the same troika that was there talking to President Xi. So very interesting conversation. The NSA is, of course, very intrinsically involved in the relationship with Russia, as you know, Zaka, because it is a relationship that dates back to a time when the NSA had a huge influence in building ties in a previous avatar, as you know, with Russia. So there is continuity there. The leaders, of course, been in power for considerable part of a decade. Therefore, they have an equation, and you saw the visual representation in form of this sort of bonhomie, which has crossed a lot of unexpected lines. I don't think anyone thought that the two would be traveling together to the venue of this meeting, and what has transpired in that car, no one knows. It's very reminiscent, if we can just split the screen and bring out those pictures of Trump and Putin in the beast, as it says. I mean, there are such similes there. So clearly, a sign is being sent to Washington, D.C. that, look, your tyranny, tariff tyranny, your attempt to arm twist these two players has not worked. You've got to think of something else. And don't forget, as we entered this Tianjin moment, so to speak, 2 days ago, we were reporting that Putin had given an interview to Xinhua, where he had talked about the importance of BRICS as a superstructure which would articulate the South-South voice and its agenda. And then, in his own Rahul, just give me a moment. We have the live pictures now architecture of the meeting that has just begun. You can see the Prime Minister making his opening comments, President Putin making his opening comments. We're showing this full frame now. The meeting has just begun. We have the first pictures. I'm not sure we have the audio on this. If we do, I think we should play up the audio. But yeah, there is no audio as of now, but I'm sure we will get that in a few moments from now. So you can see a line of officials. Спасибо. Спасибо, друзья. Thank you. Спасибо. Уважаемый господин премьер-министр, дорогие друзья, мы очень рады нашей встрече. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, साथियों, आपसे मिलकर हमें बड़ी खुशी हो रही है। Символично, что она проходит на полях саммита ШОС. ये बहुत प्रतिमात्मक है कि वो SCO शिखर सम्मेलन से इतर हो रही है। Организации, которая позволяет объединять усилия глав государств глобального Юга и Востока. ये एक संगठन है जो ग्लोबल साउथ और ईस्ट के देशों के नेताओं को प्रयास मिलाने को एक मंच प्रदान करता है।
усилия по созданию в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности. यूरेशिया में समान और अविभाज्य सिक्योरिटी ढांचे को बनाने के लिए प्रयासों के लिए एक मंच प्रदान करता है। Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, 21 декабря исполняется 15 лет со дня принятия совместного заявления, в котором отмечен выход наших отношений на уровень особого привилегированного стратегического партнерства. महामहिम प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, 21 दिसंबर को 15 साल पूरे हो जाएंगे जब से एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें हमारे स्पेशल प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप पर किस तरह हम पहुँचे। 15 साल हो गए। И можно уверенно констатировать, что многоплановые российско-индийские связи активно развиваются на этих принципах. और हम ये सच्चाई से बता सकते हैं कि हमारे रिश्ते इस सिद्धांतों पर बढ़ते हैं। Налажено многоуровневое взаимодействие. हमारे बीच बहुत बहुमुखी सहयोग चालू है। Торгово-экономическая кооперация в целом демонстрирует положительную динамику. व्यापार में सकारात्मक गतिशीलता देखने को मिलती है। Развивается туристический обмен. पर्यटकों का आदान-प्रदान विकसित हो रहा है। Мы тесно координируем наши усилия на международной арене. अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम हमारे प्रयासों को समन्वय से करते हैं। Это ООН, БРИКС, Группа 20 и, разумеется, ШОС. UN, BRICS, SCO जरूर इन संगठनों में से शामिल हैं। И сегодня хорошая возможность обсудить основные задачи дальнейшего развития многопланового двустороннего сотрудничества в различных областях. और आज की मुलाकात से हमारे रिश्तों को आगे बढ़ाने पर रास्तों पर बातचीत करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है। Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, Россия и Индия поддерживают десятилетиями особые отношения, дружеские, доверительные. Это фундамент для развития наших отношений в будущем. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, रूस और भारत के बीच बहुत विश्वसनीय रिश्ते बने हुए हैं। इस सिद्धांतों पर वे विकसित हो रहे हैं। И эти отношения носят абсолютно внепартийный характер, поддерживаются подавляющим большинством народов наших стран. और ये किसी से पार्टी या राजनीति पर आधारित नहीं है। लोग, हमारे दो देशों के लोग इस रिश्तों का समर्थन करते हैं। Спасибо. धन्यवाद। आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है और मैं हमेशा अनुभव करता हूँ कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है, बहुत सी चीज़ों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है। Ваше превосходительство, дорогой друг, очень рад вас видеть. И каждый раз, когда я с вами встречаюсь, у меня бывают особые чувства и ощущения, и это дает нам возможность регулярно обмениваться мнениями по разным вопросам. हम लगातार संपर्क में रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है। इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकतापूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। Мы постоянно находимся в контакте, проводятся регулярные встречи на высоком уровне между двумя сторонами. В декабре текущего года 1,4 миллиарда индийцев с нетерпением вас ждут в Индии для нашего 23-го по счету ежегодного саммита между нашими странами. एक्सेलेंसी, ये हमारे स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। Уважаемый господин президент, это свидетельствует о том, насколько глубоким и всеобъемлющим является наше особо привилегированное и стратегическое партнерство. Даже при самых тяжелых обстоятельствах Индия и Россия всегда шли вперед, плечом к плечу. Наше тесное сотрудничество имеет значение не только для народов наших двух стран, но и для обеспечения глобального мира, стабильности и процветания. एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं।
हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे। संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। Уважаемый господин президент, по теме продолжающегося конфликта на Украине мы регулярно обмениваемся мнениями. Мы приветствуем все недавно предложенные усилия для установления мира и надеемся, что все стороны будут подходить к этому вопросу конструктивно. Необходимо искать пути для скорейшего завершения конфликта и установления мира. Это и есть призыв всего человечества. Ваше превосходительство, дорогой друг, еще раз большое спасибо. Очень рад вас видеть. Спасибо. धन्यवाद. The audio, but yeah, there is no audio as of now, but I'm sure we will get that in a few moments from now. So you can see a line of officials. Спасибо. Спасибо, друзья. Thank you. Thank you. Уважаемый господин премьер-министр, дорогие друзья, мы очень рады нашей встрече. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, साथियों, आपसे मिलकर हमें बड़ी खुशी हो रही है। Символично, что она проходит на полях саммита ШОС. ये बहुत प्रतिमात्मक है कि वो SCO शिखर सम्मेलन से इतर हो रही है। Организации, которая позволяет объединять усилия глав государств глобального Юга и Востока. ये एक संगठन है जो ग्लोबल साउथ और ईस्ट के देशों के नेताओं को प्रयास मिलाने को एक मंच प्रदान करता है। Усилия по созданию в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности. यूरेशिया में समान और अविभाज्य सिक्योरिटी ढांचे को बनाने के लिए प्रयासों के लिए एक मंच प्रदान करता है। Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, 21 декабря исполняется 15 лет со дня принятия совместного заявления, в котором отмечен выход наших отношений на уровень особого привилегированного стратегического партнерства. महामहिम प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, 21 दिसंबर को 15 साल पूरे हो जाएंगे जब से एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें हमारे स्पेशल प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप पर किस तरह हम पहुंचे। 15 साल हो गए। И можно уверенно констатировать, что многоплановые российско-индийские связи активно развиваются на этих принципах. और हम ये सच्चाई से बता सकते हैं कि हमारे रिश्ते इस सिद्धांतों पर बढ़ते हैं। Налажено многоуровневое взаимодействие. हमारे बीच बहुत बहुमुखी सहयोग चालू है। Торгово-экономическая кооперация в целом демонстрирует положительную динамику. व्यापार में सकारात्मक गतिशीलता देखने को मिलती है। Развивается туристический обмен. पर्यटकों का आदान-प्रदान विकसित हो रहा है। Мы тесно координируем наши усилия на международной арене. अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम हमारे प्रयासों को समन्वय से करते हैं। Это ООН, БРИКС, Группа 20 и, разумеется, ШОС. UN, BRICS, SCO जरूर इन संगठनों में से शामिल हैं। И сегодня хорошая возможность обсудить основные задачи дальнейшего развития многопланового двустороннего сотрудничества в различных областях. और आज की मुलाकात से हमारे रिश्तों को आगे बढ़ाने पर रास्तों पर बातचीत करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है। Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, Россия и Индия поддерживают десятилетиями особые отношения, дружеские, доверительные. Это фундамент для развития наших отношений в будущем. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, रूस और भारत के बीच बहुत विश्वसनीय रिश्ते बने हुए हैं। इस सिद्धांतों पर वे विकसित हो रहे हैं।
И эти отношения носят абсолютно внепартийный характер, поддерживаются подавляющим большинством народов наших стран. और ये किसी से पार्टी या राजनीति पर आधारित नहीं है। लोग हमारे दो देशों के लोग इस रिश्तों का समर्थन करते हैं। Спасибо. धन्यवाद। आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है और मैं हमेशा अनुभव करता हूं कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है, बहुत सी चीज़ों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है। Ваше превосходительство, дорогой друг, очень рад вас видеть. И каждый раз, когда я с вами встречаюсь, у меня бывают особые чувства и ощущения, и это дает нам возможность регулярно обмениваться мнениями по разным вопросам. हम लगातार संपर्क में रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है। इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकतापूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। Мы постоянно находимся в контакте, проводятся регулярные встречи на высоком уровне между двумя странами. В декабре текущего года 1,4 миллиарда индийцев с нетерпением вас ждут в Индии для нашего 23-го по счету ежегодного саммита между нашими странами. एक्सेलेंसी, ये हमारे स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। Уважаемый господин президент, это свидетельствует о том, насколько глубоким и всеобъемлющим является наше особо привилегированное и стратегическое партнерство. Даже при самых тяжелых обстоятельствах Индия и Россия всегда шли вперед, плечом к плечу. Наше тесное сотрудничество имеет значение не только для народов наших двух стран, но и для обеспечения глобального мира, стабильности и процветания. एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे, संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। Уважаемый господин президент, по теме продолжающегося конфликта на Украине мы регулярно обмениваемся мнениями. Мы приветствуем все недавно предложенные усилия для установления мира и надеемся, что все стороны будут подходить к этому вопросу конструктивно. Необходимо искать пути для скорейшего завершения конфликта и установления мира. Это и есть призыв всего человечества. Ваше превосходительство, дорогой друг, еще раз большое спасибо. Очень рад вас видеть. Спасибо. धन्यवाद। The audio, but yeah, there is no audio as of now, but Спасибо. Спасибо, друзья. Thank you. Thank you. Уважаемый господин премьер-министр, дорогие друзья, мы очень рады нашей встрече. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, साथियों, आपसे मिलकर हमें बड़ी खुशी हो रही है। Символично, что она проходит на полях саммита ШОС. ये बहुत प्रतिमात्मक है कि वो SCO शिखर सम्मेलन से इतर हो रही है। Организации, которая позволяет объединять усилия глав государств глобального Юга и Востока. ये एक संगठन है जो ग्लोबल साउथ और ईस्ट के देशों के नेताओं को प्रयास मिलाने को एक मंच प्रदान करता है।
усилия по созданию в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности. यूरेशिया में समान और अविभाज्य सिक्योरिटी ढांचे को बनाने के लिए प्रयासों के लिए एक मंच प्रदान करता है। Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, 21 декабря исполняется 15 лет со дня принятия совместного заявления, в котором отмечен выход наших отношений на уровень особого привилегированного стратегического партнерства. महामहिम प्रधानमंत्री जी प्रिय दोस्त, 21 दिसंबर को 15 साल पूरे हो जाएंगे जब से एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें हमारे स्पेशल प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप पर किस तरह हम पहुँचे। 15 साल हो गए। И можно уверенно констатировать, что многоплановые российско-индийские связи активно развиваются на этих принципах. और हम ये सच्चाई से बता सकते हैं कि हमारे रिश्ते इस सिद्धांतों पर बढ़ते हैं। Налажено многоуровневое взаимодействие. हमारे बीच बहुत बहुमुखी सहयोग चालू है। Торгово-экономическая кооперация в целом демонстрирует положительную динамику. व्यापार में सकारात्मक गतिशीलता देखने को मिलती है। Развивается туристический обмен. पर्यटकों का आदान-प्रदान विकसित हो रहा है। Мы тесно координируем наши усилия на международной арене. अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम हमारे प्रयासों को समन्वय से करते हैं। Это ООН, БРИКС, группа 20 и, разумеется, ШОС. UN, BRICS, SCO जरूर इन संगठनों में से शामिल हैं। И сегодня хорошая возможность обсудить основные задачи дальнейшего развития многопланового двустороннего сотрудничества в различных областях. और आज की मुलाकात से हमारे रिश्तों को आगे बढ़ाने पर रास्तों पर बातचीत करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है। Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, Россия и Индия поддерживают десятилетиями особые отношения, дружеские, доверительные. Это фундамент для развития наших отношений в будущем. आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रिय दोस्त, रूस और भारत के बीच बहुत विश्वसनीय रिश्ते बने हुए हैं। इस सिद्धांतों पर वे विकसित हो रहे हैं। И эти отношения носят абсолютно внепартийный характер, поддерживаются подавляющим большинством народов наших стран. और ये किसी से पार्टी या राजनीति पर आधारित नहीं है। लोग हमारे दो देशों के लोग इस रिश्तों का समर्थन करते हैं। Спасибо. धन्यवाद। आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है और मैं हमेशा अनुभव करता हूँ कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है, बहुत सी चीज़ों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है। Ваше превосходительство, дорогой друг, очень рад вас видеть. И каждый раз, когда я с вами встречаюсь, у меня бывают особые чувства и ощущения, и это дает нам возможность регулярно обмениваться мнениями по разным вопросам. हम लगातार संपर्क में रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है। इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकतापूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। Мы постоянно находимся в контакте, проводятся регулярные встречи на высоком уровне между двумя странами. В декабре текущего года 1 миллиард и 400 миллионов индийцев с нетерпением вас ждут в Индии для нашего 23-го по счету ежегодного саммита между нашими странами. एक्सेलेंसी, ये हमारे स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। Уважаемый господин президент, это свидетельствует о том, насколько глубоким и всеобъемлющим является наше особо привилегированное и стратегическое партнерство. Даже при самых тяжелых обстоятельствах Индия и Россия всегда шли вперед, плечом к плечу. Наше тесное сотрудничество имеет значение не только для народов наших двух стран, но и для обеспечения глобального мира, стабильности и процветания. एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं।
हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे, संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। Уважаемый господин президент, по теме продолжающегося конфликта на Украине мы регулярно обмениваемся мнениями. И мы приветствуем все недавно предложенные усилия для установления мира и надеемся, что все стороны будут подходить к этому вопросу конструктивно. Необходимо искать пути для скорейшего завершения конфликта и установления мира. Это и есть призыв всего человечества. Ваше превосходительство, дорогой друг, еще раз большое спасибо, очень рад вас видеть. Спасибо. धन्यवाद. Дорогие друзья, мы очень рады нашей встрече. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, साथियों, आपसे मिलकर हमें बड़ी खुशी हो रही है। Символично, что она проходит на полях саммита ШОС. ये बहुत प्रतिमात्मक है कि वो SCO शिखर सम्मेलन से इतर हो रही है। Организация, которая позволяет объединять усилия глав государств глобального Юга и Востока. ये एक संगठन है जो ग्लोबल साउथ और ईस्ट के देशों के नेताओं को प्रयास मिलाने को एक मंच प्रदान करता है। Усилия по созданию в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности. यूरेशिया में समान और अविभाज्य सिक्योरिटी ढांचे को बनाने के लिए प्रयासों के लिए एक मंच प्रदान करता है। Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, 21 декабря исполняется 15 лет со дня принятия совместного заявления, в котором отмечен выход наших отношений на уровень особого привилегированного стратегического партнерства. महामहिम प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, 21 दिसंबर को 15 साल पूरे हो जाएंगे जब से एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें हमारे स्पेशल प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप पर के स्तर हम पहुंचे। 15 साल हो गए। И можно уверенно констатировать, что многоплановые российско-индийские связи активно развиваются на этих принципах. और हम ये сочай से बता सकते हैं कि हमारे रिश्ते इस सिद्धांतों पर बढ़ते हैं। Налажено многоуровневое взаимодействие. हमारे बीच बहुत बहुमुखी सहयोग चालू है। Торгово-экономическая кооперация в целом демонстрирует положительную динамику. व्यापार में सकारात्मक गतिशीलता देखने को मिलती है। Развивается туристический обмен. पर्यटकों का आदान-प्रदान विकसित हो रहा है। Мы тесно координируем наши усилия на международной арене. अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम हमारे प्रयासों को समन्वय से करते हैं। Это ООН, БРИКС, Группа 20 и, разумеется, ШОС. UN, BRICS, SCO जरूर इन संगठनों में से शामिल हैं। И сегодня хорошая возможность обсудить основные задачи дальнейшего развития многопланового двустороннего сотрудничества в различных областях. और आज की मुलाकात से हमारे रिश्तों को आगे बढ़ाने पर रास्तों पर बातचीत करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है। Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, Россия и Индия поддерживают десятилетиями особые отношения, дружеские, доверительные. Это фундамент для развития наших отношений в будущем. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, रूस और भारत के बीच बहुत विश्वसनीय रिश्ते बने हुए हैं। इस सिद्धांतों पर वे विकसित हो रहे हैं। И эти отношения носят абсолютно внепартийный характер, поддерживаются подавляющим большинством народов наших стран. और ये किसी से पार्टी या राजनीति पर आधारित नहीं है। लोग, हमारे दो देशों के लोग इस रिश्तों का समर्थन करते हैं। Спасибо. धन्यवाद। आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है और मैं हमेशा अनुभव करता हूं कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है, बहुत सी चीज़ों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है। Ваше превосходительство, дорогой друг, очень рад вас видеть. И каждый раз, когда я с вами встречаюсь, у меня бывают особые чувства и ощущения, и это дает нам возможность регулярно обмениваться мнениями по разным вопросам. हम लगातार संपर्क में रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच
नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है। इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकतापूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। Мы постоянно находимся в контакте, проводятся регулярные встречи на высоком уровне между двумя сторонами. В декабре текущего года 1 400 000 000 индийцев с нетерпением вас ждут в Индии для нашего 23-го по счету ежегодного саммита между нашими странами. एक्सेलेंसी, ये हमारे स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। Уважаемый господин президент, это свидетельствует о том, насколько глубоким и всеобъемлющим является наше особо привилегированное и стратегическое партнерство. Даже при самых тяжелых обстоятельствах Индия и Россия всегда шли вперед, плечом к плечу. Наше тесное сотрудничество имеет значение не только для народов наших двух стран, но и для обеспечения глобального мира, стабильности и процветания. एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे। संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। Уважаемый господин президент, по теме продолжающегося конфликта на Украине мы регулярно обмениваемся мнениями. Мы приветствуем все недавно предложенные усилия для установления мира и надеемся, что все стороны будут подходить к этому вопросу конструктивно. Необходимо искать пути для скорейшего завершения конфликта и установления мира. Это и есть призыв всего человечества. Ваше превосходительство, дорогой друг, еще раз большое спасибо, очень рад вас видеть. Спасибо. Дорогие друзья, мы очень рады нашей встрече. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, साथियों, आपसे मिलकर हमें बड़ी खुशी हो रही है। Символично, что она проходит на полях саммита ШОС. ये बहुत प्रतिमात्मक है कि वो SCO शिखर सम्मेलन से इतर हो रही है। Организации, которая позволяет объединять усилия глав государств глобального Юга и Востока. ये एक संगठन है जो ग्लोबल साउथ और ईस्ट के देशों के नेताओं को प्रयास मिलाने को एक मंच प्रदान करता है। Усилия по созданию в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности. यूरेशिया में समान और अविभाज्य सिक्योरिटी ढांचे को बनाने के लिए प्रयासों के लिए एक मंच प्रदान करता है। Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, 21 декабря исполняется 15 лет со дня принятия совместного заявления, в котором отмечен выход наших отношений на уровень особого привилегированного стратегического партнерства. महामहिम प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, 21 दिसंबर को 15 साल पूरे हो जाएंगे जब से एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें हमारे स्पेशल प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप पर के स्तर हम पहुंचे। 15 साल हो गए। И можно уверенно констатировать, что многоплановые российско-индийские связи активно развиваются на этих принципах. और हम ये सच्चाई से बता सकते हैं कि हमारे रिश्ते इस सिद्धांतों पर बढ़ते हैं। Налажено многоуровневое взаимодействие. हमारे बीच बहुत बहुमुखी सहयोग चालू है। Торгово-экономическая кооперация в целом демонстрирует положительную динамику. व्यापार में सकारात्मक गतिशीलता देखने को मिलती है। Развивается туристический обмен. पर्यटकों का आदान-प्रदान विकसित हो रहा है। Мы тесно координируем наши усилия на международной арене. अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम हमारे प्रयासों को समन्वय से करते हैं। Это ООН, БРИКС, Группа 20 и, разумеется, ШОС. UN, BRICS, SCO जरूर इन संगठनों में से शामिल हैं। И сегодня хорошая возможность
обсудить основные задачи дальнейшего развития многопланового двустороннего сотрудничества в различных областях. और आज की मुलाकात से हमारे रिश्तों को आगे बढ़ाने पर रास्तों पर बातचीत करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है. Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, Россия и Индия поддерживают десятилетиями особые отношения, дружеские, доверительные. Это фундамент для развития наших отношений в будущем. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, रूस और भारत के बीच बहुत विश्वसनीय रिश्ते बने हुए हैं. इस सिद्धांतों पर वे विकसित हो रहे हैं. И эти отношения носят абсолютно внепартийный характер, поддерживаются подавляющим большинством народов наших стран. और ये किसी से पार्टी या राजनीति पर आधारित नहीं है. लोग, हमारे दो देशों के लोग इस रिश्तों का समर्थन करते हैं. Спасибо. धन्यवाद. आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है और मैं हमेशा अनुभव करता हूं कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है, बहुत सी चीज़ों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है. Ваше превосходительство, дорогой друг, очень рад вас видеть. И каждый раз, когда я с вами встречаюсь, у меня бывают особые чувства и ощущения, и это дает нам возможность регулярно обмениваться мнениями по разным вопросам. हम लगातार संपर्क में रहे हैं. दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है. इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकतापूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं. Мы постоянно находимся в контакте, проводятся регулярные встречи на высоком уровне между двумя странами. В декабре текущего года 1 миллиард и 400 миллионов индийцев с нетерпением вас ждут в Индии для нашего 23-го по счету ежегодного саммита между нашими странами. एक्सेलेंसी, ये हमारे स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है. कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं. हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है. Уважаемый господин президент, это свидетельствует о том, насколько глубоким и всеобъемлющим является наше особо привилегированное и стратегическое партнерство. Даже при самых тяжелых обстоятельствах Индия и Россия всегда шли вперед, плечом к плечу. Наше тесное сотрудничество имеет значение не только для народов наших двух стран, но и для обеспечения глобального мира, стабильности и процветания. एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं. हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं. हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे. संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा. यह पूरी मानवता की पुकार है. एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ. Уважаемый господин президент, по теме продолжающегося конфликта на Украине мы регулярно обмениваемся мнениями. Мы приветствуем все недавно предложенные усилия для установления мира и надеемся, что все стороны будут подходить к этому вопросу конструктивно. Необходимо искать пути для скорейшего завершения конфликта и установления мира. Это и есть призыв всего человечества. Ваше превосходительство, дорогой друг, еще раз большое спасибо. Очень рад вас видеть. Спасибо. धन्यवाद. Дорогие друзья, мы очень рады нашей встрече. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, साथियों, आपसे मिलकर हमें बड़ी खुशी हो रही है. Символично, что она проходит на полях саммита ШОС. ये बहुत प्रतिमात्मक है कि वो SCO शिखर सम्मेलन से इतर हो रही है. Организации, которая позволяет объединять усилия глав государств глобального Юга и Востока. ये एक संगठन है जो ग्लोबल साउथ और ईस्ट के देशों के नेताओं को प्रयास मिलाने को एक मंच प्रदान करता है.
усилия по созданию в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности. यूरेशिया में समान और अविभाज्य सिक्योरिटी ढांचे को बनाने के लिए प्रयासों के लिए एक मंच प्रदान करता है. Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, 21 декабря исполняется 15 лет со дня принятия совместного заявления, в котором отмечен выход наших отношений на уровень особого привилегированного стратегического партнерства. महामहिम प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, 21 दिसंबर को 15 साल पूरे हो जाएंगे जब से एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें हमारे स्पेशल प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप पर किस तरह हम पहुंचे. 15 साल हो गए. И можно уверенно констатировать, что многоплановые российско-индийские связи активно развиваются на этих принципах. और हम ये सच्चाई से बता सकते हैं कि हमारे रिश्ते इस सिद्धांतों पर बढ़ते हैं. Налажено многоуровневое взаимодействие. हमारे बीच बहुत बहुमुखी सहयोग चालू है. Торгово-экономическая кооперация в целом демонстрирует положительную динамику. व्यापार में सकारात्मक गतिशीलता देखने को मिलती है. Развивается туристический обмен. पर्यटकों का आदान-प्रदान विकसित हो रहा है. Мы тесно координируем наши усилия на международной арене. अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम हमारे प्रयासों को समन्वय से करते हैं. Это ООН, БРИКС, Группа 20 и, разумеется, ШОС. UN, BRICS, SCO जरूर इन संगठनों में से शामिल हैं. И сегодня хорошая возможность обсудить основные задачи дальнейшего развития многопланового двустороннего сотрудничества в различных областях. और आज की मुलाकात से हमारे रिश्तों को आगे बढ़ाने पर रास्तों पर बातचीत करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है. Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, Россия и Индия поддерживают десятилетиями особые отношения, дружеские, доверительные. Это фундамент для развития наших отношений в будущем. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, रूस और भारत के बीच बहुत विश्वसनीय रिश्ते बने हुए हैं. इस सिद्धांतों पर वे विकसित हो रहे हैं. И эти отношения носят абсолютно внепартийный характер, поддерживаются подавляющим большинством народов наших стран. और ये किसी से पार्टी या राजनीति पर आधारित नहीं है. लोग, हमारे दो देशों के लोग इस रिश्तों का समर्थन करते हैं. Спасибо. धन्यवाद. आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है और मैं हमेशा अनुभव करता हूं कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है, बहुत सी चीज़ों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है. Ваше превосходительство, дорогой друг, очень рад вас видеть. И каждый раз, когда я с вами встречаюсь, у меня бывают особые чувства и ощущения, и это дает нам возможность регулярно обмениваться мнениями по разным вопросам. हम लगातार संपर्क में रहे हैं. दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है. इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकतापूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं. Мы постоянно находимся в контакте, проводятся регулярные встречи на высоком уровне между двумя сторонами. В декабре текущего года 1,4 миллиарда индийцев с нетерпением вас ждут в Индии для нашего 23-го по счету ежегодного саммита между нашими странами. एक्सेलेंसी, ये हमारे स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है. कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं. हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है. Уважаемый господин президент, это свидетельствует о том, насколько глубоким и всеобъемлющим является наше особо привилегированное и стратегическое партнерство. Даже при самых тяжелых обстоятельствах Индия и Россия всегда шли вперед, плечом к плечу. Наше тесное сотрудничество имеет значение не только для народов наших двух стран, но и для обеспечения глобального мира, стабильности и процветания. एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं. हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं.
हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे, संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। Уважаемый господин президент, по теме продолжающегося конфликта на Украине мы регулярно обмениваемся мнениями. Мы приветствуем все недавно предложенные усилия для установления мира и надеемся, что все стороны будут подходить к этому вопросу конструктивно. Необходимо искать пути для скорейшего завершения конфликта и установления мира. Это и есть призыв всего человечества. Ваше превосходительство, дорогой друг, еще раз большое спасибо, очень рад вас видеть. Спасибо. धन्यवाद. Дорогие друзья, мы очень рады нашей встрече. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, साथियों, आपसे मिलकर हमें बड़ी खुशी हो रही है। Символично, что она проходит на полях саммита ШОС. ये बहुत प्रतिमात्मक है कि वो SCO शिखर सम्मेलन से इतर हो रही है। Организации, которая позволяет объединять усилия глав государств глобального Юга и Востока. ये एक संगठन है जो ग्लोबल साउथ और ईस्ट के देशों के नेताओं को प्रयास मिलाने को एक मंच प्रदान करता है। Усилия по созданию в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности. यूरेशिया में समान और अविभाज्य सिक्योरिटी ढांचे को बनाने के लिए प्रयासों के लिए एक मंच प्रदान करता है। Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, 21 декабря исполняется 15 лет со дня принятия совместного заявления, в котором отмечен выход наших отношений на уровень особого привилегированного стратегического партнерства. महामहिम प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, 21 दिसंबर को 15 साल पूरे हो जाएंगे जब से एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें हमारे स्पेशल प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप पर किस तरह हम पहुंचे। 15 साल हो गए। И можно уверенно констатировать, что многоплановые российско-индийские связи активно развиваются на этих принципах. और हम ये सच्चाई से बता सकते हैं कि हमारे रिश्ते इस सिद्धांतों पर बढ़ते हैं। Налажено многоуровневое взаимодействие. हमारे बीच बहुत बहुमुखी सहयोग चालू है। Торгово-экономическая кооперация в целом демонстрирует положительную динамику. व्यापार में सकारात्मक गतिशीलता देखने को मिलती है। Развивается туристический обмен. पर्यटकों का आदान-प्रदान विकसित हो रहा है। Мы тесно координируем наши усилия на международной арене. अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम हमारे प्रयासों को समन्वय से करते हैं। Это ООН, БРИКС, Группа 20 и, разумеется, ШОС. UN, BRICS, SCO जरूर इन संगठनों में से शामिल हैं। И сегодня хорошая возможность обсудить основные задачи дальнейшего развития многопланового двустороннего сотрудничества в различных областях. और आज की मुलाकात से हमारे रिश्तों को आगे बढ़ाने पर रास्तों पर बातचीत करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है। Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, Россия и Индия поддерживают десятилетиями особые отношения, дружеские, доверительные. Это фундамент для развития наших отношений в будущем. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, रूस और भारत के बीच बहुत विश्वसनीय रिश्ते बने हुए हैं। इस सिद्धांतों पर वे विकसित हो रहे हैं। И эти отношения носят абсолютно внепартийный характер, поддерживаются подавляющим большинством народов наших стран. और ये किसी से पार्टी या राजनीति पर आधारित नहीं है। लोग, हमारे दो देशों के लोग इस रिश्तों का समर्थन करते हैं। Спасибо. धन्यवाद। आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है और मैं हमेशा अनुभव करता हूँ कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है, बहुत सी चीज़ों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है। Ваше превосходительство, дорогой друг, очень рад вас видеть. И каждый раз, когда я с вами встречаюсь, у меня бывают особые чувства и ощущения, и это дает нам возможность регулярно обмениваться мнениями по разным вопросам. हम लगातार संपर्क में रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है।
इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकतापूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। Мы постоянно находимся в контакте, проводятся регулярные встречи на высоком уровне между двумя странами. В декабре текущего года 1 миллиард и 400 миллионов индийцев с нетерпением вас ждут в Индии для нашего 23-го по счету ежегодного саммита между нашими странами. एक्सेलेंसी, ये हमारे स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। Уважаемый господин президент, это свидетельствует о том, насколько глубоким и всеобъемлющим является наше особо привилегированное и стратегическое партнерство. Даже при самых тяжелых обстоятельствах Индия и Россия всегда шли вперед, плечом к плечу. Наше тесное сотрудничество имеет значение не только для народов наших двух стран, но и для обеспечения глобального мира, стабильности и процветания. एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे। संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। Уважаемый господин президент, по теме продолжающегося конфликта на Украине мы регулярно обмениваемся мнениями. Мы приветствуем все недавно предложенные усилия для установления мира и надеемся, что все стороны будут подходить к этому вопросу конструктивно. Необходимо искать пути для скорейшего завершения конфликта и установления мира. Это и есть призыв всего человечества. Ваше превосходительство, дорогой друг, еще раз большое спасибо. Очень рад вас видеть. Спасибо. धन्यवाद. Дорогие друзья, мы очень рады нашей встрече. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, साथियों, आपसे मिलकर हमें बड़ी खुशी हो रही है। Символично, что она проходит на полях саммита ШОС. ये बहुत प्रतिमात्मक है कि वो SCO शिखर सम्मेलन से इतर हो रही है। Организации, которая позволяет объединять усилия глав государств глобального Юга и Востока. ये एक संगठन है जो ग्लोबल साउथ और ईस्ट के देशों के नेताओं को प्रयास मिलाने को एक मंच प्रदान करता है। Усилия по созданию в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности. यूरेशिया में समान और अविभाज्य सिक्योरिटी ढांचे को बनाने के लिए प्रयासों के लिए एक मंच प्रदान करता है। Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, 21 декабря исполняется 15 лет со дня принятия совместного заявления, в котором отмечен выход наших отношений на уровень особого привилегированного стратегического партнерства. महामहिम प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, 21 दिसंबर को 15 साल पूरे हो जाएंगे जब से एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें हमारे स्पेशल प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप पर किस तरह हम पहुंचे। 15 साल हो गए। И можно уверенно констатировать, что многоплановые российско-индийские связи активно развиваются на этих принципах. और हम ये सच्चाई से बता सकते हैं कि हमारे रिश्ते इस सिद्धांतों पर बढ़ते हैं। Налажено многоуровневое взаимодействие. हमारे बीच बहुत बहुमुखी सहयोग चालू है। Торгово-экономическая кооперация в целом демонстрирует положительную динамику. व्यापार में सकारात्मक गतिशीलता देखने को मिलती है। Развивается туристический обмен. पर्यटकों का आदान-प्रदान विकसित हो रहा है। Мы тесно координируем наши усилия на международной арене. अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम हमारे प्रयासों को समन्वय से करते हैं। Это ООН, БРИКС, группа 20 и, разумеется, ШОС. UN, BRICS, SCO जरूर इन संगठनों में से शामिल हैं। И сегодня хорошая возможность
обсудить основные задачи дальнейшего развития многопланового двустороннего сотрудничества в различных областях. और आज की मुलाकात से हमारे रिश्तों को आगे बढ़ाने पर, रास्तों पर बातचीत करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है. Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, Россия и Индия поддерживают десятилетиями особые отношения, дружеские, доверительные. Это фундамент для развития наших отношений в будущем. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, रूस और भारत के बीच बहुत विश्वसनीय रिश्ते बने हुए हैं. इस सिद्धांतों पर वे विकसित हो रहे हैं. И эти отношения носят абсолютно внепартийный характер, поддерживаются подавляющим большинством народов наших стран. और ये किसी से पार्टी या राजनीति पर आधारित नहीं है. लोग, हमारे दो देशों के लोग इस रिश्तों का समर्थन करते हैं. Спасибо. धन्यवाद. आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है और मैं हमेशा अनुभव करता हूं कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है, बहुत सी चीज़ों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है. Ваше превосходительство, дорогой друг, очень рад вас видеть. И каждый раз, когда я с вами встречаюсь, у меня бывают особые чувства и ощущения, и это дает нам возможность регулярно обмениваться мнениями по разным вопросам. हम लगातार संपर्क में रहे हैं. दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है. इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकतापूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं. Мы постоянно находимся в контакте, проводятся регулярные встречи на высоком уровне между двумя сторонами. В декабре текущего года 1,4 миллиарда индийцев с нетерпением вас ждут в Индии для нашего 23-го по счету ежегодного саммита между нашими странами. एक्सेलेंसी, ये हमारे स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है. कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं. हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है. Уважаемый господин президент, это свидетельствует о том, насколько глубоким и всеобъемлющим является наше особо привилегированное и стратегическое партнерство. Даже при самых тяжелых обстоятельствах Индия и Россия всегда шли вперед, плечом к плечу. Наше тесное сотрудничество имеет значение не только для народов наших двух стран, но и для обеспечения глобального мира, стабильности и процветания. एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं. हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं. हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे. संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा. ये पूरी मानवता की पुकार है. एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ. Уважаемый господин президент, по теме продолжающегося конфликта на Украине мы регулярно обмениваемся мнениями. Мы приветствуем все недавно предложенные усилия для установления мира и надеемся, что все стороны будут подходить к этому вопросу конструктивно. Необходимо искать пути для скорейшего завершения конфликта и установления мира. Это и есть призыв всего человечества. Ваше превосходительство, дорогой друг, еще раз большое спасибо. Очень рад вас видеть. Спасибо. धन्यवाद. Дорогие друзья, мы очень рады нашей встрече. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, साथियों, आपसे मिलकर हमें बड़ी खुशी हो रही है. Символично, что она проходит на полях саммита ШОС. ये बहुत प्रतिमात्मक है कि वो SCO शिखर सम्मेलन से इतर हो रही है. Организации, которая позволяет объединять усилия глав государств глобального Юга и Востока. ये एक संगठन है जो ग्लोबल साउथ और ईस्ट के देशों के नेताओं को प्रयास मिलाने को एक मंच प्रदान करता है.
усилия по созданию в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности. यूरेशिया में समान और अविभाज्य सिक्योरिटी ढांचे को बनाने के लिए प्रयासों के लिए एक मंच प्रदान करता है. Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, 21 декабря исполняется 15 лет со дня принятия совместного заявления, в котором отмечен выход наших отношений на уровень особого привилегированного стратегического партнерства. महामहिम प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, 21 दिसंबर को 15 साल पूरे हो जाएंगे जब से एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें हमारे स्पेशल प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप पर किस तरह हम पहुंचे. 15 साल हो गए. И можно уверенно констатировать, что многоплановые российско-индийские связи активно развиваются на этих принципах. और हम ये सच्चाई से बता सकते हैं कि हमारे रिश्ते इस सिद्धांतों पर बढ़ते हैं. Налажено многоуровневое взаимодействие. हमारे बीच बहुत बहुमुखी सहयोग चालू है. Торгово-экономическая кооперация в целом демонстрирует положительную динамику. व्यापार में सकारात्मक गतिशीलता देखने को मिलती है. Развивается туристический обмен. पर्यटकों का आदान-प्रदान विकसित हो रहा है. Мы тесно координируем наши усилия на международной арене. अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम हमारे प्रयासों को समन्वय से करते हैं. Это ООН, БРИКС, группа 20 и, разумеется, ШОС. UN, BRICS, SCO जरूर इन संगठनों में से शामिल हैं. И сегодня хорошая возможность обсудить основные задачи дальнейшего развития многопланового двустороннего сотрудничества в различных областях. और आज की मुलाकात से हमारे रिश्तों को आगे बढ़ाने पर रास्तों पर बातचीत करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है. Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, Россия и Индия поддерживают десятилетиями особые отношения, дружеские, доверительные. Это фундамент для развития наших отношений в будущем. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, रूस और भारत के बीच बहुत विश्वसनीय रिश्ते बने हुए हैं. इस सिद्धांतों पर वे विकसित हो रहे हैं. И эти отношения носят абсолютно внепартийный характер, поддерживаются подавляющим большинством народов наших стран. और ये किसी से पार्टी या राजनीति पर आधारित नहीं है. लोग, हमारे दो देशों के लोग इस रिश्तों का समर्थन करते हैं. Спасибо. धन्यवाद. आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है और मैं हमेशा अनुभव करता हूं कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है, बहुत सी चीज़ों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है. Ваше превосходительство, дорогой друг, очень рад вас видеть. И каждый раз, когда я с вами встречаюсь, у меня бывают особые чувства и ощущения, и это дает нам возможность регулярно обмениваться мнениями по разным вопросам. हम लगातार संपर्क में रहे हैं. दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है. इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकतापूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं. Мы постоянно находимся в контакте, проводятся регулярные встречи на высоком уровне между двумя сторонами. В декабре текущего года 1,4 миллиарда индийцев с нетерпением вас ждут в Индии для нашего 23-го по счету ежегодного саммита между нашими странами. एक्सेलेंसी, ये हमारे स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है. कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं. हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है. Уважаемый господин президент, это свидетельствует о том, насколько глубоким и всеобъемлющим является наше особо привилегированное и стратегическое партнерство. Даже при самых тяжелых обстоятельствах Индия и Россия всегда шли вперед, плечом к плечу. Наше тесное сотрудничество имеет значение не только для народов наших двух стран, но и для обеспечения глобального мира, стабильности и процветания. एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं. हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं.
हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे, संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। Уважаемый господин президент, по теме продолжающегося конфликта на Украине мы регулярно обмениваемся мнениями. И мы приветствуем все недавно предложенные усилия для установления мира и надеемся, что все стороны будут подходить к этому вопросу конструктивно. Необходимо искать пути для скорейшего завершения конфликта и установления мира. Это и есть призыв всего человечества. Ваше превосходительство, дорогой друг, еще раз большое спасибо, очень рад вас видеть. Спасибо. धन्यवाद. Дорогие друзья, мы очень рады нашей встрече. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, साथियों, आपसे मिलकर हमें बड़ी खुशी हो रही है। Символично, что она проходит на полях саммита ШОС. ये बहुत प्रतिमात्मक है कि वो SCO शिखर सम्मेलन से इतर हो रही है। Организации, которая позволяет объединять усилия глав государств глобального Юга и Востока. ये एक संगठन है जो ग्लोबल साउथ और ईस्ट के देशों के नेताओं को प्रयास मिलाने को एक मंच प्रदान करता है। Усилия по созданию в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности. यूरेशिया में समान और अविभाज्य सिक्योरिटी ढांचे को बनाने के लिए प्रयासों के लिए एक मंच प्रदान करता है। Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, 21 декабря исполняется 15 лет со дня принятия совместного заявления, в котором отмечен выход наших отношений на уровень особого привилегированного стратегического партнерства. महामहिम प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, 21 दिसंबर को 15 साल पूरे हो जाएंगे जब से एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें हमारे स्पेशल प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप पर किस तरह हम पहुँचे। 15 साल हो गए। И можно уверенно констатировать, что многоплановые российско-индийские связи активно развиваются на этих принципах. और हम ये सच्चाई से बता सकते हैं कि हमारे रिश्ते इस सिद्धांतों पर बढ़ते हैं। Налажено многоуровневое взаимодействие. हमारे बीच बहुत बहुमुखी सहयोग चालू है। Торгово-экономическая кооперация в целом демонстрирует положительную динамику. व्यापार में सकारात्मक गतिशीलता देखने को मिलती है। Развивается туристический обмен. पर्यटकों का आदान-प्रदान विकसित हो रहा है। Мы тесно координируем наши усилия на международной арене. अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम हमारे प्रयासों को समन्वय से करते हैं। Это ООН, БРИКС, Группа 20 и, разумеется, ШОС. UN, BRICS, SCO जरूर इन संगठनों में से शामिल हैं। И сегодня хорошая возможность обсудить основные задачи дальнейшего развития многопланового двустороннего сотрудничества в различных областях. और आज की मुलाकात से हमारे रिश्तों को आगे बढ़ाने पर रास्तों पर बातचीत करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है। Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, Россия и Индия поддерживают десятилетиями особые отношения, дружеские, доверительные. Это фундамент для развития наших отношений в будущем. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, रूस और भारत के बीच बहुत विश्वसनीय रिश्ते बने हुए हैं। इस सिद्धांतों पर वे विकसित हो रहे हैं। И эти отношения носят абсолютно внепартийный характер, поддерживаются подавляющим большинством народов наших стран. और ये किसी से पार्टी या राजनीति पर आधारित नहीं है। लोग, हमारे दो देशों के लोग इस रिश्तों का समर्थन करते हैं। Спасибо. धन्यवाद। आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है और मैं हमेशा अनुभव करता हूँ कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है, बहुत सी चीज़ों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है। Ваше превосходительство, дорогой друг, очень рад вас видеть. И каждый раз, когда я с вами встречаюсь, у меня бывают особые чувства и ощущения, и это дает нам возможность регулярно обмениваться мнениями по разным вопросам. हम लगातार संपर्क में रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है।
इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकतापूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। Мы постоянно находимся в контакте, проводятся регулярные встречи на высоком уровне между двумя сторонами. В декабре текущего года 1,4 миллиарда индийцев с нетерпением вас ждут в Индии для нашего 23-го по счету ежегодного саммита между нашими странами. एक्सेलेंसी, ये हमारे स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। Уважаемый господин президент, это свидетельствует о том, насколько глубоким и всеобъемлющим является наше особо привилегированное и стратегическое партнерство. Даже при самых тяжелых обстоятельствах Индия и Россия всегда шли вперед, плечом к плечу. Наше тесное сотрудничество имеет значение не только для народов наших двух стран, но и для обеспечения глобального мира, стабильности и процветания. एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे। संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। Уважаемый господин президент, по теме продолжающегося конфликта на Украине мы регулярно обмениваемся мнениями. Мы приветствуем все недавно предложенные усилия для установления мира и надеемся, что все стороны будут подходить к этому вопросу конструктивно. Необходимо искать пути для скорейшего завершения конфликта и установления мира. Это и есть призыв всего человечества. Ваше превосходительство, дорогой друг, еще раз большое спасибо. Очень рад вас видеть. Спасибо. धन्यवाद. Дорогие друзья, мы очень рады нашей встрече. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, साथियों, आपसे मिलकर हमें बड़ी खुशी हो रही है। Символично, что она проходит на полях саммита ШОС. ये बहुत प्रतिमात्मक है कि वो SCO शिखर सम्मेलन से इतर हो रही है। Организации, которая позволяет объединять усилия глав государств глобального Юга и Востока. ये एक संगठन है जो ग्लोबल साउथ और ईस्ट के देशों के नेताओं को प्रयास मिलाने को एक मंच प्रदान करता है। Усилия по созданию в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности. यूरेशिया में समान और अविभाज्य सिक्योरिटी ढांचे को बनाने के लिए प्रयासों के लिए एक मंच प्रदान करता है। Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, 21 декабря исполняется 15 лет со дня принятия совместного заявления, в котором отмечен выход наших отношений на уровень особого привилегированного стратегического партнерства. महामहिम प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, 21 दिसंबर को 15 साल पूरे हो जाएंगे जब से एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें हमारे स्पेशल प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप पर किस तरह हम पहुंचे। 15 साल हो गए। И можно уверенно констатировать, что многоплановые российско-индийские связи активно развиваются на этих принципах. और हम ये सच्चाई से बता सकते हैं कि हमारे रिश्ते इस सिद्धांतों पर बढ़ते हैं। Налажено многоуровневое взаимодействие. हमारे बीच बहुत बहुमुखी सहयोग चालू है। Торгово-экономическая кооперация в целом демонстрирует положительную динамику. व्यापार में सकारात्मक गतिशीलता देखने को मिलती है। Развивается туристический обмен. पर्यटकों का आदान-प्रदान विकसित हो रहा है। Мы тесно координируем наши усилия на международной арене. अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम हमारे प्रयासों को समन्वय से करते हैं। Это ООН, БРИКС, Группа 20 и, разумеется, ШОС. UN, BRICS, SCO जरूर इन संगठनों में से शामिल हैं। И сегодня хорошая возможность
обсудить основные задачи дальнейшего развития многопланового двустороннего сотрудничества в различных областях. और आज की मुलाकात से हमारे रिश्तों को आगे बढ़ाने पर, रास्तों पर बातचीत करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है. Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, Россия и Индия поддерживают десятилетиями особые отношения, дружеские, доверительные. Это фундамент для развития наших отношений в будущем. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, रूस और भारत के बीच बहुत विश्वसनीय रिश्ते बने हुए हैं. इस सिद्धांतों पर वे विकसित हो रहे हैं. И эти отношения носят абсолютно внепартийный характер, поддерживаются подавляющим большинством народов наших стран. और ये किसी से पार्टी या राजनीति पर आधारित नहीं है. लोग, हमारे दो देशों के लोग इस रिश्तों का समर्थन करते हैं. Спасибо. धन्यवाद. आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है और मैं हमेशा अनुभव करता हूं कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है, बहुत सी चीज़ों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है. Ваше превосходительство, дорогой друг, очень рад вас видеть. И каждый раз, когда я с вами встречаюсь, у меня бывают особые чувства и ощущения, и это дает нам возможность регулярно обмениваться мнениями по разным вопросам. हम लगातार संपर्क में रहे हैं. दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है. इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकतापूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं. Мы постоянно находимся в контакте, проводятся регулярные встречи на высоком уровне между двумя сторонами. В декабре текущего года 1,4 миллиарда индийцев с нетерпением вас ждут в Индии для нашего 23-го по счету ежегодного саммита между нашими странами. एक्सेलेंसी, ये हमारे स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है. कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं. हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है. Уважаемый господин президент, это свидетельствует о том, насколько глубоким и всеобъемлющим является наше особо привилегированное и стратегическое партнерство. Даже при самых тяжелых обстоятельствах Индия и Россия всегда шли вперед, плечом к плечу. Наше тесное сотрудничество имеет значение не только для народов наших двух стран, но и для обеспечения глобального мира, стабильности и процветания. एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं. हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं. हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे. संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा. ये पूरी मानवता की पुकार है. एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ. Уважаемый господин президент, по теме продолжающегося конфликта на Украине мы регулярно обмениваемся мнениями. Мы приветствуем все недавно предложенные усилия для установления мира и надеемся, что все стороны будут подходить к этому вопросу конструктивно. Необходимо искать пути для скорейшего завершения конфликта и установления мира. Это и есть призыв всего человечества. Ваше превосходительство, дорогой друг, еще раз большое спасибо. Очень рад вас видеть. Спасибо. धन्यवाद. Дорогие друзья, мы очень рады нашей встрече. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, साथियों, आपसे मिलकर हमें बड़ी खुशी हो रही है. Символично, что она проходит на полях саммита ШОС. ये बहुत प्रतिमात्मक है कि वो SCO शिखर सम्मेलन से इतर हो रही है. Организации, которая позволяет объединять усилия глав государств глобального Юга и Востока. ये एक संगठन है जो ग्लोबल साउथ और ईस्ट के देशों के नेताओं को प्रयास मिलाने को एक मंच प्रदान करता है.
усилия по созданию в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности. यूरेशिया में समान और अविभाज्य सिक्योरिटी ढांचे को बनाने के लिए प्रयासों के लिए एक मंच प्रदान करता है. Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, 21 декабря исполняется 15 лет со дня принятия совместного заявления, в котором отмечен выход наших отношений на уровень особого привилегированного стратегического партнерства. महामहिम प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, 21 दिसंबर को 15 साल पूरे हो जाएंगे जब से एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें हमारे स्पेशल प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप पर किस तरह हम पहुंचे. 15 साल हो गए. И можно уверенно констатировать, что многоплановые российско-индийские связи активно развиваются на этих принципах. और हम ये सच्चाई से बता सकते हैं कि हमारे रिश्ते इस सिद्धांतों पर बढ़ते हैं. Налажено многоуровневое взаимодействие. हमारे बीच बहुत बहुमुखी सहयोग चालू है. Торгово-экономическая кооперация в целом демонстрирует положительную динамику. व्यापार में सकारात्मक गतिशीलता देखने को मिलती है. Развивается туристический обмен. पर्यटकों का आदान-प्रदान विकसित हो रहा है. Мы тесно координируем наши усилия на международной арене. अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम हमारे प्रयासों को समन्वय से करते हैं. Это ООН, БРИКС, группа 20 и, разумеется, ШОС. UN, BRICS, SCO जरूर इन संगठनों में से शामिल हैं. И сегодня хорошая возможность обсудить основные задачи дальнейшего развития многопланового двустороннего сотрудничества в различных областях. और आज की मुलाकात से हमारे रिश्तों को आगे बढ़ाने पर रास्तों पर बातचीत करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है. Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, Россия и Индия поддерживают десятилетиями особые отношения, дружеские, доверительные. Это фундамент для развития наших отношений в будущем. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, रूस और भारत के बीच बहुत विश्वसनीय रिश्ते बने हुए हैं. इस सिद्धांतों पर वे विकसित हो रहे हैं. И эти отношения носят абсолютно внепартийный характер, поддерживаются подавляющим большинством народов наших стран. और ये किसी से पार्टी या राजनीति पर आधारित नहीं है. लोग, हमारे दो देशों के लोग इस रिश्तों का समर्थन करते हैं. Спасибо. धन्यवाद. आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है और मैं हमेशा अनुभव करता हूं कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है, बहुत सी चीज़ों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है. Ваше превосходительство, дорогой друг, очень рад вас видеть. И каждый раз, когда я с вами встречаюсь, у меня бывают особые чувства и ощущения, и это дает нам возможность регулярно обмениваться мнениями по разным вопросам. हम लगातार संपर्क में रहे हैं. दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है. इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकतापूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं. Мы постоянно находимся в контакте, проводятся регулярные встречи на высоком уровне между двумя сторонами. В декабре текущего года 1,4 миллиарда индийцев с нетерпением вас ждут в Индии для нашего 23-го по счету ежегодного саммита между нашими странами. एक्सेलेंसी, ये हमारे स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है. कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं. हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है. Уважаемый господин президент, это свидетельствует о том, насколько глубоким и всеобъемлющим является наше особо привилегированное и стратегическое партнерство. Даже при самых тяжелых обстоятельствах Индия и Россия всегда шли вперед, плечом к плечу. Наше тесное сотрудничество имеет значение не только для народов наших двух стран, но и для обеспечения глобального мира, стабильности и процветания. एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं. हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं.
हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे, संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। Уважаемый господин президент, по теме продолжающегося конфликта на Украине мы регулярно обмениваемся мнениями. И мы приветствуем все недавно предложенные усилия для установления мира и надеемся, что все стороны будут подходить к этому вопросу конструктивно. Необходимо искать пути для скорейшего завершения конфликта и установления мира. Это и есть призыв всего человечества. Ваше превосходительство, дорогой друг, еще раз большое спасибо, очень рад вас видеть. Спасибо. धन्यवाद. Дорогие друзья, мы очень рады нашей встрече. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, साथियों, आपसे मिलकर हमें बड़ी खुशी हो रही है। Символично, что она проходит на полях саммита ШОС. ये बहुत प्रतिमात्मक है कि वो SCO शिखर सम्मेलन से इतर हो रही है। Организации, которая позволяет объединять усилия глав государств глобального Юга и Востока. ये एक संगठन है जो ग्लोबल साउथ और ईस्ट के देशों के नेताओं को प्रयास मिलाने को एक मंच प्रदान करता है। Усилия по созданию в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности. यूरेशिया में समान और अविभाज्य सिक्योरिटी ढांचे को बनाने के लिए प्रयासों के लिए एक मंच प्रदान करता है। Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, 21 декабря исполняется 15 лет со дня принятия совместного заявления, в котором отмечен выход наших отношений на уровень особого привилегированного стратегического партнерства. महामहिम प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, 21 दिसंबर को 15 साल पूरे हो जाएंगे जब से एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें हमारे स्पेशल प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप पर किस तरह हम पहुंचे। 15 साल हो गए। И можно уверенно констатировать, что многоплановые российско-индийские связи активно развиваются на этих принципах. और हम ये सच्चाई से बता सकते हैं कि हमारे रिश्ते इस सिद्धांतों पर बढ़ते हैं। Налажено многоуровневое взаимодействие. हमारे बीच बहुत बहुमुखी सहयोग चालू है। Торгово-экономическая кооперация в целом демонстрирует положительную динамику. व्यापार में सकारात्मक गतिशीलता देखने को मिलती है। Развивается туристический обмен. पर्यटकों का आदान-प्रदान विकसित हो रहा है। Мы тесно координируем наши усилия на международной арене. अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम हमारे प्रयासों को समन्वय से करते हैं। Это ООН, БРИКС, Группа 20 и, разумеется, ШОС. UN, BRICS, SCO जरूर इन संगठनों में से शामिल हैं। И сегодня хорошая возможность обсудить основные задачи дальнейшего развития многопланового двустороннего сотрудничества в различных областях. और आज की मुलाकात से हमारे रिश्तों को आगे बढ़ाने पर रास्तों पर बातचीत करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है। Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, Россия и Индия поддерживают десятилетиями особые отношения, дружеские, доверительные. Это фундамент для развития наших отношений в будущем. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, रूस और भारत के बीच बहुत विश्वसनीय रिश्ते बने हुए हैं। इस सिद्धांतों पर वे विकसित हो रहे हैं। И эти отношения носят абсолютно внепартийный характер, поддерживаются подавляющим большинством народов наших стран. और ये किसी से पार्टी या राजनीति पर आधारित नहीं है। लोग, हमारे दो देशों के लोग इस रिश्तों का समर्थन करते हैं। Спасибо. धन्यवाद। आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है और मैं हमेशा अनुभव करता हूँ कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है, बहुत सी चीज़ों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है। Ваше превосходительство, дорогой друг, очень рад вас видеть. И каждый раз, когда я с вами встречаюсь, у меня бывают особые чувства и ощущения, и это дает нам возможность регулярно обмениваться мнениями по разным вопросам. हम लगातार संपर्क में रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है।
इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकतापूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। Мы постоянно находимся в контакте, проводятся регулярные встречи на высоком уровне между двумя сторонами. В декабре текущего года 1,4 миллиарда индийцев с нетерпением вас ждут в Индии для нашего 23-го по счету ежегодного саммита между нашими странами. एक्सेलेंसी, ये हमारे स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। Уважаемый господин президент, это свидетельствует о том, насколько глубоким и всеобъемлющим является наше особо привилегированное и стратегическое партнерство. Даже при самых тяжелых обстоятельствах Индия и Россия всегда шли вперед, плечом к плечу. Наше тесное сотрудничество имеет значение не только для народов наших двух стран, но и для обеспечения глобального мира, стабильности и процветания. एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे। संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। Уважаемый господин президент, по теме продолжающегося конфликта на Украине мы регулярно обмениваемся мнениями. Мы приветствуем все недавно предложенные усилия для установления мира и надеемся, что все стороны будут подходить к этому вопросу конструктивно. Необходимо искать пути для скорейшего завершения конфликта и установления мира. Это и есть призыв всего человечества. Ваше превосходительство, дорогой друг, еще раз большое спасибо. Очень рад вас видеть. Спасибо. धन्यवाद. Дорогие друзья, мы очень рады нашей встрече. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, साथियों, आपसे मिलकर हमें बड़ी खुशी हो रही है। Символично, что она проходит на полях саммита ШОС. ये बहुत प्रतिमात्मक है कि वो SCO शिखर सम्मेलन से इतर हो रही है। Организации, которая позволяет объединять усилия глав государств глобального Юга и Востока. ये एक संगठन है जो ग्लोबल साउथ और ईस्ट के देशों के नेताओं को प्रयास मिलाने को एक मंच प्रदान करता है। Усилия по созданию в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности. यूरेशिया में समान और अविभाज्य सिक्योरिटी ढांचे को बनाने के लिए प्रयासों के लिए एक मंच प्रदान करता है। Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, 21 декабря исполняется 15 лет со дня принятия совместного заявления, в котором отмечен выход наших отношений на уровень особого привилегированного стратегического партнерства. महामहिम प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, 21 दिसंबर को 15 साल पूरे हो जाएंगे जब से एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें हमारे स्पेशल प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप पर किस तरह हम पहुंचे। 15 साल हो गए। И можно уверенно констатировать, что многоплановые российско-индийские связи активно развиваются на этих принципах. और हम ये सच्चाई से बता सकते हैं कि हमारे रिश्ते इस सिद्धांतों पर बढ़ते हैं। Налажено многоуровневое взаимодействие. हमारे बीच बहुत बहुमुखी सहयोग चालू है। Торгово-экономическая кооперация в целом демонстрирует положительную динамику. व्यापार में सकारात्मक गतिशीलता देखने को मिलती है। Развивается туристический обмен. पर्यटकों का आदान-प्रदान विकसित हो रहा है। Мы тесно координируем наши усилия на международной арене. अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम हमारे प्रयासों को समन्वय से करते हैं। Это ООН, БРИКС, группа 20 и, разумеется, ШОС. UN, BRICS, SCO जरूर इन संगठनों में से शामिल हैं। И сегодня хорошая возможность
обсудить основные задачи дальнейшего развития многопланового двустороннего сотрудничества в различных областях. और आज की मुलाकात से हमारे रिश्तों को आगे बढ़ाने पर, रास्तों पर बातचीत करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है. Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, Россия и Индия поддерживают десятилетиями особые отношения, дружеские, доверительные. Это фундамент для развития наших отношений в будущем. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, रूस और भारत के बीच बहुत विश्वसनीय रिश्ते बने हुए हैं. इस सिद्धांतों पर वे विकसित हो रहे हैं. И эти отношения носят абсолютно внепартийный характер, поддерживаются подавляющим большинством народов наших стран. और ये किसी से पार्टी या राजनीति पर आधारित नहीं है. लोग, हमारे दो देशों के लोग इस रिश्तों का समर्थन करते हैं. Спасибо. धन्यवाद. आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है और मैं हमेशा अनुभव करता हूं कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है, बहुत सी चीज़ों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है. Ваше превосходительство, дорогой друг, очень рад вас видеть. И каждый раз, когда я с вами встречаюсь, у меня бывают особые чувства и ощущения, и это дает нам возможность регулярно обмениваться мнениями по разным вопросам. हम लगातार संपर्क में रहे हैं. दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है. इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकतापूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं. Мы постоянно находимся в контакте, проводятся регулярные встречи на высоком уровне между двумя сторонами. В декабре текущего года 1,4 миллиарда индийцев с нетерпением вас ждут в Индии для нашего 23-го по счету ежегодного саммита между нашими странами. एक्सेलेंसी, ये हमारे स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है. कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं. हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है. Уважаемый господин президент, это свидетельствует о том, насколько глубоким и всеобъемлющим является наше особо привилегированное и стратегическое партнерство. Даже при самых тяжелых обстоятельствах Индия и Россия всегда шли вперед, плечом к плечу. Наше тесное сотрудничество имеет значение не только для народов наших двух стран, но и для обеспечения глобального мира, стабильности и процветания. एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं. हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं. हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे. संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा. ये पूरी मानवता की पुकार है. एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ. Уважаемый господин президент, по теме продолжающегося конфликта на Украине мы регулярно обмениваемся мнениями. Мы приветствуем все недавно предложенные усилия для установления мира и надеемся, что все стороны будут подходить к этому вопросу конструктивно. Необходимо искать пути для скорейшего завершения конфликта и установления мира. Это и есть призыв всего человечества. Ваше превосходительство, дорогой друг, еще раз большое спасибо. Очень рад вас видеть. Спасибо. धन्यवाद. Дорогие друзья, мы очень рады нашей встрече. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, साथियों, आपसे मिलकर हमें बड़ी खुशी हो रही है. Символично, что она проходит на полях саммита ШОС. ये बहुत प्रतिमात्मक है कि वो SCO शिखर सम्मेलन से इतर हो रही है. Организации, которая позволяет объединять усилия глав государств глобального Юга и Востока. ये एक संगठन है जो ग्लोबल साउथ और ईस्ट के देशों के नेताओं को प्रयास मिलाने को एक मंच प्रदान करता है.
усилия по созданию в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности. यूरेशिया में समान और अविभाज्य सिक्योरिटी ढांचे को बनाने के लिए प्रयासों के लिए एक मंच प्रदान करता है. Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, 21 декабря исполняется 15 лет со дня принятия совместного заявления, в котором отмечен выход наших отношений на уровень особого привилегированного стратегического партнерства. महामहिम प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, 21 दिसंबर को 15 साल पूरे हो जाएंगे जब से एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें हमारे स्पेशल प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप पर किस तरह हम पहुंचे. 15 साल हो गए. И можно уверенно констатировать, что многоплановые российско-индийские связи активно развиваются на этих принципах. और हम ये सच्चाई से बता सकते हैं कि हमारे रिश्ते इस सिद्धांतों पर बढ़ते हैं. Налажено многоуровневое взаимодействие. हमारे बीच बहुत बहुमुखी सहयोग चालू है. Торгово-экономическая кооперация в целом демонстрирует положительную динамику. व्यापार में सकारात्मक गतिशीलता देखने को मिलती है. Развивается туристический обмен. पर्यटकों का आदान-प्रदान विकसित हो रहा है. Мы тесно координируем наши усилия на международной арене. अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम हमारे प्रयासों को समन्वय से करते हैं. Это ООН, БРИКС, группа 20 и, разумеется, ШОС. UN, BRICS, SCO जरूर इन संगठनों में से शामिल हैं. И сегодня хорошая возможность обсудить основные задачи дальнейшего развития многопланового двустороннего сотрудничества в различных областях. और आज की मुलाकात से हमारे रिश्तों को आगे बढ़ाने पर रास्तों पर बातचीत करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है. Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, Россия и Индия поддерживают десятилетиями особые отношения, дружеские, доверительные. Это фундамент для развития наших отношений в будущем. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, रूस और भारत के बीच बहुत विश्वसनीय रिश्ते बने हुए हैं. इस सिद्धांतों पर वे विकसित हो रहे हैं. И эти отношения носят абсолютно внепартийный характер, поддерживаются подавляющим большинством народов наших стран. और ये किसी से पार्टी या राजनीति पर आधारित नहीं है. लोग, हमारे दो देशों के लोग इस रिश्तों का समर्थन करते हैं. Спасибо. धन्यवाद. आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है और मैं हमेशा अनुभव करता हूं कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है, बहुत सी चीज़ों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है. Ваше превосходительство, дорогой друг, очень рад вас видеть. И каждый раз, когда я с вами встречаюсь, у меня бывают особые чувства и ощущения, и это дает нам возможность регулярно обмениваться мнениями по разным вопросам. हम लगातार संपर्क में रहे हैं. दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है. इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकतापूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं. Мы постоянно находимся в контакте, проводятся регулярные встречи на высоком уровне между двумя сторонами. В декабре текущего года 1,4 миллиарда индийцев с нетерпением вас ждут в Индии для нашего 23-го по счету ежегодного саммита между нашими странами. एक्सेलेंसी, ये हमारे स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है. कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं. हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है. Уважаемый господин президент, это свидетельствует о том, насколько глубоким и всеобъемлющим является наше особо привилегированное и стратегическое партнерство. Даже при самых тяжелых обстоятельствах Индия и Россия всегда шли вперед, плечом к плечу. Наше тесное сотрудничество имеет значение не только для народов наших двух стран, но и для обеспечения глобального мира, стабильности и процветания. एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं. हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं.
हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे, संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। Уважаемый господин президент, по теме продолжающегося конфликта на Украине мы регулярно обмениваемся мнениями. И мы приветствуем все недавно предложенные усилия для установления мира и надеемся, что все стороны будут подходить к этому вопросу конструктивно. Необходимо искать пути для скорейшего завершения конфликта и установления мира. Это и есть призыв всего человечества. Ваше превосходительство, дорогой друг, еще раз большое спасибо, очень рад вас видеть. Спасибо. धन्यवाद. Дорогие друзья, мы очень рады нашей встрече. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, साथियों, आपसे मिलकर हमें बड़ी खुशी हो रही है। Символично, что она проходит на полях саммита ШОС. ये बहुत प्रतिमात्मक है कि वो SCO शिखर सम्मेलन से इतर हो रही है। Организации, которая позволяет объединять усилия глав государств глобального Юга и Востока. ये एक संगठन है जो ग्लोबल साउथ और ईस्ट के देशों के नेताओं को प्रयास मिलाने को एक मंच प्रदान करता है। Усилия по созданию в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности. यूरेशिया में समान और अविभाज्य सिक्योरिटी ढांचे को बनाने के लिए प्रयासों के लिए एक मंच प्रदान करता है। Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, 21 декабря исполняется 15 лет со дня принятия совместного заявления, в котором отмечен выход наших отношений на уровень особого привилегированного стратегического партнерства. महामहिम प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, 21 दिसंबर को 15 साल पूरे हो जाएंगे जब से एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें हमारे स्पेशल प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप पर किस तरह हम पहुँचे। 15 साल हो गए। И можно уверенно констатировать, что многоплановые российско-индийские связи активно развиваются на этих принципах. और हम ये सच्चाई से बता सकते हैं कि हमारे रिश्ते इस सिद्धांतों पर बढ़ते हैं। Налажено многоуровневое взаимодействие. हमारे बीच बहुत बहुमुखी सहयोग चालू है। Торгово-экономическая кооперация в целом демонстрирует положительную динамику. व्यापार में सकारात्मक गतिशीलता देखने को मिलती है। Развивается туристический обмен. पर्यटकों का आदान-प्रदान विकसित हो रहा है। Мы тесно координируем наши усилия на международной арене. अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम हमारे प्रयासों को समन्वय से करते हैं। Это ООН, БРИКС, Группа 20 и, разумеется, ШОС. UN, BRICS, SCO जरूर इन संगठनों में से शामिल हैं। И сегодня хорошая возможность обсудить основные задачи дальнейшего развития многопланового двустороннего сотрудничества в различных областях. और आज की मुलाकात से हमारे रिश्तों को आगे बढ़ाने पर रास्तों पर बातचीत करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है। Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, Россия и Индия поддерживают десятилетиями особые отношения, дружеские, доверительные. Это фундамент для развития наших отношений в будущем. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, रूस और भारत के बीच बहुत विश्वसनीय रिश्ते बने हुए हैं। इस सिद्धांतों पर वे विकसित हो रहे हैं। И эти отношения носят абсолютно внепартийный характер, поддерживаются подавляющим большинством народов наших стран. और ये किसी से पार्टी या राजनीति पर आधारित नहीं है। लोग, हमारे दो देशों के लोग इस रिश्तों का समर्थन करते हैं। Спасибо. धन्यवाद। आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है और मैं हमेशा अनुभव करता हूँ कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है, बहुत सी चीज़ों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है। Ваше превосходительство, дорогой друг, очень рад вас видеть. И каждый раз, когда я с вами встречаюсь, у меня бывают особые чувства и ощущения, и это дает нам возможность регулярно обмениваться мнениями по разным вопросам. हम लगातार संपर्क में रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है।
इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकतापूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। Мы постоянно находимся в контакте, проводятся регулярные встречи на высоком уровне между двумя сторонами. В декабре текущего года 1,4 миллиарда индийцев с нетерпением вас ждут в Индии для нашего 23-го по счету ежегодного саммита между нашими странами. एक्सेलेंसी, ये हमारे स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। Уважаемый господин президент, это свидетельствует о том, насколько глубоким и всеобъемлющим является наше особо привилегированное и стратегическое партнерство. Даже при самых тяжелых обстоятельствах Индия и Россия всегда шли вперед, плечом к плечу. Наше тесное сотрудничество имеет значение не только для народов наших двух стран, но и для обеспечения глобального мира, стабильности и процветания. एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे। संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। Уважаемый господин президент, по теме продолжающегося конфликта на Украине мы регулярно обмениваемся мнениями. Мы приветствуем все недавно предложенные усилия для установления мира и надеемся, что все стороны будут подходить к этому вопросу конструктивно. Необходимо искать пути для скорейшего завершения конфликта и установления мира. Это и есть призыв всего человечества. Ваше превосходительство, дорогой друг, еще раз большое спасибо. Очень рад вас видеть. Спасибо. धन्यवाद. Дорогие друзья, мы очень рады нашей встрече. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, साथियों, आपसे मिलकर हमें बड़ी खुशी हो रही है। Символично, что она проходит на полях саммита ШОС. ये बहुत प्रतिमात्मक है कि वो SCO शिखर सम्मेलन से इतर हो रही है। Организации, которая позволяет объединять усилия глав государств глобального Юга и Востока. ये एक संगठन है जो ग्लोबल साउथ और ईस्ट के देशों के नेताओं को प्रयास मिलाने को एक मंच प्रदान करता है। Усилия по созданию в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности. यूरेशिया में समान और अविभाज्य सिक्योरिटी ढांचे को बनाने के लिए प्रयासों के लिए एक मंच प्रदान करता है। Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, 21 декабря исполняется 15 лет со дня принятия совместного заявления, в котором отмечен выход наших отношений на уровень особого привилегированного стратегического партнерства. महामहिम प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, 21 दिसंबर को 15 साल पूरे हो जाएंगे जब से एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें हमारे स्पेशल प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप पर किस तरह हम पहुंचे। 15 साल हो गए। И можно уверенно констатировать, что многоплановые российско-индийские связи активно развиваются на этих принципах. और हम ये सच्चाई से बता सकते हैं कि हमारे रिश्ते इस सिद्धांतों पर बढ़ते हैं। Налажено многоуровневое взаимодействие. हमारे बीच बहुत बहुमुखी सहयोग चालू है। Торгово-экономическая кооперация в целом демонстрирует положительную динамику. व्यापार में सकारात्मक गतिशीलता देखने को मिलती है। Развивается туристический обмен. पर्यटकों का आदान-प्रदान विकसित हो रहा है। Мы тесно координируем наши усилия на международной арене. अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम हमारे प्रयासों को समन्वय से करते हैं। Это ООН, БРИКС, Группа 20 и, разумеется, ШОС. UN, BRICS, SCO जरूर इन संगठनों में से शामिल हैं। И сегодня хорошая возможность
обсудить основные задачи дальнейшего развития многопланового двустороннего сотрудничества в различных областях. और आज की मुलाकात से हमारे रिश्तों को आगे बढ़ाने पर, रास्तों पर बातचीत करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है. Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, Россия и Индия поддерживают десятилетиями особые отношения, дружеские, доверительные. Это фундамент для развития наших отношений в будущем. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, रूस और भारत के बीच बहुत विश्वसनीय रिश्ते बने हुए हैं. इस सिद्धांतों पर वे विकसित हो रहे हैं. И эти отношения носят абсолютно внепартийный характер, поддерживаются подавляющим большинством народов наших стран. और ये किसी से पार्टी या राजनीति पर आधारित नहीं है. लोग, हमारे दो देशों के लोग इस रिश्तों का समर्थन करते हैं. Спасибо. धन्यवाद. आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है और मैं हमेशा अनुभव करता हूं कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है, बहुत सी चीज़ों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है. Ваше превосходительство, дорогой друг, очень рад вас видеть. И каждый раз, когда я с вами встречаюсь, у меня бывают особые чувства и ощущения, и это дает нам возможность регулярно обмениваться мнениями по разным вопросам. हम लगातार संपर्क में रहे हैं. दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है. इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकतापूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं. Мы постоянно находимся в контакте, проводятся регулярные встречи на высоком уровне между двумя сторонами. В декабре текущего года 1,4 миллиарда индийцев с нетерпением вас ждут в Индии для нашего 23-го по счету ежегодного саммита между нашими странами. एक्सेलेंसी, ये हमारे स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है. कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं. हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है. Уважаемый господин президент, это свидетельствует о том, насколько глубоким и всеобъемлющим является наше особо привилегированное и стратегическое партнерство. Даже при самых тяжелых обстоятельствах Индия и Россия всегда шли вперед, плечом к плечу. Наше тесное сотрудничество имеет значение не только для народов наших двух стран, но и для обеспечения глобального мира, стабильности и процветания. एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं. हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं. हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे. संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा. ये पूरी मानवता की पुकार है. एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ. Уважаемый господин президент, по теме продолжающегося конфликта на Украине мы регулярно обмениваемся мнениями. Мы приветствуем все недавно предложенные усилия для установления мира и надеемся, что все стороны будут подходить к этому вопросу конструктивно. Необходимо искать пути для скорейшего завершения конфликта и установления мира. Это и есть призыв всего человечества. Ваше превосходительство, дорогой друг, еще раз большое спасибо. Очень рад вас видеть. Спасибо. धन्यवाद. Дорогие друзья, мы очень рады нашей встрече. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, साथियों, आपसे मिलकर हमें बड़ी खुशी हो रही है. Символично, что она проходит на полях саммита ШОС. ये बहुत प्रतिमात्मक है कि वो SCO शिखर सम्मेलन से इतर हो रही है. Организации, которая позволяет объединять усилия глав государств глобального Юга и Востока. ये एक संगठन है जो ग्लोबल साउथ और ईस्ट के देशों के नेताओं को प्रयास मिलाने को एक मंच प्रदान करता है.
усилия по созданию в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности. यूरेशिया में समान और अविभाज्य सिक्योरिटी ढांचे को बनाने के लिए प्रयासों के लिए एक मंच प्रदान करता है. Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, 21 декабря исполняется 15 лет со дня принятия совместного заявления, в котором отмечен выход наших отношений на уровень особого привилегированного стратегического партнерства. महामहिम प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, 21 दिसंबर को 15 साल पूरे हो जाएंगे जब से एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें हमारे स्पेशल प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप पर किस तरह हम पहुंचे. 15 साल हो गए. И можно уверенно констатировать, что многоплановые российско-индийские связи активно развиваются на этих принципах. और हम ये सच्चाई से बता सकते हैं कि हमारे रिश्ते इस सिद्धांतों पर बढ़ते हैं. Налажено многоуровневое взаимодействие. हमारे बीच बहुत बहुमुखी सहयोग चालू है. Торгово-экономическая кооперация в целом демонстрирует положительную динамику. व्यापार में सकारात्मक गतिशीलता देखने को मिलती है. Развивается туристический обмен. पर्यटकों का आदान-प्रदान विकसित हो रहा है. Мы тесно координируем наши усилия на международной арене. अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम हमारे प्रयासों को समन्वय से करते हैं. Это ООН, БРИКС, группа 20 и, разумеется, ШОС. UN, BRICS, SCO जरूर इन संगठनों में से शामिल हैं. И сегодня хорошая возможность обсудить основные задачи дальнейшего развития многопланового двустороннего сотрудничества в различных областях. और आज की मुलाकात से हमारे रिश्तों को आगे बढ़ाने पर रास्तों पर बातचीत करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है. Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, Россия и Индия поддерживают десятилетиями особые отношения, дружеские, доверительные. Это фундамент для развития наших отношений в будущем. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, रूस और भारत के बीच बहुत विश्वसनीय रिश्ते बने हुए हैं. इस सिद्धांतों पर वे विकसित हो रहे हैं. И эти отношения носят абсолютно внепартийный характер, поддерживаются подавляющим большинством народов наших стран. और ये किसी से पार्टी या राजनीति पर आधारित नहीं है. लोग, हमारे दो देशों के लोग इस रिश्तों का समर्थन करते हैं. Спасибо. धन्यवाद. आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है और मैं हमेशा अनुभव करता हूं कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है, बहुत सी चीज़ों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है. Ваше превосходительство, дорогой друг, очень рад вас видеть. И каждый раз, когда я с вами встречаюсь, у меня бывают особые чувства и ощущения, и это дает нам возможность регулярно обмениваться мнениями по разным вопросам. हम लगातार संपर्क में रहे हैं. दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है. इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकतापूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं. Мы постоянно находимся в контакте, проводятся регулярные встречи на высоком уровне между двумя сторонами. В декабре текущего года 1,4 миллиарда индийцев с нетерпением вас ждут в Индии для нашего 23-го по счету ежегодного саммита между нашими странами. एक्सेलेंसी, ये हमारे स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है. कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं. हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है. Уважаемый господин президент, это свидетельствует о том, насколько глубоким и всеобъемлющим является наше особо привилегированное и стратегическое партнерство. Даже при самых тяжелых обстоятельствах Индия и Россия всегда шли вперед, плечом к плечу. Наше тесное сотрудничество имеет значение не только для народов наших двух стран, но и для обеспечения глобального мира, стабильности и процветания. एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं. हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं.
हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे, संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। Уважаемый господин президент, по теме продолжающегося конфликта на Украине мы регулярно обмениваемся мнениями. И мы приветствуем все недавно предложенные усилия для установления мира и надеемся, что все стороны будут подходить к этому вопросу конструктивно. Необходимо искать пути для скорейшего завершения конфликта и установления мира. Это и есть призыв всего человечества. Ваше превосходительство, дорогой друг, еще раз большое спасибо, очень рад вас видеть. Спасибо. धन्यवाद. Дорогие друзья, мы очень рады нашей встрече. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, साथियों, आपसे मिलकर हमें बड़ी खुशी हो रही है। Символично, что она проходит на полях саммита ШОС. ये बहुत प्रतिमात्मक है कि वो SCO शिखर सम्मेलन से इतर हो रही है। Организации, которая позволяет объединять усилия глав государств глобального Юга и Востока. ये एक संगठन है जो ग्लोबल साउथ और ईस्ट के देशों के नेताओं को प्रयास मिलाने को एक मंच प्रदान करता है। Усилия по созданию в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности. यूरेशिया में समान और अविभाज्य सिक्योरिटी ढांचे को बनाने के लिए प्रयासों के लिए एक मंच प्रदान करता है। Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, 21 декабря исполняется 15 лет со дня принятия совместного заявления, в котором отмечен выход наших отношений на уровень особого привилегированного стратегического партнерства. महामहिम प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, 21 दिसंबर को 15 साल पूरे हो जाएंगे जब से एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें हमारे स्पेशल प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप पर किस तरह हम पहुँचे। 15 साल हो गए। И можно уверенно констатировать, что многоплановые российско-индийские связи активно развиваются на этих принципах. और हम ये सच्चाई से बता सकते हैं कि हमारे रिश्ते इस सिद्धांतों पर बढ़ते हैं। Налажено многоуровневое взаимодействие. हमारे बीच बहुत बहुमुखी सहयोग चालू है। Торгово-экономическая кооперация в целом демонстрирует положительную динамику. व्यापार में सकारात्मक गतिशीलता देखने को मिलती है। Развивается туристический обмен. पर्यटकों का आदान-प्रदान विकसित हो रहा है। Мы тесно координируем наши усилия на международной арене. अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम हमारे प्रयासों को समन्वय से करते हैं। Это ООН, БРИКС, Группа 20 и, разумеется, ШОС. UN, BRICS, SCO जरूर इन संगठनों में से शामिल हैं। И сегодня хорошая возможность обсудить основные задачи дальнейшего развития многопланового двустороннего сотрудничества в различных областях. और आज की मुलाकात से हमारे रिश्तों को आगे बढ़ाने पर रास्तों पर बातचीत करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है। Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, Россия и Индия поддерживают десятилетиями особые отношения, дружеские, доверительные. Это фундамент для развития наших отношений в будущем. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, रूस और भारत के बीच बहुत विश्वसनीय रिश्ते बने हुए हैं। इस सिद्धांतों पर वे विकसित हो रहे हैं। И эти отношения носят абсолютно внепартийный характер, поддерживаются подавляющим большинством народов наших стран. और ये किसी से पार्टी या राजनीति पर आधारित नहीं है। लोग, हमारे दो देशों के लोग इस रिश्तों का समर्थन करते हैं। Спасибо. धन्यवाद। आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है और मैं हमेशा अनुभव करता हूं कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है, बहुत सी चीज़ों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है। Ваше превосходительство, дорогой друг, очень рад вас видеть. И каждый раз, когда я с вами встречаюсь, у меня бывают особые чувства и ощущения, и это дает нам возможность регулярно обмениваться мнениями по разным вопросам. हम लगातार संपर्क में रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है।
इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकतापूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। Мы постоянно находимся в контакте, проводятся регулярные встречи на высоком уровне между двумя сторонами. В декабре текущего года 1,4 миллиарда индийцев с нетерпением вас ждут в Индии для нашего 23-го по счету ежегодного саммита между нашими странами. एक्सेलेंसी, ये हमारे स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। Уважаемый господин президент, это свидетельствует о том, насколько глубоким и всеобъемлющим является наше особо привилегированное и стратегическое партнерство. Даже при самых тяжелых обстоятельствах Индия и Россия всегда шли вперед, плечом к плечу. Наше тесное сотрудничество имеет значение не только для народов наших двух стран, но и для обеспечения глобального мира, стабильности и процветания. एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे। संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। Уважаемый господин президент, по теме продолжающегося конфликта на Украине мы регулярно обмениваемся мнениями. Мы приветствуем все недавно предложенные усилия для установления мира и надеемся, что все стороны будут подходить к этому вопросу конструктивно. Необходимо искать пути для скорейшего завершения конфликта и установления мира. Это и есть призыв всего человечества. Ваше превосходительство, дорогой друг, еще раз большое спасибо. Очень рад вас видеть. Спасибо. धन्यवाद. Дорогие друзья, мы очень рады нашей встрече. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, साथियों, आपसे मिलकर हमें बड़ी खुशी हो रही है। Символично, что она проходит на полях саммита ШОС. ये बहुत प्रतिमात्मक है कि वो SCO शिखर सम्मेलन से इतर हो रही है। Организации, которая позволяет объединять усилия глав государств глобального Юга и Востока. ये एक संगठन है जो ग्लोबल साउथ और ईस्ट के देशों के नेताओं को प्रयास मिलाने को एक मंच प्रदान करता है। Усилия по созданию в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности. यूरेशिया में समान और अविभाज्य सिक्योरिटी ढांचे को बनाने के लिए प्रयासों के लिए एक मंच प्रदान करता है। Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, 21 декабря исполняется 15 лет со дня принятия совместного заявления, в котором отмечен выход наших отношений на уровень особого привилегированного стратегического партнерства. महामहिम प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, 21 दिसंबर को 15 साल पूरे हो जाएंगे जब से एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें हमारे स्पेशल प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप पर किस तरह हम पहुंचे। 15 साल हो गए। И можно уверенно констатировать, что многоплановые российско-индийские связи активно развиваются на этих принципах. और हम ये सच्चाई से बता सकते हैं कि हमारे रिश्ते इस सिद्धांतों पर बढ़ते हैं। Налажено многоуровневое взаимодействие. हमारे बीच बहुत बहुमुखी सहयोग चालू है। Торгово-экономическая кооперация в целом демонстрирует положительную динамику. व्यापार में सकारात्मक गतिशीलता देखने को मिलती है। Развивается туристический обмен. पर्यटकों का आदान-प्रदान विकसित हो रहा है। Мы тесно координируем наши усилия на международной арене. अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम हमारे प्रयासों को समन्वय से करते हैं। Это ООН, БРИКС, группа 20 и, разумеется, ШОС. UN, BRICS, SCO जरूर इन संगठनों में से शामिल हैं। И сегодня хорошая возможность
обсудить основные задачи дальнейшего развития многопланового двустороннего сотрудничества в различных областях. और आज की मुलाकात से हमारे रिश्तों को आगे बढ़ाने पर, रास्तों पर बातचीत करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है. Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, Россия и Индия поддерживают десятилетиями особые отношения, дружеские, доверительные. Это фундамент для развития наших отношений в будущем. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, रूस और भारत के बीच बहुत विश्वसनीय रिश्ते बने हुए हैं. इस सिद्धांतों पर वे विकसित हो रहे हैं. И эти отношения носят абсолютно внепартийный характер, поддерживаются подавляющим большинством народов наших стран. और ये किसी से पार्टी या राजनीति पर आधारित नहीं है. लोग, हमारे दो देशों के लोग इस रिश्तों का समर्थन करते हैं. Спасибо. धन्यवाद. आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है और मैं हमेशा अनुभव करता हूं कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है, बहुत सी चीज़ों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है. Ваше превосходительство, дорогой друг, очень рад вас видеть. И каждый раз, когда я с вами встречаюсь, у меня бывают особые чувства и ощущения, и это дает нам возможность регулярно обмениваться мнениями по разным вопросам. हम लगातार संपर्क में रहे हैं. दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है. इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकतापूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं. Мы постоянно находимся в контакте, проводятся регулярные встречи на высоком уровне между двумя сторонами. В декабре текущего года 1,4 миллиарда индийцев с нетерпением вас ждут в Индии для нашего 23-го по счету ежегодного саммита между нашими странами. एक्सेलेंसी, ये हमारे स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है. कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं. हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है. Уважаемый господин президент, это свидетельствует о том, насколько глубоким и всеобъемлющим является наше особо привилегированное и стратегическое партнерство. Даже при самых тяжелых обстоятельствах Индия и Россия всегда шли вперед, плечом к плечу. Наше тесное сотрудничество имеет значение не только для народов наших двух стран, но и для обеспечения глобального мира, стабильности и процветания. एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं. हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं. हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे. संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा. ये पूरी मानवता की पुकार है. एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ. Уважаемый господин президент, по теме продолжающегося конфликта на Украине мы регулярно обмениваемся мнениями. Мы приветствуем все недавно предложенные усилия для установления мира и надеемся, что все стороны будут подходить к этому вопросу конструктивно. Необходимо искать пути для скорейшего завершения конфликта и установления мира. Это и есть призыв всего человечества. Ваше превосходительство, дорогой друг, еще раз большое спасибо. Очень рад вас видеть. Спасибо. धन्यवाद. Дорогие друзья, мы очень рады нашей встрече. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, साथियों, आपसे मिलकर हमें बड़ी खुशी हो रही है. Символично, что она проходит на полях саммита ШОС. ये बहुत प्रतिमात्मक है कि वो SCO शिखर सम्मेलन से इतर हो रही है. Организации, которая позволяет объединять усилия глав государств глобального Юга и Востока. ये एक संगठन है जो ग्लोबल साउथ और ईस्ट के देशों के नेताओं को प्रयास मिलाने को एक मंच प्रदान करता है.
усилия по созданию в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности. यूरेशिया में समान और अविभाज्य सिक्योरिटी ढांचे को बनाने के लिए प्रयासों के लिए एक मंच प्रदान करता है. Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, 21 декабря исполняется 15 лет со дня принятия совместного заявления, в котором отмечен выход наших отношений на уровень особого привилегированного стратегического партнерства. महामहिम प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, 21 दिसंबर को 15 साल पूरे हो जाएंगे जब से एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें हमारे स्पेशल प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप पर किस तरह हम पहुंचे. 15 साल हो गए. И можно уверенно констатировать, что многоплановые российско-индийские связи активно развиваются на этих принципах. और हम ये सच्चाई से बता सकते हैं कि हमारे रिश्ते इस सिद्धांतों पर बढ़ते हैं. Налажено многоуровневое взаимодействие. हमारे बीच बहुत बहुमुखी सहयोग चालू है. Торгово-экономическая кооперация в целом демонстрирует положительную динамику. व्यापार में सकारात्मक गतिशीलता देखने को मिलती है. Развивается туристический обмен. पर्यटकों का आदान-प्रदान विकसित हो रहा है. Мы тесно координируем наши усилия на международной арене. अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम हमारे प्रयासों को समन्वय से करते हैं. Это ООН, БРИКС, Группа 20 и, разумеется, ШОС. UN, BRICS, SCO जरूर इन संगठनों में से शामिल हैं. И сегодня хорошая возможность обсудить основные задачи дальнейшего развития многопланового двустороннего сотрудничества в различных областях. और आज की मुलाकात से हमारे रिश्तों को आगे बढ़ाने पर रास्तों पर बातचीत करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है. Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, Россия и Индия поддерживают десятилетиями особые отношения, дружеские, доверительные. Это фундамент для развития наших отношений в будущем. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, रूस और भारत के बीच बहुत विश्वसनीय रिश्ते बने हुए हैं. इस सिद्धांतों पर वे विकसित हो रहे हैं. И эти отношения носят абсолютно внепартийный характер, поддерживаются подавляющим большинством народов наших стран. और ये किसी से पार्टी या राजनीति पर आधारित नहीं है. लोग, हमारे दो देशों के लोग इस रिश्तों का समर्थन करते हैं. Спасибо. धन्यवाद. आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है और मैं हमेशा अनुभव करता हूं कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है. बहुत सी चीज़ों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है. Ваше превосходительство, дорогой друг, очень рад вас видеть. И каждый раз, когда я с вами встречаюсь, у меня бывают особые чувства и ощущения, и это дает нам возможность регулярно обмениваться мнениями по разным вопросам. हम लगातार संपर्क में रहे हैं. दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है. इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकतापूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं. Мы постоянно находимся в контакте, проводятся регулярные встречи на высоком уровне между двумя сторонами. В декабре текущего года 1,4 миллиарда индийцев с нетерпением вас ждут в Индии для нашего 23-го по счету ежегодного саммита между нашими странами. एक्सेलेंसी, ये हमारे स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है. कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं. हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है. Уважаемый господин президент, это свидетельствует о том, насколько глубоким и всеобъемлющим является наше особо привилегированное и стратегическое партнерство. Даже при самых тяжелых обстоятельствах Индия и Россия всегда шли вперед, плечом к плечу. Наше тесное сотрудничество имеет значение не только для народов наших двух стран, но и для обеспечения глобального мира, стабильности и процветания. एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं. हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं.
हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे, संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। Уважаемый господин президент, по теме продолжающегося конфликта на Украине мы регулярно обмениваемся мнениями. И мы приветствуем все недавно предложенные усилия для установления мира и надеемся, что все стороны будут подходить к этому вопросу конструктивно. Необходимо искать пути для скорейшего завершения конфликта и установления мира. Это и есть призыв всего человечества. Ваше превосходительство, дорогой друг, еще раз большое спасибо, очень рад вас видеть. Спасибо. धन्यवाद. Дорогие друзья, мы очень рады нашей встрече. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, साथियों, आपसे मिलकर हमें बड़ी खुशी हो रही है। Символично, что она проходит на полях саммита ШОС. ये बहुत प्रतिमात्मक है कि वो SCO शिखर सम्मेलन से इतर हो रही है। Организации, которая позволяет объединять усилия глав государств глобального Юга и Востока. ये एक संगठन है जो ग्लोबल साउथ और ईस्ट के देशों के नेताओं को प्रयास मिलाने को एक मंच प्रदान करता है। Усилия по созданию в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности. यूरेशिया में समान और अविभाज्य सिक्योरिटी ढांचे को बनाने के लिए प्रयासों के लिए एक मंच प्रदान करता है। Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, 21 декабря исполняется 15 лет со дня принятия совместного заявления, в котором отмечен выход наших отношений на уровень особого привилегированного стратегического партнерства. महामहिम प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, 21 दिसंबर को 15 साल पूरे हो जाएंगे जब से एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें हमारे स्पेशल प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप पर किस तरह हम पहुँचे। 15 साल हो गए। И можно уверенно констатировать, что многоплановые российско-индийские связи активно развиваются на этих принципах. और हम ये सच्चाई से बता सकते हैं कि हमारे रिश्ते इस सिद्धांतों पर बढ़ते हैं। Налажено многоуровневое взаимодействие. हमारे बीच बहुत बहुमुखी सहयोग चालू है। Торгово-экономическая кооперация в целом демонстрирует положительную динамику. व्यापार में सकारात्मक गतिशीलता देखने को मिलती है। Развивается туристический обмен. पर्यटकों का आदान-प्रदान विकसित हो रहा है। Мы тесно координируем наши усилия на международной арене. अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम हमारे प्रयासों को समन्वय से करते हैं। Это ООН, БРИКС, Группа 20 и, разумеется, ШОС. UN, BRICS, SCO जरूर इन संगठनों में से शामिल हैं। И сегодня хорошая возможность обсудить основные задачи дальнейшего развития многопланового двустороннего сотрудничества в различных областях. और आज की मुलाकात से हमारे रिश्तों को आगे बढ़ाने पर रास्तों पर बातचीत करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है। Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, Россия и Индия поддерживают десятилетиями особые отношения, дружеские, доверительные. Это фундамент для развития наших отношений в будущем. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, रूस और भारत के बीच बहुत विश्वसनीय रिश्ते बने हुए हैं। इस सिद्धांतों पर वे विकसित हो रहे हैं। И эти отношения носят абсолютно внепартийный характер, поддерживаются подавляющим большинством народов наших стран. और ये किसी से पार्टी या राजनीति पर आधारित नहीं है। लोग, हमारे दो देशों के लोग इस रिश्तों का समर्थन करते हैं। Спасибо. धन्यवाद। आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है और मैं हमेशा अनुभव करता हूँ कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है, बहुत सी चीज़ों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है। Ваше превосходительство, дорогой друг, очень рад вас видеть. И каждый раз, когда я с вами встречаюсь, у меня бывают особые чувства и ощущения, и это дает нам возможность регулярно обмениваться мнениями по разным вопросам. हम लगातार संपर्क में रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है।
इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकतापूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। Мы постоянно находимся в контакте, проводятся регулярные встречи на высоком уровне между двумя сторонами. В декабре текущего года 1,4 миллиарда индийцев с нетерпением вас ждут в Индии для нашего 23-го по счету ежегодного саммита между нашими странами. एक्सेलेंसी, ये हमारे स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। Уважаемый господин президент, это свидетельствует о том, насколько глубоким и всеобъемлющим является наше особо привилегированное и стратегическое партнерство. Даже при самых тяжелых обстоятельствах Индия и Россия всегда шли вперед, плечом к плечу. Наше тесное сотрудничество имеет значение не только для народов наших двух стран, но и для обеспечения глобального мира, стабильности и процветания. एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे। संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। Уважаемый господин президент, по теме продолжающегося конфликта на Украине мы регулярно обмениваемся мнениями. Мы приветствуем все недавно предложенные усилия для установления мира и надеемся, что все стороны будут подходить к этому вопросу конструктивно. Необходимо искать пути для скорейшего завершения конфликта и установления мира. Это и есть призыв всего человечества. Ваше превосходительство, дорогой друг, еще раз большое спасибо. Очень рад вас видеть. Спасибо. धन्यवाद. Дорогие друзья, мы очень рады нашей встрече. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, साथियों, आपसे मिलकर हमें बड़ी खुशी हो रही है। Символично, что она проходит на полях саммита ШОС. ये बहुत प्रतिमात्मक है कि वो SCO शिखर सम्मेलन से इतर हो रही है। Организации, которая позволяет объединять усилия глав государств глобального Юга и Востока. ये एक संगठन है जो ग्लोबल साउथ और ईस्ट के देशों के नेताओं को प्रयास मिलाने को एक मंच प्रदान करता है। Усилия по созданию в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности. यूरेशिया में समान और अविभाज्य सिक्योरिटी ढांचे को बनाने के लिए प्रयासों के लिए एक मंच प्रदान करता है। Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, 21 декабря исполняется 15 лет со дня принятия совместного заявления, в котором отмечен выход наших отношений на уровень особого привилегированного стратегического партнерства. महामहिम प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, 21 दिसंबर को 15 साल पूरे हो जाएंगे जब से एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें हमारे स्पेशल प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप पर किस तरह हम पहुंचे। 15 साल हो गए। И можно уверенно констатировать, что многоплановые российско-индийские связи активно развиваются на этих принципах. और हम ये सच्चाई से बता सकते हैं कि हमारे रिश्ते इस सिद्धांतों पर बढ़ते हैं। Налажено многоуровневое взаимодействие. हमारे बीच बहुत बहुमुखी सहयोग चालू है। Торгово-экономическая кооперация в целом демонстрирует положительную динамику. व्यापार में सकारात्मक गतिशीलता देखने को मिलती है। Развивается туристический обмен. पर्यटकों का आदान-प्रदान विकसित हो रहा है। Мы тесно координируем наши усилия на международной арене. अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम हमारे प्रयासों को समन्वय से करते हैं। Это ООН, БРИКС, Группа 20 и, разумеется, ШОС. UN, BRICS, SCO जरूर इन संगठनों में से शामिल हैं। И сегодня хорошая возможность
обсудить основные задачи дальнейшего развития многопланового двустороннего сотрудничества в различных областях. और आज की मुलाकात से हमारे रिश्तों को आगे बढ़ाने पर, रास्तों पर बातचीत करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है. Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, Россия и Индия поддерживают десятилетиями особые отношения, дружеские, доверительные. Это фундамент для развития наших отношений в будущем. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, रूस और भारत के बीच बहुत विश्वसनीय रिश्ते बने हुए हैं. इस सिद्धांतों पर वे विकसित हो रहे हैं. И эти отношения носят абсолютно внепартийный характер, поддерживаются подавляющим большинством народов наших стран. और ये किसी से पार्टी या राजनीति पर आधारित नहीं है. लोग, हमारे दो देशों के लोग इस रिश्तों का समर्थन करते हैं. Спасибо. धन्यवाद. आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है और मैं हमेशा अनुभव करता हूं कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है, बहुत सी चीज़ों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है. Ваше превосходительство, дорогой друг, очень рад вас видеть. И каждый раз, когда я с вами встречаюсь, у меня бывают особые чувства и ощущения, и это дает нам возможность регулярно обмениваться мнениями по разным вопросам. हम लगातार संपर्क में रहे हैं. दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है. इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकतापूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं. Мы постоянно находимся в контакте, проводятся регулярные встречи на высоком уровне между двумя сторонами. В декабре текущего года 1,4 миллиарда индийцев с нетерпением вас ждут в Индии для нашего 23-го по счету ежегодного саммита между нашими странами. एक्सेलेंसी, ये हमारे स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है. कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं. हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है. Уважаемый господин президент, это свидетельствует о том, насколько глубоким и всеобъемлющим является наше особо привилегированное и стратегическое партнерство. Даже при самых тяжелых обстоятельствах Индия и Россия всегда шли вперед, плечом к плечу. Наше тесное сотрудничество имеет значение не только для народов наших двух стран, но и для обеспечения глобального мира, стабильности и процветания. एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं. हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं. हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे. संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा. ये पूरी मानवता की पुकार है. एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ. Уважаемый господин президент, по теме продолжающегося конфликта на Украине мы регулярно обмениваемся мнениями. Мы приветствуем все недавно предложенные усилия для установления мира и надеемся, что все стороны будут подходить к этому вопросу конструктивно. Необходимо искать пути для скорейшего завершения конфликта и установления мира. Это и есть призыв всего человечества. Ваше превосходительство, дорогой друг, еще раз большое спасибо. Очень рад вас видеть. Спасибо. धन्यवाद. Дорогие друзья, мы очень рады нашей встрече. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, साथियों, आपसे मिलकर हमें बड़ी खुशी हो रही है. Символично, что она проходит на полях саммита ШОС. ये बहुत प्रतिमात्मक है कि वो SCO शिखर सम्मेलन से इतर हो रही है. Организации, которая позволяет объединять усилия глав государств глобального Юга и Востока. ये एक संगठन है जो ग्लोबल साउथ और ईस्ट के देशों के नेताओं को प्रयास मिलाने को एक मंच प्रदान करता है.
усилия по созданию в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности. यूरेशिया में समान और अविभाज्य सिक्योरिटी ढांचे को बनाने के लिए प्रयासों के लिए एक मंच प्रदान करता है. Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, 21 декабря исполняется 15 лет со дня принятия совместного заявления, в котором отмечен выход наших отношений на уровень особого привилегированного стратегического партнерства. महामहिम प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, 21 दिसंबर को 15 साल पूरे हो जाएंगे जब से एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें हमारे स्पेशल प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप पर किस तरह हम पहुंचे. 15 साल हो गए. И можно уверенно констатировать, что многоплановые российско-индийские связи активно развиваются на этих принципах. और हम ये सच्चाई से बता सकते हैं कि हमारे रिश्ते इस सिद्धांतों पर बढ़ते हैं. Налажено многоуровневое взаимодействие. हमारे बीच बहुत बहुमुखी सहयोग चालू है. Торгово-экономическая кооперация в целом демонстрирует положительную динамику. व्यापार में सकारात्मक गतिशीलता देखने को मिलती है. Развивается туристический обмен. पर्यटकों का आदान-प्रदान विकसित हो रहा है. Мы тесно координируем наши усилия на международной арене. अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम हमारे प्रयासों को समन्वय से करते हैं. Это ООН, БРИКС, группа 20 и, разумеется, ШОС. UN, BRICS, SCO जरूर इन संगठनों में से शामिल हैं. И сегодня хорошая возможность обсудить основные задачи дальнейшего развития многопланового двустороннего сотрудничества в различных областях. और आज की मुलाकात से हमारे रिश्तों को आगे बढ़ाने पर रास्तों पर बातचीत करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है. Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, Россия и Индия поддерживают десятилетиями особые отношения, дружеские, доверительные. Это фундамент для развития наших отношений в будущем. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, रूस और भारत के बीच बहुत विश्वसनीय रिश्ते बने हुए हैं. इस सिद्धांतों पर वे विकसित हो रहे हैं. И эти отношения носят абсолютно внепартийный характер, поддерживаются подавляющим большинством народов наших стран. और ये किसी से पार्टी या राजनीति पर आधारित नहीं है. लोग, हमारे दो देशों के लोग इस रिश्तों का समर्थन करते हैं. Спасибо. धन्यवाद. आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है और मैं हमेशा अनुभव करता हूं कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है, बहुत सी चीज़ों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है. Ваше превосходительство, дорогой друг, очень рад вас видеть. И каждый раз, когда я с вами встречаюсь, у меня бывают особые чувства и ощущения, и это дает нам возможность регулярно обмениваться мнениями по разным вопросам. हम लगातार संपर्क में रहे हैं. दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है. इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकतापूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं. Мы постоянно находимся в контакте, проводятся регулярные встречи на высоком уровне между двумя сторонами. В декабре текущего года 1,4 миллиарда индийцев с нетерпением вас ждут в Индии для нашего 23-го по счету ежегодного саммита между нашими странами. एक्सेलेंसी, ये हमारे स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है. कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं. हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है. Уважаемый господин президент, это свидетельствует о том, насколько глубоким и всеобъемлющим является наше особо привилегированное и стратегическое партнерство. Даже при самых тяжелых обстоятельствах Индия и Россия всегда шли вперед, плечом к плечу. Наше тесное сотрудничество имеет значение не только для народов наших двух стран, но и для обеспечения глобального мира, стабильности и процветания. एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं. हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं.
हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे, संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। Уважаемый господин президент, по теме продолжающегося конфликта на Украине мы регулярно обмениваемся мнениями. Мы приветствуем все недавно предложенные усилия для установления мира и надеемся, что все стороны будут подходить к этому вопросу конструктивно. Необходимо искать пути для скорейшего завершения конфликта и установления мира. Это и есть призыв всего человечества. Ваше превосходительство, дорогой друг, еще раз большое спасибо, очень рад вас видеть. Спасибо. धन्यवाद. Дорогие друзья, мы очень рады нашей встрече. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, साथियों, आपसे मिलकर हमें बड़ी खुशी हो रही है। Символично, что она проходит на полях саммита ШОС. ये बहुत प्रतिमात्मक है कि वो SCO शिखर सम्मेलन से इतर हो रही है। Организации, которая позволяет объединять усилия глав государств глобального Юга и Востока. ये एक संगठन है जो ग्लोबल साउथ और ईस्ट के देशों के नेताओं को प्रयास मिलाने को एक मंच प्रदान करता है। Усилия по созданию в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности. यूरेशिया में समान और अविभाज्य सिक्योरिटी ढांचे को बनाने के लिए प्रयासों के लिए एक मंच प्रदान करता है। Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, 21 декабря исполняется 15 лет со дня принятия совместного заявления, в котором отмечен выход наших отношений на уровень особого привилегированного стратегического партнерства. महामहिम प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, 21 दिसंबर को 15 साल पूरे हो जाएंगे जब से एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें हमारे स्पेशल प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप पर किस तरह हम पहुंचे। 15 साल हो गए। И можно уверенно констатировать, что многоплановые российско-индийские связи активно развиваются на этих принципах. और हम ये सच्चाई से बता सकते हैं कि हमारे रिश्ते इस सिद्धांतों पर बढ़ते हैं। Налажено многоуровневое взаимодействие. हमारे बीच बहुत बहुमुखी सहयोग चालू है। Торгово-экономическая кооперация в целом демонстрирует положительную динамику. व्यापार में सकारात्मक गतिशीलता देखने को मिलती है। Развивается туристический обмен. पर्यटकों का आदान-प्रदान विकसित हो रहा है। Мы тесно координируем наши усилия на международной арене. अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम हमारे प्रयासों को समन्वय से करते हैं। Это ООН, БРИКС, Группа 20 и, разумеется, ШОС. UN, BRICS, SCO जरूर इन संगठनों में से शामिल हैं। И сегодня хорошая возможность обсудить основные задачи дальнейшего развития многопланового двустороннего сотрудничества в различных областях. और आज की मुलाकात से हमारे रिश्तों को आगे बढ़ाने पर रास्तों पर बातचीत करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है। Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, Россия и Индия поддерживают десятилетиями особые отношения, дружеские, доверительные. Это фундамент для развития наших отношений в будущем. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, रूस और भारत के बीच बहुत विश्वसनीय रिश्ते बने हुए हैं। इस सिद्धांतों पर वे विकसित हो रहे हैं। И эти отношения носят абсолютно внепартийный характер, поддерживаются подавляющим большинством народов наших стран. और ये किसी से पार्टी या राजनीति पर आधारित नहीं है। लोग, हमारे दो देशों के लोग इस रिश्तों का समर्थन करते हैं। Спасибо. धन्यवाद। आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है और मैं हमेशा अनुभव करता हूँ कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है, बहुत सी चीज़ों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है। Ваше превосходительство, дорогой друг, очень рад вас видеть. И каждый раз, когда я с вами встречаюсь, у меня бывают особые чувства и ощущения, и это дает нам возможность регулярно обмениваться мнениями по разным вопросам. हम लगातार संपर्क में रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है।
इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकता पूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। Мы постоянно находимся в контакте, проводятся регулярные встречи на высоком уровне между двумя странами. В декабре текущего года 1 миллиард и 400 миллионов индийцев с нетерпением вас ждут в Индии для нашего 23-го по счету ежегодного саммита между нашими странами. एक्सेलेंसी, ये हमारे स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। Уважаемый господин президент, это свидетельствует о том, насколько глубоким и всеобъемлющим является наше особо привилегированное и стратегическое партнерство. Даже при самых тяжелых обстоятельствах Индия и Россия всегда шли вперед, плечом к плечу. Наше тесное сотрудничество имеет значение не только для народов наших двух стран, но и для обеспечения глобального мира, стабильности и процветания. एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे। संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। Уважаемый господин президент, по теме продолжающегося конфликта на Украине мы регулярно обмениваемся мнениями. Мы приветствуем все недавно предложенные усилия для установления мира и надеемся, что все стороны будут подходить к этому вопросу конструктивно. Необходимо искать пути для скорейшего завершения конфликта и установления мира. Это и есть призыв всего человечества. Ваше превосходительство, дорогой друг, еще раз большое спасибо. Очень рад вас видеть. Спасибо. धन्यवाद. Дорогие друзья, мы очень рады нашей встрече. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, साथियों, आपसे मिलकर हमें बड़ी खुशी हो रही है। Символично, что она проходит на полях саммита ШОС. ये बहुत प्रतिमात्मक है कि वो SCO शिखर सम्मेलन से इतर हो रही है। Организации, которая позволяет объединять усилия глав государств глобального Юга и Востока. ये एक संगठन है जो ग्लोबल साउथ और ईस्ट के देशों के नेताओं को प्रयास मिलाने को एक मंच प्रदान करता है। Усилия по созданию в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности. यूरेशिया में समान और अविभाज्य सिक्योरिटी ढांचे को बनाने के लिए प्रयासों के लिए एक मंच प्रदान करता है। Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, 21 декабря исполняется 15 лет со дня принятия совместного заявления, в котором отмечен выход наших отношений на уровень особого привилегированного стратегического партнерства. महामहिम प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, 21 दिसंबर को 15 साल पूरे हो जाएंगे जब से एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें हमारे स्पेशल प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप पर किस तरह हम पहुंचे। 15 साल हो गए। И можно уверенно констатировать, что многоплановые российско-индийские связи активно развиваются на этих принципах. और हम ये सच्चाई से बता सकते हैं कि हमारे रिश्ते इस सिद्धांतों पर बढ़ते हैं। Налажено многоуровневое взаимодействие. हमारे बीच बहुत बहुमुखी सहयोग चालू है। Торгово-экономическая кооперация в целом демонстрирует положительную динамику. व्यापार में सकारात्मक गतिशीलता देखने को मिलती है। Развивается туристический обмен. पर्यटकों का आदान-प्रदान विकसित हो रहा है। Мы тесно координируем наши усилия на международной арене. अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम हमारे प्रयासों को समन्वय से करते हैं। Это ООН, БРИКС, Группа 20 и, разумеется, ШОС. UN, BRICS, SCO जरूर इन संगठनों में से शामिल हैं। И сегодня хорошая возможность
обсудить основные задачи дальнейшего развития многопланового двустороннего сотрудничества в различных областях. और आज की मुलाकात से हमारे रिश्तों को आगे बढ़ाने पर, रास्तों पर बातचीत करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है. Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, Россия и Индия поддерживают десятилетиями особые отношения, дружеские, доверительные. Это фундамент для развития наших отношений в будущем. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, रूस और भारत के बीच बहुत विश्वसनीय रिश्ते बने हुए हैं. इस सिद्धांतों पर वे विकसित हो रहे हैं. И эти отношения носят абсолютно внепартийный характер, поддерживаются подавляющим большинством народов наших стран. और ये किसी से पार्टी या राजनीति पर आधारित नहीं है. लोग, हमारे दो देशों के लोग इस रिश्तों का समर्थन करते हैं. Спасибо. धन्यवाद. आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है और मैं हमेशा अनुभव करता हूं कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है, बहुत सी चीज़ों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है. Ваше превосходительство, дорогой друг, очень рад вас видеть. И каждый раз, когда я с вами встречаюсь, у меня бывают особые чувства и ощущения, и это дает нам возможность регулярно обмениваться мнениями по разным вопросам. हम लगातार संपर्क में रहे हैं. दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है. इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकतापूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं. Мы постоянно находимся в контакте, проводятся регулярные встречи на высоком уровне между двумя сторонами. В декабре текущего года 1,4 миллиарда индийцев с нетерпением вас ждут в Индии для нашего 23-го по счету ежегодного саммита между нашими странами. एक्सेलेंसी, ये हमारे स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है. कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं. हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है. Уважаемый господин президент, это свидетельствует о том, насколько глубоким и всеобъемлющим является наше особо привилегированное и стратегическое партнерство. Даже при самых тяжелых обстоятельствах Индия и Россия всегда шли вперед, плечом к плечу. Наше тесное сотрудничество имеет значение не только для народов наших двух стран, но и для обеспечения глобального мира, стабильности и процветания. एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं. हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं. हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे. संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा. ये पूरी मानवता की पुकार है. एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ. Уважаемый господин президент, по теме продолжающегося конфликта на Украине мы регулярно обмениваемся мнениями. Мы приветствуем все недавно предложенные усилия для установления мира и надеемся, что все стороны будут подходить к этому вопросу конструктивно. Необходимо искать пути для скорейшего завершения конфликта и установления мира. Это и есть призыв всего человечества. Ваше превосходительство, дорогой друг, еще раз большое спасибо. Очень рад вас видеть. Спасибо. धन्यवाद. Дорогие друзья, мы очень рады нашей встрече. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, साथियों, आपसे मिलकर हमें बड़ी खुशी हो रही है. Символично, что она проходит на полях саммита ШОС. ये बहुत प्रतिमात्मक है कि वो SCO शिखर सम्मेलन से इतर हो रही है. Организации, которая позволяет объединять усилия глав государств глобального Юга и Востока. ये एक संगठन है जो ग्लोबल साउथ और ईस्ट के देशों के नेताओं को प्रयास मिलाने को एक मंच प्रदान करता है.
усилия по созданию в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности. यूरेशिया में समान और अविभाज्य सिक्योरिटी ढांचे को बनाने के लिए प्रयासों के लिए एक मंच प्रदान करता है. Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, 21 декабря исполняется 15 лет со дня принятия совместного заявления, в котором отмечен выход наших отношений на уровень особого привилегированного стратегического партнерства. महामहिम प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, 21 दिसंबर को 15 साल पूरे हो जाएंगे जब से एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें हमारे स्पेशल प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप पर किस तरह हम पहुंचे. 15 साल हो गए. И можно уверенно констатировать, что многоплановые российско-индийские связи активно развиваются на этих принципах. और हम ये सच्चाई से बता सकते हैं कि हमारे रिश्ते इस सिद्धांतों पर बढ़ते हैं. Налажено многоуровневое взаимодействие. हमारे बीच बहुत बहुमुखी सहयोग चालू है. Торгово-экономическая кооперация в целом демонстрирует положительную динамику. व्यापार में सकारात्मक गतिशीलता देखने को मिलती है. Развивается туристический обмен. पर्यटकों का आदान-प्रदान विकसित हो रहा है. Мы тесно координируем наши усилия на международной арене. अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम हमारे प्रयासों को समन्वय से करते हैं. Это ООН, БРИКС, группа 20 и, разумеется, ШОС. UN, BRICS, SCO जरूर इन संगठनों में से शामिल हैं. И сегодня хорошая возможность обсудить основные задачи дальнейшего развития многопланового двустороннего сотрудничества в различных областях. और आज की मुलाकात से हमारे रिश्तों को आगे बढ़ाने पर रास्तों पर बातचीत करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है. Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, Россия и Индия поддерживают десятилетиями особые отношения, дружеские, доверительные. Это фундамент для развития наших отношений в будущем. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, रूस और भारत के बीच बहुत विश्वसनीय रिश्ते बने हुए हैं. इस सिद्धांतों पर वे विकसित हो रहे हैं. И эти отношения носят абсолютно внепартийный характер, поддерживаются подавляющим большинством народов наших стран. और ये किसी से पार्टी या राजनीति पर आधारित नहीं है. लोग, हमारे दो देशों के लोग इस रिश्तों का समर्थन करते हैं. Спасибо. धन्यवाद. आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है और मैं हमेशा अनुभव करता हूं कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है. बहुत सी चीज़ों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है. Ваше превосходительство, дорогой друг, очень рад вас видеть. И каждый раз, когда я с вами встречаюсь, у меня бывают особые чувства и ощущения, и это дает нам возможность регулярно обмениваться мнениями по разным вопросам. हम लगातार संपर्क में रहे हैं. दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है. इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकतापूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं. Мы постоянно находимся в контакте, проводятся регулярные встречи на высоком уровне между двумя сторонами. В декабре текущего года 1,4 миллиарда индийцев с нетерпением вас ждут в Индии для нашего 23-го по счету ежегодного саммита между нашими странами. एक्सेलेंसी, ये हमारे स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है. कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं. हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है. Уважаемый господин президент, это свидетельствует о том, насколько глубоким и всеобъемлющим является наше особо привилегированное и стратегическое партнерство. Даже при самых тяжелых обстоятельствах Индия и Россия всегда шли вперед, плечом к плечу. Наше тесное сотрудничество имеет значение не только для народов наших двух стран, но и для обеспечения глобального мира, стабильности и процветания. एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं. हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं.
हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे, संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। Уважаемый господин президент, по теме продолжающегося конфликта на Украине мы регулярно обмениваемся мнениями. И мы приветствуем все недавно предложенные усилия для установления мира и надеемся, что все стороны будут подходить к этому вопросу конструктивно. Необходимо искать пути для скорейшего завершения конфликта и установления мира. Это и есть призыв всего человечества. Ваше превосходительство, дорогой друг, еще раз большое спасибо, очень рад вас видеть. Спасибо. धन्यवाद. Дорогие друзья, мы очень рады нашей встрече. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, साथियों, आपसे मिलकर हमें बड़ी खुशी हो रही है। Символично, что она проходит на полях саммита ШОС. ये बहुत प्रतिमात्मक है कि वो SCO शिखर सम्मेलन से इतर हो रही है। Организации, которая позволяет объединять усилия глав государств глобального Юга и Востока. ये एक संगठन है जो ग्लोबल साउथ और ईस्ट के देशों के नेताओं को प्रयास मिलाने को एक मंच प्रदान करता है। Усилия по созданию в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности. यूरेशिया में समान और अविभाज्य सिक्योरिटी ढांचे को बनाने के लिए प्रयासों के लिए एक मंच प्रदान करता है। Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, 21 декабря исполняется 15 лет со дня принятия совместного заявления, в котором отмечен выход наших отношений на уровень особого привилегированного стратегического партнерства. महामहिम प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, 21 दिसंबर को 15 साल पूरे हो जाएंगे जब से एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें हमारे स्पेशल प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप पर किस तरह हम पहुंचे। 15 साल हो गए। И можно уверенно констатировать, что многоплановые российско-индийские связи активно развиваются на этих принципах. और हम ये सच्चाई से बता सकते हैं कि हमारे रिश्ते इस सिद्धांतों पर बढ़ते हैं। Налажено многоуровневое взаимодействие. हमारे बीच बहुत बहुमुखी सहयोग चालू है। Торгово-экономическая кооперация в целом демонстрирует положительную динамику. व्यापार में सकारात्मक गतिशीलता देखने को मिलती है। Развивается туристический обмен. पर्यटकों का आदान-प्रदान विकसित हो रहा है। Мы тесно координируем наши усилия на международной арене. अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम हमारे प्रयासों को समन्वय से करते हैं। Это ООН, БРИКС, Группа 20 и, разумеется, ШОС. UN, BRICS, SCO जरूर इन संगठनों में से शामिल हैं। И сегодня хорошая возможность обсудить основные задачи дальнейшего развития многопланового двустороннего сотрудничества в различных областях. और आज की मुलाकात से हमारे रिश्तों को आगे बढ़ाने पर रास्तों पर बातचीत करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है। Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, Россия и Индия поддерживают десятилетиями особые отношения, дружеские, доверительные. Это фундамент для развития наших отношений в будущем. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, रूस और भारत के बीच बहुत विश्वसनीय रिश्ते बने हुए हैं। इस सिद्धांतों पर वे विकसित हो रहे हैं। И эти отношения носят абсолютно внепартийный характер, поддерживаются подавляющим большинством народов наших стран. और ये किसी से पार्टी या राजनीति पर आधारित नहीं है। लोग, हमारे दो देशों के लोग इस रिश्तों का समर्थन करते हैं। Спасибо. धन्यवाद। आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है और मैं हमेशा अनुभव करता हूँ कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है, बहुत सी चीज़ों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है। Ваше превосходительство, дорогой друг, очень рад вас видеть. И каждый раз, когда я с вами встречаюсь, у меня бывают особые чувства и ощущения, и это дает нам возможность регулярно обмениваться мнениями по разным вопросам. हम लगातार संपर्क में रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है।
इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकतापूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। Мы постоянно находимся в контакте, проводятся регулярные встречи на высоком уровне между двумя сторонами. В декабре текущего года 1,4 миллиарда индийцев с нетерпением вас ждут в Индии для нашего 23-го по счету ежегодного саммита между нашими странами. एक्सेलेंसी, ये हमारे स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। Уважаемый господин президент, это свидетельствует о том, насколько глубоким и всеобъемлющим является наше особо привилегированное и стратегическое партнерство. Даже при самых тяжелых обстоятельствах Индия и Россия всегда шли вперед, плечом к плечу. Наше тесное сотрудничество имеет значение не только для народов наших двух стран, но и для обеспечения глобального мира, стабильности и процветания. एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे। संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। Уважаемый господин президент, по теме продолжающегося конфликта на Украине мы регулярно обмениваемся мнениями. Мы приветствуем все недавно предложенные усилия для установления мира и надеемся, что все стороны будут подходить к этому вопросу конструктивно. Необходимо искать пути для скорейшего завершения конфликта и установления мира. Это и есть призыв всего человечества. Ваше превосходительство, дорогой друг, еще раз большое спасибо. Очень рад вас видеть. Спасибо. धन्यवाद. Дорогие друзья, мы очень рады нашей встрече. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, साथियों, आपसे मिलकर हमें बड़ी खुशी हो रही है। Символично, что она проходит на полях саммита ШОС. ये बहुत प्रतिमात्मक है कि वो SCO शिखर सम्मेलन से इतर हो रही है। Организации, которая позволяет объединять усилия глав государств глобального Юга и Востока. ये एक संगठन है जो ग्लोबल साउथ और ईस्ट के देशों के नेताओं को प्रयास मिलाने को एक मंच प्रदान करता है। Усилия по созданию в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности. यूरेशिया में समान और अविभाज्य सिक्योरिटी ढांचे को बनाने के लिए प्रयासों के लिए एक मंच प्रदान करता है। Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, 21 декабря исполняется 15 лет со дня принятия совместного заявления, в котором отмечен выход наших отношений на уровень особого привилегированного стратегического партнерства. महामहिम प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, 21 दिसंबर को 15 साल पूरे हो जाएंगे जब से एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें हमारे स्पेशल प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप पर किस तरह हम पहुंचे। 15 साल हो गए। И можно уверенно констатировать, что многоплановые российско-индийские связи активно развиваются на этих принципах. और हम ये सच्चाई से बता सकते हैं कि हमारे रिश्ते इस सिद्धांतों पर बढ़ते हैं। Налажено многоуровневое взаимодействие. हमारे बीच बहुत बहुमुखी सहयोग चालू है। Торгово-экономическая кооперация в целом демонстрирует положительную динамику. व्यापार में सकारात्मक गतिशीलता देखने को मिलती है। Развивается туристический обмен. पर्यटकों का आदान-प्रदान विकसित हो रहा है। Мы тесно координируем наши усилия на международной арене. अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम हमारे प्रयासों को समन्वय से करते हैं। Это ООН, БРИКС, группа 20 и, разумеется, ШОС. UN, BRICS, SCO जरूर इन संगठनों में से शामिल हैं। И сегодня хорошая возможность
обсудить основные задачи дальнейшего развития многопланового двустороннего сотрудничества в различных областях. और आज की मुलाकात से हमारे रिश्तों को आगे बढ़ाने पर, रास्तों पर बातचीत करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है. Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, Россия и Индия поддерживают десятилетиями особые отношения, дружеские, доверительные. Это фундамент для развития наших отношений в будущем. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, रूस और भारत के बीच बहुत विश्वसनीय रिश्ते बने हुए हैं. इस सिद्धांतों पर वे विकसित हो रहे हैं. И эти отношения носят абсолютно внепартийный характер, поддерживаются подавляющим большинством народов наших стран. और ये किसी से पार्टी या राजनीति पर आधारित नहीं है. लोग, हमारे दो देशों के लोग इस रिश्तों का समर्थन करते हैं. Спасибо. धन्यवाद. आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है और मैं हमेशा अनुभव करता हूं कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है, बहुत सी चीज़ों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है. Ваше превосходительство, дорогой друг, очень рад вас видеть. И каждый раз, когда я с вами встречаюсь, у меня бывают особые чувства и ощущения, и это дает нам возможность регулярно обмениваться мнениями по разным вопросам. हम लगातार संपर्क में रहे हैं. दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है. इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकतापूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं. Мы постоянно находимся в контакте, проводятся регулярные встречи на высоком уровне между двумя сторонами. В декабре текущего года 1,4 миллиарда индийцев с нетерпением вас ждут в Индии для нашего 23-го по счету ежегодного саммита между нашими странами. एक्सेलेंसी, ये हमारे स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है. कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं. हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है. Уважаемый господин президент, это свидетельствует о том, насколько глубоким и всеобъемлющим является наше особо привилегированное и стратегическое партнерство. Даже при самых тяжелых обстоятельствах Индия и Россия всегда шли вперед, плечом к плечу. Наше тесное сотрудничество имеет значение не только для народов наших двух стран, но и для обеспечения глобального мира, стабильности и процветания. एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं. हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं. हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे. संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा. ये पूरी मानवता की पुकार है. एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ. Уважаемый господин президент, по теме продолжающегося конфликта на Украине мы регулярно обмениваемся мнениями. Мы приветствуем все недавно предложенные усилия для установления мира и надеемся, что все стороны будут подходить к этому вопросу конструктивно. Необходимо искать пути для скорейшего завершения конфликта и установления мира. Это и есть призыв всего человечества. Ваше превосходительство, дорогой друг, еще раз большое спасибо. Очень рад вас видеть. Спасибо. धन्यवाद. Дорогие друзья, мы очень рады нашей встрече. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, साथियों, आपसे मिलकर हमें बड़ी खुशी हो रही है. Символично, что она проходит на полях саммита ШОС. ये बहुत प्रतिमात्मक है कि वो SCO शिखर सम्मेलन से इतर हो रही है. Организации, которая позволяет объединять усилия глав государств глобального Юга и Востока. ये एक संगठन है जो ग्लोबल साउथ और ईस्ट के देशों के नेताओं को प्रयास मिलाने को एक मंच प्रदान करता है.
усилия по созданию в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности. यूरेशिया में समान और अविभाज्य सिक्योरिटी ढांचे को बनाने के लिए प्रयासों के लिए एक मंच प्रदान करता है. Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, 21 декабря исполняется 15 лет со дня принятия совместного заявления, в котором отмечен выход наших отношений на уровень особого привилегированного стратегического партнерства. महामहिम प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, 21 दिसंबर को 15 साल पूरे हो जाएंगे जब से एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें हमारे स्पेशल प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप पर किस तरह हम पहुंचे. 15 साल हो गए. И можно уверенно констатировать, что многоплановые российско-индийские связи активно развиваются на этих принципах. और हम ये सच्चाई से बता सकते हैं कि हमारे रिश्ते इस सिद्धांतों पर बढ़ते हैं. Налажено многоуровневое взаимодействие. हमारे बीच बहुत बहुमुखी सहयोग चालू है. Торгово-экономическая кооперация в целом демонстрирует положительную динамику. व्यापार में सकारात्मक गतिशीलता देखने को मिलती है. Развивается туристический обмен. पर्यटकों का आदान-प्रदान विकसित हो रहा है. Мы тесно координируем наши усилия на международной арене. अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम हमारे प्रयासों को समन्वय से करते हैं. Это ООН, БРИКС, группа 20 и, разумеется, ШОС. UN, BRICS, SCO जरूर इन संगठनों में से शामिल हैं. И сегодня хорошая возможность обсудить основные задачи дальнейшего развития многопланового двустороннего сотрудничества в различных областях. और आज की मुलाकात से हमारे रिश्तों को आगे बढ़ाने पर रास्तों पर बातचीत करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है. Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, Россия и Индия поддерживают десятилетиями особые отношения, дружеские, доверительные. Это фундамент для развития наших отношений в будущем. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, रूस और भारत के बीच बहुत विश्वसनीय रिश्ते बने हुए हैं. इस सिद्धांतों पर वे विकसित हो रहे हैं. И эти отношения носят абсолютно внепартийный характер, поддерживаются подавляющим большинством народов наших стран. और ये किसी से पार्टी या राजनीति पर आधारित नहीं है. लोग, हमारे दो देशों के लोग इस रिश्तों का समर्थन करते हैं. Спасибо. धन्यवाद. आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है और मैं हमेशा अनुभव करता हूं कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है. बहुत सी चीज़ों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है. Ваше превосходительство, дорогой друг, очень рад вас видеть. И каждый раз, когда я с вами встречаюсь, у меня бывают особые чувства и ощущения, и это дает нам возможность регулярно обмениваться мнениями по разным вопросам. हम लगातार संपर्क में रहे हैं. दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है. इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकतापूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं. Мы постоянно находимся в контакте, проводятся регулярные встречи на высоком уровне между двумя сторонами. В декабре текущего года 1,4 миллиарда индийцев с нетерпением вас ждут в Индии для нашего 23-го по счету ежегодного саммита между нашими странами. एक्सेलेंसी, ये हमारे स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है. कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं. हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है. Уважаемый господин президент, это свидетельствует о том, насколько глубоким и всеобъемлющим является наше особо привилегированное и стратегическое партнерство. Даже при самых тяжелых обстоятельствах Индия и Россия всегда шли вперед, плечом к плечу. Наше тесное сотрудничество имеет значение не только для народов наших двух стран, но и для обеспечения глобального мира, стабильности и процветания. एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं. हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं.
हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे, संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। Уважаемый господин президент, по теме продолжающегося конфликта на Украине мы регулярно обмениваемся мнениями. Мы приветствуем все недавно предложенные усилия для установления мира и надеемся, что все стороны будут подходить к этому вопросу конструктивно. Необходимо искать пути для скорейшего завершения конфликта и установления мира. Это и есть призыв всего человечества. Ваше превосходительство, дорогой друг, еще раз большое спасибо, очень рад вас видеть. Спасибо. धन्यवाद. Дорогие друзья, мы очень рады нашей встрече. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, साथियों, आपसे मिलकर हमें बड़ी खुशी हो रही है। Символично, что она проходит на полях саммита ШОС. ये बहुत प्रतिमात्मक है कि वो SCO शिखर सम्मेलन से इतर हो रही है। Организации, которая позволяет объединять усилия глав государств глобального Юга и Востока. ये एक संगठन है जो ग्लोबल साउथ और ईस्ट के देशों के नेताओं को प्रयास मिलाने को एक मंच प्रदान करता है। Усилия по созданию в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности. यूरेशिया में समान और अविभाज्य सिक्योरिटी ढांचे को बनाने के लिए प्रयासों के लिए एक मंच प्रदान करता है। Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, 21 декабря исполняется 15 лет со дня принятия совместного заявления, в котором отмечен выход наших отношений на уровень особого привилегированного стратегического партнерства. महामहिम प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, 21 दिसंबर को 15 साल पूरे हो जाएंगे जब से एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें हमारे स्पेशल प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप पर किस तरह हम पहुंचे। 15 साल हो गए। И можно уверенно констатировать, что многоплановые российско-индийские связи активно развиваются на этих принципах. और हम ये सच्चाई से बता सकते हैं कि हमारे रिश्ते इस सिद्धांतों पर बढ़ते हैं। Налажено многоуровневое взаимодействие. हमारे बीच बहुत बहुमुखी सहयोग चालू है। Торгово-экономическая кооперация в целом демонстрирует положительную динамику. व्यापार में सकारात्मक गतिशीलता देखने को मिलती है। Развивается туристический обмен. पर्यटकों का आदान-प्रदान विकसित हो रहा है। Мы тесно координируем наши усилия на международной арене. अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम हमारे प्रयासों को समन्वय से करते हैं। Это ООН, БРИКС, Группа 20 и, разумеется, ШОС. UN, BRICS, SCO जरूर इन संगठनों में से शामिल हैं। И сегодня хорошая возможность обсудить основные задачи дальнейшего развития многопланового двустороннего сотрудничества в различных областях. और आज की मुलाकात से हमारे रिश्तों को आगे बढ़ाने पर रास्तों पर बातचीत करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है। Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, Россия и Индия поддерживают десятилетиями особые отношения, дружеские, доверительные. Это фундамент для развития наших отношений в будущем. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, रूस और भारत के बीच बहुत विश्वसनीय रिश्ते बने हुए हैं। इस सिद्धांतों पर वे विकसित हो रहे हैं। И эти отношения носят абсолютно внепартийный характер, поддерживаются подавляющим большинством народов наших стран. और ये किसी से पार्टी या राजनीति पर आधारित नहीं है। लोग, हमारे दो देशों के लोग इस रिश्तों का समर्थन करते हैं। Спасибо. धन्यवाद। आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है और मैं हमेशा अनुभव करता हूं कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है, बहुत सी चीज़ों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है। Ваше превосходительство, дорогой друг, очень рад вас видеть. И каждый раз, когда я с вами встречаюсь, у меня бывают особые чувства и ощущения, и это дает нам возможность регулярно обмениваться мнениями по разным вопросам. हम लगातार संपर्क में रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है।
इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकतापूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। Мы постоянно находимся в контакте, проводятся регулярные встречи на высоком уровне между двумя сторонами. В декабре текущего года 1,4 миллиарда индийцев с нетерпением вас ждут в Индии для нашего 23-го по счету ежегодного саммита между нашими странами. एक्सेलेंसी, ये हमारे स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। Уважаемый господин президент, это свидетельствует о том, насколько глубоким и всеобъемлющим является наше особо привилегированное и стратегическое партнерство. Даже при самых тяжелых обстоятельствах Индия и Россия всегда шли вперед, плечом к плечу. Наше тесное сотрудничество имеет значение не только для народов наших двух стран, но и для обеспечения глобального мира, стабильности и процветания. एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे, संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। Уважаемый господин президент, по теме продолжающегося конфликта на Украине мы регулярно обмениваемся мнениями. Мы приветствуем все недавно предложенные усилия для установления мира и надеемся, что все стороны будут подходить к этому вопросу конструктивно. Необходимо искать пути для скорейшего завершения конфликта и установления мира. Это и есть призыв всего человечества. Ваше превосходительство, дорогой друг, еще раз большое спасибо. Очень рад вас видеть. Спасибо. धन्यवाद. Дорогие друзья, мы очень рады нашей встрече. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, साथियों, आपसे मिलकर हमें बड़ी खुशी हो रही है। Символично, что она проходит на полях саммита ШОС. ये बहुत प्रतिमात्मक है कि वो SCO शिखर सम्मेलन से इतर हो रही है। Организации, которая позволяет объединять усилия глав государств глобального Юга и Востока. ये एक संगठन है जो ग्लोबल साउथ और ईस्ट के देशों के नेताओं को प्रयास मिलाने को एक मंच प्रदान करता है। Усилия по созданию в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности. यूरेशिया में समान और अविभाज्य सिक्योरिटी ढांचे को बनाने के लिए प्रयासों के लिए एक मंच प्रदान करता है। Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, 21 декабря исполняется 15 лет со дня принятия совместного заявления, в котором отмечен выход наших отношений на уровень особого привилегированного стратегического партнерства. महामहिम प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, 21 दिसंबर को 15 साल पूरे हो जाएंगे जब से एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें हमारे स्पेशल प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप पर किस तरह हम पहुंचे। 15 साल हो गए। И можно уверенно констатировать, что многоплановые российско-индийские связи активно развиваются на этих принципах. और हम ये सच्चाई से बता सकते हैं कि हमारे रिश्ते इस सिद्धांतों पर बढ़ते हैं। Налажено многоуровневое взаимодействие. हमारे बीच बहुत बहुमुखी सहयोग चालू है। Торгово-экономическая кооперация в целом демонстрирует положительную динамику. व्यापार में सकारात्मक गतिशीलता देखने को मिलती है। Развивается туристический обмен. पर्यटकों का आदान-प्रदान विकसित हो रहा है। Мы тесно координируем наши усилия на международной арене. अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम हमारे प्रयासों को समन्वय से करते हैं। Это ООН, БРИКС, группа 20 и, разумеется, ШОС. UN, BRICS, SCO जरूर इन संगठनों में से शामिल हैं। И сегодня хорошая возможность
обсудить основные задачи дальнейшего развития многопланового двустороннего сотрудничества в различных областях. और आज की मुलाकात से हमारे रिश्तों को आगे बढ़ाने पर, रास्तों पर बातचीत करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है. Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, Россия и Индия поддерживают десятилетиями особые отношения, дружеские, доверительные. Это фундамент для развития наших отношений в будущем. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, रूस और भारत के बीच बहुत विश्वसनीय रिश्ते बने हुए हैं. इस सिद्धांतों पर वे विकसित हो रहे हैं. И эти отношения носят абсолютно внепартийный характер, поддерживаются подавляющим большинством народов наших стран. और ये किसी से पार्टी या राजनीति पर आधारित नहीं है. लोग, हमारे दो देशों के लोग इस रिश्तों का समर्थन करते हैं. Спасибо. धन्यवाद. आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है और मैं हमेशा अनुभव करता हूं कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है, बहुत सी चीज़ों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है. Ваше превосходительство, дорогой друг, очень рад вас видеть. И каждый раз, когда я с вами встречаюсь, у меня бывают особые чувства и ощущения, и это дает нам возможность регулярно обмениваться мнениями по разным вопросам. हम लगातार संपर्क में रहे हैं. दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है. इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकतापूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं. Мы постоянно находимся в контакте, проводятся регулярные встречи на высоком уровне между двумя сторонами. В декабре текущего года 1,4 миллиарда индийцев с нетерпением вас ждут в Индии для нашего 23-го по счету ежегодного саммита между нашими странами. एक्सेलेंसी, ये हमारे स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है. कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं. हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है. Уважаемый господин президент, это свидетельствует о том, насколько глубоким и всеобъемлющим является наше особо привилегированное и стратегическое партнерство. Даже при самых тяжелых обстоятельствах Индия и Россия всегда шли вперед, плечом к плечу. Наше тесное сотрудничество имеет значение не только для народов наших двух стран, но и для обеспечения глобального мира, стабильности и процветания. एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं. हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं. हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे. संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा. ये पूरी मानवता की पुकार है. एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ. Уважаемый господин президент, по теме продолжающегося конфликта на Украине мы регулярно обмениваемся мнениями. Мы приветствуем все недавно предложенные усилия для установления мира и надеемся, что все стороны будут подходить к этому вопросу конструктивно. Необходимо искать пути для скорейшего завершения конфликта и установления мира. Это и есть призыв всего человечества. Ваше превосходительство, дорогой друг, еще раз большое спасибо. Очень рад вас видеть. Спасибо. धन्यवाद. Дорогие друзья, мы очень рады нашей встрече. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, साथियों, आपसे मिलकर हमें बड़ी खुशी हो रही है. Символично, что она проходит на полях саммита ШОС. ये बहुत प्रतिमात्मक है कि वो SCO शिखर सम्मेलन से इतर हो रही है. Организации, которая позволяет объединять усилия глав государств глобального Юга и Востока. ये एक संगठन है जो ग्लोबल साउथ और ईस्ट के देशों के नेताओं को प्रयास मिलाने को एक मंच प्रदान करता है.
усилия по созданию в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности. यूरेशिया में समान और अविभाज्य सिक्योरिटी ढांचे को बनाने के लिए प्रयासों के लिए एक मंच प्रदान करता है. Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, 21 декабря исполняется 15 лет со дня принятия совместного заявления, в котором отмечен выход наших отношений на уровень особого привилегированного стратегического партнерства. महामहिम प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, 21 दिसंबर को 15 साल पूरे हो जाएंगे जब से एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें हमारे स्पेशल प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप पर किस तरह हम पहुंचे. 15 साल हो गए. И можно уверенно констатировать, что многоплановые российско-индийские связи активно развиваются на этих принципах. और हम ये सच्चाई से बता सकते हैं कि हमारे रिश्ते इस सिद्धांतों पर बढ़ते हैं. Налажено многоуровневое взаимодействие. हमारे बीच बहुत बहुमुखी सहयोग चालू है. Торгово-экономическая кооперация в целом демонстрирует положительную динамику. व्यापार में सकारात्मक गतिशीलता देखने को मिलती है. Развивается туристический обмен. पर्यटकों का आदान-प्रदान विकसित हो रहा है. Мы тесно координируем наши усилия на международной арене. अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम हमारे प्रयासों को समन्वय से करते हैं. Это ООН, БРИКС, группа 20 и, разумеется, ШОС. UN, BRICS, SCO जरूर इन संगठनों में से शामिल हैं. И сегодня хорошая возможность обсудить основные задачи дальнейшего развития многопланового двустороннего сотрудничества в различных областях. और आज की मुलाकात से हमारे रिश्तों को आगे बढ़ाने पर रास्तों पर बातचीत करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है. Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, Россия и Индия поддерживают десятилетиями особые отношения, дружеские, доверительные. Это фундамент для развития наших отношений в будущем. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, रूस और भारत के बीच बहुत विश्वसनीय रिश्ते बने हुए हैं. इस सिद्धांतों पर वे विकसित हो रहे हैं. И эти отношения носят абсолютно внепартийный характер, поддерживаются подавляющим большинством народов наших стран. और ये किसी से पार्टी या राजनीति पर आधारित नहीं है. लोग, हमारे दो देशों के लोग इस रिश्तों का समर्थन करते हैं. Спасибо. धन्यवाद. आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है और मैं हमेशा अनुभव करता हूं कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है, बहुत सी चीज़ों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है. Ваше превосходительство, дорогой друг, очень рад вас видеть. И каждый раз, когда я с вами встречаюсь, у меня бывают особые чувства и ощущения, и это дает нам возможность регулярно обмениваться мнениями по разным вопросам. हम लगातार संपर्क में रहे हैं. दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है. इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकतापूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं. Мы постоянно находимся в контакте, проводятся регулярные встречи на высоком уровне между двумя сторонами. В декабре текущего года 1,4 миллиарда индийцев с нетерпением вас ждут в Индии для нашего 23-го по счету ежегодного саммита между нашими странами. एक्सेलेंसी, ये हमारे स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है. कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं. हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है. Уважаемый господин президент, это свидетельствует о том, насколько глубоким и всеобъемлющим является наше особо привилегированное и стратегическое партнерство. Даже при самых тяжелых обстоятельствах Индия и Россия всегда шли вперед, плечом к плечу. Наше тесное сотрудничество имеет значение не только для народов наших двух стран, но и для обеспечения глобального мира, стабильности и процветания. एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं. हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं.
हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे, संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। Уважаемый господин президент, по теме продолжающегося конфликта на Украине мы регулярно обмениваемся мнениями. Мы приветствуем все недавно предложенные усилия для установления мира и надеемся, что все стороны будут подходить к этому вопросу конструктивно. Необходимо искать пути для скорейшего завершения конфликта и установления мира. Это и есть призыв всего человечества. Ваше превосходительство, дорогой друг, еще раз большое спасибо. Очень рад вас видеть. Спасибо. धन्यवाद. Дорогие друзья, мы очень рады нашей встрече. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, साथियों, आपसे मिलकर हमें बड़ी खुशी हो रही है। Символично, что она проходит на полях саммита ШОС. ये बहुत प्रतिमात्मक है कि वो SCO शिखर सम्मेलन से इतर हो रही है। Организации, которая позволяет объединять усилия глав государств глобального Юга и Востока. ये एक संगठन है जो ग्लोबल साउथ और ईस्ट के देशों के नेताओं को प्रयास मिलाने को एक मंच प्रदान करता है। Усилия по созданию в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности. यूरेशिया में समान और अविभाज्य सिक्योरिटी ढांचे को बनाने के लिए प्रयासों के लिए एक मंच प्रदान करता है। Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, 21 декабря исполняется 15 лет со дня принятия совместного заявления, в котором отмечен выход наших отношений на уровень особого привилегированного стратегического партнерства. महामहिम प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, 21 दिसंबर को 15 साल पूरे हो जाएंगे जब से एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें हमारे स्पेशल प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप पर किस तरह हम पहुँचे। 15 साल हो गए। И можно уверенно констатировать, что многоплановые российско-индийские связи активно развиваются на этих принципах. और हम ये सच्चाई से बता सकते हैं कि हमारे रिश्ते इस सिद्धांतों पर बढ़ते हैं। Налажено многоуровневое взаимодействие. हमारे बीच बहुत बहुमुखी सहयोग चालू है। Торгово-экономическая кооперация в целом демонстрирует положительную динамику. व्यापार में सकारात्मक गतिशीलता देखने को मिलती है। Развивается туристический обмен. पर्यटकों का आदान-प्रदान विकसित हो रहा है। Мы тесно координируем наши усилия на международной арене. अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम हमारे प्रयासों को समन्वय से करते हैं। Это ООН, БРИКС, Группа 20 и, разумеется, ШОС. UN, BRICS, SCO जरूर इन संगठनों में से शामिल हैं। И сегодня хорошая возможность обсудить основные задачи дальнейшего развития многопланового двустороннего сотрудничества в различных областях. और आज की मुलाकात से हमारे रिश्तों को आगे बढ़ाने पर रास्तों पर बातचीत करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है। Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, Россия и Индия поддерживают десятилетиями особые отношения, дружеские, доверительные. Это фундамент для развития наших отношений в будущем. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, रूस और भारत के बीच बहुत विश्वसनीय रिश्ते बने हुए हैं। इस सिद्धांतों पर वे विकसित हो रहे हैं। И эти отношения носят абсолютно внепартийный характер, поддерживаются подавляющим большинством народов наших стран. और ये किसी से पार्टी या राजनीति पर आधारित नहीं है। लोग, हमारे दो देशों के लोग इस रिश्तों का समर्थन करते हैं। Спасибо. धन्यवाद। आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है और मैं हमेशा अनुभव करता हूँ कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है, बहुत सी चीज़ों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है। Ваше превосходительство, дорогой друг, очень рад вас видеть. И каждый раз, когда я с вами встречаюсь, у меня бывают особые чувства и ощущения, и это дает нам возможность регулярно обмениваться мнениями по разным вопросам. हम लगातार संपर्क में रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है।
इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकतापूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। Мы постоянно находимся в контакте, проводятся регулярные встречи на высоком уровне между двумя сторонами. В декабре текущего года 1,4 миллиарда индийцев с нетерпением вас ждут в Индии для нашего 23-го по счету ежегодного саммита между нашими странами. एक्सेलेंसी, ये हमारे स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। Уважаемый господин президент, это свидетельствует о том, насколько глубоким и всеобъемлющим является наше особо привилегированное и стратегическое партнерство. Даже при самых тяжелых обстоятельствах Индия и Россия всегда шли вперед, плечом к плечу. Наше тесное сотрудничество имеет значение не только для народов наших двух стран, но и для обеспечения глобального мира, стабильности и процветания. एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे। संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। Уважаемый господин президент, по теме продолжающегося конфликта на Украине мы регулярно обмениваемся мнениями. Мы приветствуем все недавно предложенные усилия для установления мира и надеемся, что все стороны будут подходить к этому вопросу конструктивно. Необходимо искать пути для скорейшего завершения конфликта и установления мира. Это и есть призыв всего человечества. Ваше превосходительство, дорогой друг, еще раз большое спасибо. Очень рад вас видеть. Спасибо. धन्यवाद. Дорогие друзья, мы очень рады нашей встрече. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, साथियों, आपसे मिलकर हमें बड़ी खुशी हो रही है। Символично, что она проходит на полях саммита ШОС. ये बहुत प्रतिमात्मक है कि वो SCO शिखर सम्मेलन से इतर हो रही है। Организации, которая позволяет объединять усилия глав государств глобального Юга и Востока. ये एक संगठन है जो ग्लोबल साउथ और ईस्ट के देशों के नेताओं को प्रयास मिलाने को एक मंच प्रदान करता है। Усилия по созданию в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности. यूरेशिया में समान और अविभाज्य सिक्योरिटी ढांचे को बनाने के लिए प्रयासों के लिए एक मंच प्रदान करता है। Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, 21 декабря исполняется 15 лет со дня принятия совместного заявления, в котором отмечен выход наших отношений на уровень особого привилегированного стратегического партнерства. महामहिम प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, 21 दिसंबर को 15 साल पूरे हो जाएंगे जब से एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें हमारे स्पेशल प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप पर किस तरह हम पहुंचे। 15 साल हो गए। И можно уверенно констатировать, что многоплановые российско-индийские связи активно развиваются на этих принципах. और हम ये सच्चाई से बता सकते हैं कि हमारे रिश्ते इस सिद्धांतों पर बढ़ते हैं। Налажено многоуровневое взаимодействие. हमारे बीच बहुत बहुमुखी सहयोग चालू है। Торгово-экономическая кооперация в целом демонстрирует положительную динамику. व्यापार में सकारात्मक गतिशीलता देखने को मिलती है। Развивается туристический обмен. पर्यटकों का आदान-प्रदान विकसित हो रहा है। Мы тесно координируем наши усилия на международной арене. अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम हमारे प्रयासों को समन्वय से करते हैं। Это ООН, БРИКС, Группа 20 и, разумеется, ШОС. UN, BRICS, SCO जरूर इन संगठनों में से शामिल हैं। И сегодня хорошая возможность
обсудить основные задачи дальнейшего развития многопланового двустороннего сотрудничества в различных областях. और आज की मुलाकात से हमारे रिश्तों को आगे बढ़ाने पर, रास्तों पर बातचीत करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है. Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, Россия и Индия поддерживают десятилетиями особые отношения, дружеские, доверительные. Это фундамент для развития наших отношений в будущем. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, रूस और भारत के बीच बहुत विश्वसनीय रिश्ते बने हुए हैं. इस सिद्धांतों पर वे विकसित हो रहे हैं. И эти отношения носят абсолютно внепартийный характер, поддерживаются подавляющим большинством народов наших стран. और ये किसी से पार्टी या राजनीति पर आधारित नहीं है. लोग, हमारे दो देशों के लोग इस रिश्तों का समर्थन करते हैं. Спасибо. धन्यवाद. आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है और मैं हमेशा अनुभव करता हूं कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है, बहुत सी चीज़ों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है. Ваше превосходительство, дорогой друг, очень рад вас видеть. И каждый раз, когда я с вами встречаюсь, у меня бывают особые чувства и ощущения, и это дает нам возможность регулярно обмениваться мнениями по разным вопросам. हम लगातार संपर्क में रहे हैं. दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है. इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकतापूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं. Мы постоянно находимся в контакте, проводятся регулярные встречи на высоком уровне между двумя сторонами. В декабре текущего года 1,4 миллиарда индийцев с нетерпением вас ждут в Индии для нашего 23-го по счету ежегодного саммита между нашими странами. एक्सेलेंसी, ये हमारे स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है. कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं. हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है. Уважаемый господин президент, это свидетельствует о том, насколько глубоким и всеобъемлющим является наше особо привилегированное и стратегическое партнерство. Даже при самых тяжелых обстоятельствах Индия и Россия всегда шли вперед, плечом к плечу. Наше тесное сотрудничество имеет значение не только для народов наших двух стран, но и для обеспечения глобального мира, стабильности и процветания. एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं. हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं. हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे. संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा. ये पूरी मानवता की पुकार है. एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ. Уважаемый господин президент, по теме продолжающегося конфликта на Украине мы регулярно обмениваемся мнениями. Мы приветствуем все недавно предложенные усилия для установления мира и надеемся, что все стороны будут подходить к этому вопросу конструктивно. Необходимо искать пути для скорейшего завершения конфликта и установления мира. Это и есть призыв всего человечества. Ваше превосходительство, дорогой друг, еще раз большое спасибо. Очень рад вас видеть. Спасибо. धन्यवाद. Дорогие друзья, мы очень рады нашей встрече. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, साथियों, आपसे मिलकर हमें बड़ी खुशी हो रही है. Символично, что она проходит на полях саммита ШОС. ये बहुत प्रतिमात्मक है कि वो SCO शिखर सम्मेलन से इतर हो रही है. Организации, которая позволяет объединять усилия глав государств глобального Юга и Востока. ये एक संगठन है जो ग्लोबल साउथ और ईस्ट के देशों के नेताओं को प्रयास मिलाने को एक मंच प्रदान करता है.
усилия по созданию в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности. यूरेशिया में समान और अविभाज्य सिक्योरिटी ढांचे को बनाने के लिए प्रयासों के लिए एक मंच प्रदान करता है. Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, 21 декабря исполняется 15 лет со дня принятия совместного заявления, в котором отмечен выход наших отношений на уровень особого привилегированного стратегического партнерства. महामहिम प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, 21 दिसंबर को 15 साल पूरे हो जाएंगे जब से एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें हमारे स्पेशल प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप पर किस तरह हम पहुंचे. 15 साल हो गए. И можно уверенно констатировать, что многоплановые российско-индийские связи активно развиваются на этих принципах. और हम ये सच्चाई से बता सकते हैं कि हमारे रिश्ते इस सिद्धांतों पर बढ़ते हैं. Налажено многоуровневое взаимодействие. हमारे बीच बहुत बहुमुखी सहयोग चालू है. Торгово-экономическая кооперация в целом демонстрирует положительную динамику. व्यापार में सकारात्मक गतिशीलता देखने को मिलती है. Развивается туристический обмен. पर्यटकों का आदान-प्रदान विकसित हो रहा है. Мы тесно координируем наши усилия на международной арене. अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम हमारे प्रयासों को समन्वय से करते हैं. Это ООН, БРИКС, группа 20 и, разумеется, ШОС. UN, BRICS, SCO जरूर इन संगठनों में से शामिल हैं. И сегодня хорошая возможность обсудить основные задачи дальнейшего развития многопланового двустороннего сотрудничества в различных областях. और आज की मुलाकात से हमारे रिश्तों को आगे बढ़ाने पर रास्तों पर बातचीत करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है. Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, Россия и Индия поддерживают десятилетиями особые отношения, дружеские, доверительные. Это фундамент для развития наших отношений в будущем. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, रूस और भारत के बीच बहुत विश्वसनीय रिश्ते बने हुए हैं. इस सिद्धांतों पर वे विकसित हो रहे हैं. И эти отношения носят абсолютно внепартийный характер, поддерживаются подавляющим большинством народов наших стран. और ये किसी से पार्टी या राजनीति पर आधारित नहीं है. लोग, हमारे दो देशों के लोग इस रिश्तों का समर्थन करते हैं. Спасибо. धन्यवाद. आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है और मैं हमेशा अनुभव करता हूं कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है, बहुत सी चीज़ों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है. Ваше превосходительство, дорогой друг, очень рад вас видеть. И каждый раз, когда я с вами встречаюсь, у меня бывают особые чувства и ощущения, и это дает нам возможность регулярно обмениваться мнениями по разным вопросам. हम लगातार संपर्क में रहे हैं. दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है. इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकतापूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं. Мы постоянно находимся в контакте, проводятся регулярные встречи на высоком уровне между двумя сторонами. В декабре текущего года 1,4 миллиарда индийцев с нетерпением вас ждут в Индии для нашего 23-го по счету ежегодного саммита между нашими странами. एक्सेलेंसी, ये हमारे स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है. कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं. हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है. Уважаемый господин президент, это свидетельствует о том, насколько глубоким и всеобъемлющим является наше особо привилегированное и стратегическое партнерство. Даже при самых тяжелых обстоятельствах Индия и Россия всегда шли вперед, плечом к плечу. Наше тесное сотрудничество имеет значение не только для народов наших двух стран, но и для обеспечения глобального мира, стабильности и процветания. एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं. हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं.
हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे, संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। Уважаемый господин президент, по теме продолжающегося конфликта на Украине мы регулярно обмениваемся мнениями. Мы приветствуем все недавно предложенные усилия для установления мира и надеемся, что все стороны будут подходить к этому вопросу конструктивно. Необходимо искать пути для скорейшего завершения конфликта и установления мира. Это и есть призыв всего человечества. Ваше превосходительство, дорогой друг, еще раз большое спасибо. Очень рад вас видеть. Спасибо. धन्यवाद. Дорогие друзья, мы очень рады нашей встрече. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, साथियों, आपसे मिलकर हमें बड़ी खुशी हो रही है। Символично, что она проходит на полях саммита ШОС. ये बहुत प्रतिमात्मक है कि वो SCO शिखर सम्मेलन से इतर हो रही है। Организации, которая позволяет объединять усилия глав государств глобального Юга и Востока. ये एक संगठन है जो ग्लोबल साउथ और ईस्ट के देशों के नेताओं को प्रयास मिलाने को एक मंच प्रदान करता है। Усилия по созданию в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности. यूरेशिया में समान और अविभाज्य सिक्योरिटी ढांचे को बनाने के लिए प्रयासों के लिए एक मंच प्रदान करता है। Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, 21 декабря исполняется 15 лет со дня принятия совместного заявления, в котором отмечен выход наших отношений на уровень особого привилегированного стратегического партнерства. महामहिम प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, 21 दिसंबर को 15 साल पूरे हो जाएंगे जब से एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें हमारे स्पेशल प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप पर किस तरह हम पहुंचे। 15 साल हो गए। И можно уверенно констатировать, что многоплановые российско-индийские связи активно развиваются на этих принципах. और हम ये सच्चाई से बता सकते हैं कि हमारे रिश्ते इस सिद्धांतों पर बढ़ते हैं। Налажено многоуровневое взаимодействие. हमारे बीच बहुत बहुमुखी सहयोग चालू है। Торгово-экономическая кооперация в целом демонстрирует положительную динамику. व्यापार में सकारात्मक गतिशीलता देखने को मिलती है। Развивается туристический обмен. पर्यटकों का आदान-प्रदान विकसित हो रहा है। Мы тесно координируем наши усилия на международной арене. अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम हमारे प्रयासों को समन्वय से करते हैं। Это ООН, БРИКС, Группа 20 и, разумеется, ШОС. UN, BRICS, SCO जरूर इन संगठनों में से शामिल हैं। И сегодня хорошая возможность обсудить основные задачи дальнейшего развития многопланового двустороннего сотрудничества в различных областях. और आज की मुलाकात से हमारे रिश्तों को आगे बढ़ाने पर रास्तों पर बातचीत करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है। Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, Россия и Индия поддерживают десятилетиями особые отношения, дружеские, доверительные. Это фундамент для развития наших отношений в будущем. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, रूस और भारत के बीच बहुत विश्वसनीय रिश्ते बने हुए हैं। इस सिद्धांतों पर वे विकसित हो रहे हैं। И эти отношения носят абсолютно внепартийный характер, поддерживаются подавляющим большинством народов наших стран. और ये किसी से पार्टी या राजनीति पर आधारित नहीं है। लोग, हमारे दो देशों के लोग इस रिश्तों का समर्थन करते हैं। Спасибо. धन्यवाद। आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है और मैं हमेशा अनुभव करता हूँ कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है, बहुत सी चीज़ों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है। Ваше превосходительство, дорогой друг, очень рад вас видеть. И каждый раз, когда я с вами встречаюсь, у меня бывают особые чувства и ощущения, и это дает нам возможность регулярно обмениваться мнениями по разным вопросам. हम लगातार संपर्क में रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है।
इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकता पूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। Мы постоянно находимся в контакте, проводятся регулярные встречи на высоком уровне между двумя сторонами. В декабре текущего года 1,4 миллиарда индийцев с нетерпением вас ждут в Индии для нашего 23-го по счету ежегодного саммита между нашими странами. एक्सेलेंसी, ये हमारे स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। Уважаемый господин президент, это свидетельствует о том, насколько глубоким и всеобъемлющим является наше особо привилегированное и стратегическое партнерство. Даже при самых тяжелых обстоятельствах Индия и Россия всегда шли вперед, плечом к плечу. Наше тесное сотрудничество имеет значение не только для народов наших двух стран, но и для обеспечения глобального мира, стабильности и процветания. एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे, संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। Уважаемый господин президент, по теме продолжающегося конфликта на Украине мы регулярно обмениваемся мнениями. Мы приветствуем все недавно предложенные усилия для установления мира и надеемся, что все стороны будут подходить к этому вопросу конструктивно. Необходимо искать пути для скорейшего завершения конфликта и установления мира. Это и есть призыв всего человечества. Ваше превосходительство, дорогой друг, еще раз большое спасибо. Очень рад вас видеть. Спасибо. धन्यवाद. Дорогие друзья, мы очень рады нашей встрече. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, साथियों, आपसे मिलकर हमें बड़ी खुशी हो रही है। Символично, что она проходит на полях саммита ШОС. ये बहुत प्रतिमात्मक है कि वो SCO शिखर सम्मेलन से इतर हो रही है। Организации, которая позволяет объединять усилия глав государств глобального Юга и Востока. ये एक संगठन है जो ग्लोबल साउथ और ईस्ट के देशों के नेताओं को प्रयास मिलाने को एक मंच प्रदान करता है। Усилия по созданию в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности. यूरेशिया में समान और अविभाज्य सिक्योरिटी ढांचे को बनाने के लिए प्रयासों के लिए एक मंच प्रदान करता है। Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, 21 декабря исполняется 15 лет со дня принятия совместного заявления, в котором отмечен выход наших отношений на уровень особого привилегированного стратегического партнерства. महामहिम प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, 21 दिसंबर को 15 साल पूरे हो जाएंगे जब से एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें हमारे स्पेशल प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप पर किस तरह हम पहुंचे। 15 साल हो गए। И можно уверенно констатировать, что многоплановые российско-индийские связи активно развиваются на этих принципах. और हम ये सच्चाई से बता सकते हैं कि हमारे रिश्ते इस सिद्धांतों पर बढ़ते हैं। Налажено многоуровневое взаимодействие. हमारे बीच बहुत बहुमुखी सहयोग चालू है। Торгово-экономическая кооперация в целом демонстрирует положительную динамику. व्यापार में सकारात्मक गतिशीलता देखने को मिलती है। Развивается туристический обмен. पर्यटकों का आदान-प्रदान विकसित हो रहा है। Мы тесно координируем наши усилия на международной арене. अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम हमारे प्रयासों को समन्वय से करते हैं। Это ООН, БРИКС, группа 20 и, разумеется, ШОС. UN, BRICS, SCO जरूर इन संगठनों में से शामिल हैं। И сегодня хорошая возможность
обсудить основные задачи дальнейшего развития многопланового двустороннего сотрудничества в различных областях. और आज की मुलाकात से हमारे रिश्तों को आगे बढ़ाने पर, रास्तों पर बातचीत करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है. Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, Россия и Индия поддерживают десятилетиями особые отношения, дружеские, доверительные. Это фундамент для развития наших отношений в будущем. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, रूस और भारत के बीच बहुत विश्वसनीय रिश्ते बने हुए हैं. इस सिद्धांतों पर वे विकसित हो रहे हैं. И эти отношения носят абсолютно внепартийный характер, поддерживаются подавляющим большинством народов наших стран. और ये किसी से पार्टी या राजनीति पर आधारित नहीं है. लोग, हमारे दो देशों के लोग इस रिश्तों का समर्थन करते हैं. Спасибо. धन्यवाद. आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है और मैं हमेशा अनुभव करता हूं कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है, बहुत सी चीज़ों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है. Ваше превосходительство, дорогой друг, очень рад вас видеть. И каждый раз, когда я с вами встречаюсь, у меня бывают особые чувства и ощущения, и это дает нам возможность регулярно обмениваться мнениями по разным вопросам. हम लगातार संपर्क में रहे हैं. दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है. इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकतापूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं. Мы постоянно находимся в контакте, проводятся регулярные встречи на высоком уровне между двумя сторонами. В декабре текущего года 1,4 миллиарда индийцев с нетерпением вас ждут в Индии для нашего 23-го по счету ежегодного саммита между нашими странами. एक्सेलेंसी, ये हमारे स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है. कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं. हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है. Уважаемый господин президент, это свидетельствует о том, насколько глубоким и всеобъемлющим является наше особо привилегированное и стратегическое партнерство. Даже при самых тяжелых обстоятельствах Индия и Россия всегда шли вперед, плечом к плечу. Наше тесное сотрудничество имеет значение не только для народов наших двух стран, но и для обеспечения глобального мира, стабильности и процветания. एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं. हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं. हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे. संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा. ये पूरी मानवता की पुकार है. एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ. Уважаемый господин президент, по теме продолжающегося конфликта на Украине мы регулярно обмениваемся мнениями. Мы приветствуем все недавно предложенные усилия для установления мира и надеемся, что все стороны будут подходить к этому вопросу конструктивно. Необходимо искать пути для скорейшего завершения конфликта и установления мира. Это и есть призыв всего человечества. Ваше превосходительство, дорогой друг, еще раз большое спасибо. Очень рад вас видеть. Спасибо. धन्यवाद. Дорогие друзья, мы очень рады нашей встрече. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, साथियों, आपसे मिलकर हमें बड़ी खुशी हो रही है. Символично, что она проходит на полях саммита ШОС. ये बहुत प्रतिमात्मक है कि वो SCO शिखर सम्मेलन से इतर हो रही है. Организации, которая позволяет объединять усилия глав государств глобального Юга и Востока. ये एक संगठन है जो ग्लोबल साउथ और ईस्ट के देशों के नेताओं को प्रयास मिलाने को एक मंच प्रदान करता है.
усилия по созданию в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности. यूरेशिया में समान और अविभाज्य सिक्योरिटी ढांचे को बनाने के लिए प्रयासों के लिए एक मंच प्रदान करता है. Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, 21 декабря исполняется 15 лет со дня принятия совместного заявления, в котором отмечен выход наших отношений на уровень особого привилегированного стратегического партнерства. महामहिम प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, 21 दिसंबर को 15 साल पूरे हो जाएंगे जब से एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें हमारे स्पेशल प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप पर किस तरह हम पहुंचे. 15 साल हो गए. И можно уверенно констатировать, что многоплановые российско-индийские связи активно развиваются на этих принципах. और हम ये सच्चाई से बता सकते हैं कि हमारे रिश्ते इस सिद्धांतों पर बढ़ते हैं. Налажено многоуровневое взаимодействие. हमारे बीच बहुत बहुमुखी सहयोग चालू है. Торгово-экономическая кооперация в целом демонстрирует положительную динамику. व्यापार में सकारात्मक गतिशीलता देखने को मिलती है. Развивается туристический обмен. पर्यटकों का आदान-प्रदान विकसित हो रहा है. Мы тесно координируем наши усилия на международной арене. अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम हमारे प्रयासों को समन्वय से करते हैं. Это ООН, БРИКС, группа 20 и, разумеется, ШОС. UN, BRICS, SCO जरूर इन संगठनों में से शामिल हैं. И сегодня хорошая возможность обсудить основные задачи дальнейшего развития многопланового двустороннего сотрудничества в различных областях. और आज की मुलाकात से हमारे रिश्तों को आगे बढ़ाने पर रास्तों पर बातचीत करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है. Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, Россия и Индия поддерживают десятилетиями особые отношения, дружеские, доверительные. Это фундамент для развития наших отношений в будущем. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, रूस और भारत के बीच बहुत विश्वसनीय रिश्ते बने हुए हैं. इस सिद्धांतों पर वे विकसित हो रहे हैं. И эти отношения носят абсолютно внепартийный характер, поддерживаются подавляющим большинством народов наших стран. और ये किसी से पार्टी या राजनीति पर आधारित नहीं है. लोग, हमारे दो देशों के लोग इस रिश्तों का समर्थन करते हैं. Спасибо. धन्यवाद. आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है और मैं हमेशा अनुभव करता हूं कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है, बहुत सी चीज़ों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है. Ваше превосходительство, дорогой друг, очень рад вас видеть. И каждый раз, когда я с вами встречаюсь, у меня бывают особые чувства и ощущения, и это дает нам возможность регулярно обмениваться мнениями по разным вопросам. हम लगातार संपर्क में रहे हैं. दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है. इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकतापूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं. Мы постоянно находимся в контакте, проводятся регулярные встречи на высоком уровне между двумя сторонами. В декабре текущего года 1,4 миллиарда индийцев с нетерпением вас ждут в Индии для нашего 23-го по счету ежегодного саммита между нашими странами. एक्सेलेंसी, ये हमारे स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है. कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं. हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है. Уважаемый господин президент, это свидетельствует о том, насколько глубоким и всеобъемлющим является наше особо привилегированное и стратегическое партнерство. Даже при самых тяжелых обстоятельствах Индия и Россия всегда шли вперед, плечом к плечу. Наше тесное сотрудничество имеет значение не только для народов наших двух стран, но и для обеспечения глобального мира, стабильности и процветания. एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं. हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं.
हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे, संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। Уважаемый господин президент, по теме продолжающегося конфликта на Украине мы регулярно обмениваемся мнениями. Мы приветствуем все недавно предложенные усилия для установления мира и надеемся, что все стороны будут подходить к этому вопросу конструктивно. Необходимо искать пути для скорейшего завершения конфликта и установления мира. Это и есть призыв всего человечества. Ваше превосходительство, дорогой друг, еще раз большое спасибо. Очень рад вас видеть. Спасибо. धन्यवाद. Дорогие друзья, мы очень рады нашей встрече. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, साथियों, आपसे मिलकर हमें बड़ी खुशी हो रही है। Символично, что она проходит на полях саммита ШОС. ये बहुत प्रतिमात्मक है कि वो SCO शिखर सम्मेलन से इतर हो रही है। Организации, которая позволяет объединять усилия глав государств глобального Юга и Востока. ये एक संगठन है जो ग्लोबल साउथ और ईस्ट के देशों के नेताओं को प्रयास मिलाने को एक मंच प्रदान करता है। Усилия по созданию в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности. यूरेशिया में समान और अविभाज्य सिक्योरिटी ढांचे को बनाने के लिए प्रयासों के लिए एक मंच प्रदान करता है। Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, 21 декабря исполняется 15 лет со дня принятия совместного заявления, в котором отмечен выход наших отношений на уровень особого привилегированного стратегического партнерства. महामहिम प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, 21 दिसंबर को 15 साल पूरे हो जाएंगे जब से एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें हमारे स्पेशल प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप पर किस तरह हम पहुंचे। 15 साल हो गए। И можно уверенно констатировать, что многоплановые российско-индийские связи активно развиваются на этих принципах. और हम ये सच्चाई से बता सकते हैं कि हमारे रिश्ते इस सिद्धांतों पर बढ़ते हैं। Налажено многоуровневое взаимодействие. हमारे बीच बहुत बहुमुखी सहयोग चालू है। Торгово-экономическая кооперация в целом демонстрирует положительную динамику. व्यापार में सकारात्मक गतिशीलता देखने को मिलती है। Развивается туристический обмен. पर्यटकों का आदान-प्रदान विकसित हो रहा है। Мы тесно координируем наши усилия на международной арене. अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम हमारे प्रयासों को समन्वय से करते हैं। Это ООН, БРИКС, Группа 20 и, разумеется, ШОС. UN, BRICS, SCO जरूर इन संगठनों में से शामिल हैं। И сегодня хорошая возможность обсудить основные задачи дальнейшего развития многопланового двустороннего сотрудничества в различных областях. और आज की मुलाकात से हमारे रिश्तों को आगे बढ़ाने पर रास्तों पर बातचीत करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है। Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, Россия и Индия поддерживают десятилетиями особые отношения, дружеские, доверительные. Это фундамент для развития наших отношений в будущем. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, रूस और भारत के बीच बहुत विश्वसनीय रिश्ते बने हुए हैं। इस सिद्धांतों पर वे विकसित हो रहे हैं। И эти отношения носят абсолютно внепартийный характер, поддерживаются подавляющим большинством народов наших стран. और ये किसी से पार्टी या राजनीति पर आधारित नहीं है। लोग, हमारे दो देशों के लोग इस रिश्तों का समर्थन करते हैं। Спасибо. धन्यवाद। आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है और मैं हमेशा अनुभव करता हूँ कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है, बहुत सी चीज़ों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है। Ваше превосходительство, дорогой друг, очень рад вас видеть. И каждый раз, когда я с вами встречаюсь, у меня бывают особые чувства и ощущения, и это дает нам возможность регулярно обмениваться мнениями по разным вопросам. हम लगातार संपर्क में रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है।
इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकतापूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। Мы постоянно находимся в контакте, проводятся регулярные встречи на высоком уровне между двумя сторонами. В декабре текущего года 1,4 миллиарда индийцев с нетерпением вас ждут в Индии для нашего 23-го по счету ежегодного саммита между нашими странами. एक्सेलेंसी, ये हमारे स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। Уважаемый господин президент, это свидетельствует о том, насколько глубоким и всеобъемлющим является наше особо привилегированное и стратегическое партнерство. Даже при самых тяжелых обстоятельствах Индия и Россия всегда шли вперед, плечом к плечу. Наше тесное сотрудничество имеет значение не только для народов наших двух стран, но и для обеспечения глобального мира, стабильности и процветания. एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे। संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। Уважаемый господин президент, по теме продолжающегося конфликта на Украине мы регулярно обмениваемся мнениями. Мы приветствуем все недавно предложенные усилия для установления мира и надеемся, что все стороны будут подходить к этому вопросу конструктивно. Необходимо искать пути для скорейшего завершения конфликта и установления мира. Это и есть призыв всего человечества. Ваше превосходительство, дорогой друг, еще раз большое спасибо. Очень рад вас видеть. Спасибо. धन्यवाद. Дорогие друзья, мы очень рады нашей встрече. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, साथियों, आपसे मिलकर हमें बड़ी खुशी हो रही है। Символично, что она проходит на полях саммита ШОС. ये बहुत प्रतिमात्मक है कि वो SCO शिखर सम्मेलन से इतर हो रही है। Организации, которая позволяет объединять усилия глав государств глобального Юга и Востока. ये एक संगठन है जो ग्लोबल साउथ और ईस्ट के देशों के नेताओं को प्रयास मिलाने को एक मंच प्रदान करता है। Усилия по созданию в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности. यूरेशिया में समान और अविभाज्य सिक्योरिटी ढांचे को बनाने के लिए प्रयासों के लिए एक मंच प्रदान करता है। Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, 21 декабря исполняется 15 лет со дня принятия совместного заявления, в котором отмечен выход наших отношений на уровень особого привилегированного стратегического партнерства. महामहिम प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, 21 दिसंबर को 15 साल पूरे हो जाएंगे जब से एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें हमारे स्पेशल प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप पर किस तरह हम पहुंचे। 15 साल हो गए। И можно уверенно констатировать, что многоплановые российско-индийские связи активно развиваются на этих принципах. और हम ये सच्चाई से बता सकते हैं कि हमारे रिश्ते इस सिद्धांतों पर बढ़ते हैं। Налажено многоуровневое взаимодействие. हमारे बीच बहुत बहुमुखी सहयोग चालू है। Торгово-экономическая кооперация в целом демонстрирует положительную динамику. व्यापार में सकारात्मक गतिशीलता देखने को मिलती है। Развивается туристический обмен. पर्यटकों का आदान-प्रदान विकसित हो रहा है। Мы тесно координируем наши усилия на международной арене. अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम हमारे प्रयासों को समन्वय से करते हैं। Это ООН, БРИКС, группа 20 и, разумеется, ШОС. UN, BRICS, SCO जरूर इन संगठनों में से शामिल हैं। И сегодня хорошая возможность
обсудить основные задачи дальнейшего развития многопланового двустороннего сотрудничества в различных областях. और आज की मुलाकात से हमारे रिश्तों को आगे बढ़ाने पर, रास्तों पर बातचीत करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है. Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, Россия и Индия поддерживают десятилетиями особые отношения, дружеские, доверительные. Это фундамент для развития наших отношений в будущем. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, रूस और भारत के बीच बहुत विश्वसनीय रिश्ते बने हुए हैं. इस सिद्धांतों पर वे विकसित हो रहे हैं. И эти отношения носят абсолютно внепартийный характер, поддерживаются подавляющим большинством народов наших стран. और ये किसी से पार्टी या राजनीति पर आधारित नहीं है. लोग, हमारे दो देशों के लोग इस रिश्तों का समर्थन करते हैं. Спасибо. धन्यवाद. आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है और मैं हमेशा अनुभव करता हूं कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है, बहुत सी चीज़ों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है. Ваше превосходительство, дорогой друг, очень рад вас видеть. И каждый раз, когда я с вами встречаюсь, у меня бывают особые чувства и ощущения, и это дает нам возможность регулярно обмениваться мнениями по разным вопросам. हम लगातार संपर्क में रहे हैं. दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है. इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकतापूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं. Мы постоянно находимся в контакте, проводятся регулярные встречи на высоком уровне между двумя сторонами. В декабре текущего года 1,4 миллиарда индийцев с нетерпением вас ждут в Индии для нашего 23-го по счету ежегодного саммита между нашими странами. एक्सेलेंसी, ये हमारे स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है. कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं. हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है. Уважаемый господин президент, это свидетельствует о том, насколько глубоким и всеобъемлющим является наше особо привилегированное и стратегическое партнерство. Даже при самых тяжелых обстоятельствах Индия и Россия всегда шли вперед, плечом к плечу. Наше тесное сотрудничество имеет значение не только для народов наших двух стран, но и для обеспечения глобального мира, стабильности и процветания. एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं. हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं. हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे. संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा. ये पूरी मानवता की पुकार है. एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ. Уважаемый господин президент, по теме продолжающегося конфликта на Украине мы регулярно обмениваемся мнениями. Мы приветствуем все недавно предложенные усилия для установления мира и надеемся, что все стороны будут подходить к этому вопросу конструктивно. Необходимо искать пути для скорейшего завершения конфликта и установления мира. Это и есть призыв всего человечества. Ваше превосходительство, дорогой друг, еще раз большое спасибо. Очень рад вас видеть. Спасибо. धन्यवाद. Дорогие друзья, мы очень рады нашей встрече. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, साथियों, आपसे मिलकर हमें बड़ी खुशी हो रही है. Символично, что она проходит на полях саммита ШОС. ये बहुत प्रतिमात्मक है कि वो SCO शिखर सम्मेलन से इतर हो रही है. Организации, которая позволяет объединять усилия глав государств глобального Юга и Востока. ये एक संगठन है जो ग्लोबल साउथ और ईस्ट के देशों के नेताओं को प्रयास मिलाने को एक मंच प्रदान करता है.
усилия по созданию в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности. यूरेशिया में समान और अविभाज्य सिक्योरिटी ढांचे को बनाने के लिए प्रयासों के लिए एक मंच प्रदान करता है. Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, 21 декабря исполняется 15 лет со дня принятия совместного заявления, в котором отмечен выход наших отношений на уровень особого привилегированного стратегического партнерства. महामहिम प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, 21 दिसंबर को 15 साल पूरे हो जाएंगे जब से एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें हमारे स्पेशल प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप पर किस तरह हम पहुंचे. 15 साल हो गए. И можно уверенно констатировать, что многоплановые российско-индийские связи активно развиваются на этих принципах. और हम ये सच्चाई से बता सकते हैं कि हमारे रिश्ते इस सिद्धांतों पर बढ़ते हैं. Налажено многоуровневое взаимодействие. हमारे बीच बहुत बहुमुखी सहयोग चालू है. Торгово-экономическая кооперация в целом демонстрирует положительную динамику. व्यापार में सकारात्मक गतिशीलता देखने को मिलती है. Развивается туристический обмен. पर्यटकों का आदान-प्रदान विकसित हो रहा है. Мы тесно координируем наши усилия на международной арене. अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम हमारे प्रयासों को समन्वय से करते हैं. Это ООН, БРИКС, группа 20 и, разумеется, ШОС. UN, BRICS, SCO जरूर इन संगठनों में से शामिल हैं. И сегодня хорошая возможность обсудить основные задачи дальнейшего развития многопланового двустороннего сотрудничества в различных областях. और आज की मुलाकात से हमारे रिश्तों को आगे बढ़ाने पर रास्तों पर बातचीत करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है. Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, Россия и Индия поддерживают десятилетиями особые отношения, дружеские, доверительные. Это фундамент для развития наших отношений в будущем. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, रूस और भारत के बीच बहुत विश्वसनीय रिश्ते बने हुए हैं. इस सिद्धांतों पर वे विकसित हो रहे हैं. И эти отношения носят абсолютно внепартийный характер, поддерживаются подавляющим большинством народов наших стран. और ये किसी से पार्टी या राजनीति पर आधारित नहीं है. लोग, हमारे दो देशों के लोग इस रिश्तों का समर्थन करते हैं. Спасибо. धन्यवाद. आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है और मैं हमेशा अनुभव करता हूं कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है, बहुत सी चीज़ों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है. Ваше превосходительство, дорогой друг, очень рад вас видеть. И каждый раз, когда я с вами встречаюсь, у меня бывают особые чувства и ощущения, и это дает нам возможность регулярно обмениваться мнениями по разным вопросам. हम लगातार संपर्क में रहे हैं. दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है. इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकतापूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं. Мы постоянно находимся в контакте, проводятся регулярные встречи на высоком уровне между двумя сторонами. В декабре текущего года 1,4 миллиарда индийцев с нетерпением вас ждут в Индии для нашего 23-го по счету ежегодного саммита между нашими странами. एक्सेलेंसी, ये हमारे स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है. कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं. हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है. Уважаемый господин президент, это свидетельствует о том, насколько глубоким и всеобъемлющим является наше особо привилегированное и стратегическое партнерство. Даже при самых тяжелых обстоятельствах Индия и Россия всегда шли вперед, плечом к плечу. Наше тесное сотрудничество имеет значение не только для народов наших двух стран, но и для обеспечения глобального мира, стабильности и процветания. एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं. हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं.
हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे, संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। Уважаемый господин президент, по теме продолжающегося конфликта на Украине мы регулярно обмениваемся мнениями. Мы приветствуем все недавно предложенные усилия для установления мира и надеемся, что все стороны будут подходить к этому вопросу конструктивно. Необходимо искать пути для скорейшего завершения конфликта и установления мира. Это и есть призыв всего человечества. Ваше превосходительство, дорогой друг, еще раз большое спасибо. Очень рад вас видеть. Спасибо. धन्यवाद. Дорогие друзья, мы очень рады нашей встрече. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, साथियों, आपसे मिलकर हमें बड़ी खुशी हो रही है। Символично, что она проходит на полях саммита ШОС. ये बहुत प्रतिमात्मक है कि वो SCO शिखर सम्मेलन से इतर हो रही है। Организации, которая позволяет объединять усилия глав государств глобального Юга и Востока. ये एक संगठन है जो ग्लोबल साउथ और ईस्ट के देशों के नेताओं को प्रयास मिलाने को एक मंच प्रदान करता है। Усилия по созданию в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности. यूरेशिया में समान और अविभाज्य सिक्योरिटी ढांचे को बनाने के लिए प्रयासों के लिए एक मंच प्रदान करता है। Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, 21 декабря исполняется 15 лет со дня принятия совместного заявления, в котором отмечен выход наших отношений на уровень особого привилегированного стратегического партнерства. महामहिम प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, 21 दिसंबर को 15 साल पूरे हो जाएंगे जब से एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें हमारे स्पेशल प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप पर किस तरह हम पहुँचे। 15 साल हो गए। И можно уверенно констатировать, что многоплановые российско-индийские связи активно развиваются на этих принципах. और हम ये सच्चाई से बता सकते हैं कि हमारे रिश्ते इस सिद्धांतों पर बढ़ते हैं। Налажено многоуровневое взаимодействие. हमारे बीच बहुत बहुमुखी सहयोग चालू है। Торгово-экономическая кооперация в целом демонстрирует положительную динамику. व्यापार में सकारात्मक गतिशीलता देखने को मिलती है। Развивается туристический обмен. पर्यटकों का आदान-प्रदान विकसित हो रहा है। Мы тесно координируем наши усилия на международной арене. अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम हमारे प्रयासों को समन्वय से करते हैं। Это ООН, БРИКС, Группа 20 и, разумеется, ШОС. UN, BRICS, SCO जरूर इन संगठनों में से शामिल हैं। И сегодня хорошая возможность обсудить основные задачи дальнейшего развития многопланового двустороннего сотрудничества в различных областях. और आज की मुलाकात से हमारे रिश्तों को आगे बढ़ाने पर रास्तों पर बातचीत करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है। Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, Россия и Индия поддерживают десятилетиями особые отношения, дружеские, доверительные. Это фундамент для развития наших отношений в будущем. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, रूस और भारत के बीच बहुत विश्वसनीय रिश्ते बने हुए हैं। इस सिद्धांतों पर वे विकसित हो रहे हैं। И эти отношения носят абсолютно внепартийный характер, поддерживаются подавляющим большинством народов наших стран. और ये किसी से पार्टी या राजनीति पर आधारित नहीं है। लोग, हमारे दो देशों के लोग इस रिश्तों का समर्थन करते हैं। Спасибо. धन्यवाद। आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है और मैं हमेशा अनुभव करता हूँ कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है, बहुत सी चीज़ों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है। Ваше превосходительство, дорогой друг, очень рад вас видеть. И каждый раз, когда я с вами встречаюсь, у меня бывают особые чувства и ощущения, и это дает нам возможность регулярно обмениваться мнениями по разным вопросам. हम लगातार संपर्क में रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है।
इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकतापूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। Мы постоянно находимся в контакте, проводятся регулярные встречи на высоком уровне между двумя странами. В декабре текущего года 1 миллиард и 400 миллионов индийцев с нетерпением вас ждут в Индии для нашего 23-го по счету ежегодного саммита между нашими странами. एक्सेलेंसी, ये हमारे स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। Уважаемый господин президент, это свидетельствует о том, насколько глубоким и всеобъемлющим является наше особо привилегированное и стратегическое партнерство. Даже при самых тяжелых обстоятельствах Индия и Россия всегда шли вперед, плечом к плечу. Наше тесное сотрудничество имеет значение не только для народов наших двух стран, но и для обеспечения глобального мира, стабильности и процветания. एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे। संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। Уважаемый господин президент, по теме продолжающегося конфликта на Украине мы регулярно обмениваемся мнениями. Мы приветствуем все недавно предложенные усилия для установления мира и надеемся, что все стороны будут подходить к этому вопросу конструктивно. Необходимо искать пути для скорейшего завершения конфликта и установления мира. Это и есть призыв всего человечества. Ваше превосходительство, дорогой друг, еще раз большое спасибо. Очень рад вас видеть. Спасибо. धन्यवाद. Дорогие друзья, мы очень рады нашей встрече. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, साथियों, आपसे मिलकर हमें बड़ी खुशी हो रही है। Символично, что она проходит на полях саммита ШОС. ये बहुत प्रतिमात्मक है कि वो SCO शिखर सम्मेलन से इतर हो रही है। Организации, которая позволяет объединять усилия глав государств глобального Юга и Востока. ये एक संगठन है जो ग्लोबल साउथ और ईस्ट के देशों के नेताओं को प्रयास मिलाने को एक मंच प्रदान करता है। Усилия по созданию в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности. यूरेशिया में समान और अविभाज्य सिक्योरिटी ढांचे को बनाने के लिए प्रयासों के लिए एक मंच प्रदान करता है। Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, 21 декабря исполняется 15 лет со дня принятия совместного заявления, в котором отмечен выход наших отношений на уровень особого привилегированного стратегического партнерства. महामहिम प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, 21 दिसंबर को 15 साल पूरे हो जाएंगे जब से एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें हमारे स्पेशल प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप पर किस तरह हम पहुंचे। 15 साल हो गए। И можно уверенно констатировать, что многоплановые российско-индийские связи активно развиваются на этих принципах. और हम ये सच्चाई से बता सकते हैं कि हमारे रिश्ते इस सिद्धांतों पर बढ़ते हैं। Налажено многоуровневое взаимодействие. हमारे बीच बहुत बहुमुखी सहयोग चालू है। Торгово-экономическая кооперация в целом демонстрирует положительную динамику. व्यापार में सकारात्मक गतिशीलता देखने को मिलती है। Развивается туристический обмен. पर्यटकों का आदान-प्रदान विकसित हो रहा है। Мы тесно координируем наши усилия на международной арене. अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम हमारे प्रयासों को समन्वय से करते हैं। Это ООН, БРИКС, Группа 20 и, разумеется, ШОС. UN, BRICS, SCO जरूर इन संगठनों में से शामिल हैं। И сегодня хорошая возможность
обсудить основные задачи дальнейшего развития многопланового двустороннего сотрудничества в различных областях. और आज की मुलाकात से हमारे रिश्तों को आगे बढ़ाने पर, रास्तों पर बातचीत करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है. Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, Россия и Индия поддерживают десятилетиями особые отношения, дружеские, доверительные. Это фундамент для развития наших отношений в будущем. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, रूस और भारत के बीच बहुत विश्वसनीय रिश्ते बने हुए हैं. इस सिद्धांतों पर वे विकसित हो रहे हैं. И эти отношения носят абсолютно внепартийный характер, поддерживаются подавляющим большинством народов наших стран. और ये किसी से पार्टी या राजनीति पर आधारित नहीं है. लोग, हमारे दो देशों के लोग इस रिश्तों का समर्थन करते हैं. Спасибо. धन्यवाद. आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है और मैं हमेशा अनुभव करता हूं कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है, बहुत सी चीज़ों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है. Ваше превосходительство, дорогой друг, очень рад вас видеть. И каждый раз, когда я с вами встречаюсь, у меня бывают особые чувства и ощущения, и это дает нам возможность регулярно обмениваться мнениями по разным вопросам. हम लगातार संपर्क में रहे हैं. दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है. इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकतापूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं. Мы постоянно находимся в контакте, проводятся регулярные встречи на высоком уровне между двумя сторонами. В декабре текущего года 1,4 миллиарда индийцев с нетерпением вас ждут в Индии для нашего 23-го по счету ежегодного саммита между нашими странами. एक्सेलेंसी, ये हमारे स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है. कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं. हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है. Уважаемый господин президент, это свидетельствует о том, насколько глубоким и всеобъемлющим является наше особо привилегированное и стратегическое партнерство. Даже при самых тяжелых обстоятельствах Индия и Россия всегда шли вперед, плечом к плечу. Наше тесное сотрудничество имеет значение не только для народов наших двух стран, но и для обеспечения глобального мира, стабильности и процветания. एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं. हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं. हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे. संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा. ये पूरी मानवता की पुकार है. एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ. Уважаемый господин президент, по теме продолжающегося конфликта на Украине мы регулярно обмениваемся мнениями. Мы приветствуем все недавно предложенные усилия для установления мира и надеемся, что все стороны будут подходить к этому вопросу конструктивно. Необходимо искать пути для скорейшего завершения конфликта и установления мира. Это и есть призыв всего человечества. Ваше превосходительство, дорогой друг, еще раз большое спасибо. Очень рад вас видеть. Спасибо. धन्यवाद. Дорогие друзья, мы очень рады нашей встрече. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, साथियों, आपसे मिलकर हमें बड़ी खुशी हो रही है. Символично, что она проходит на полях саммита ШОС. ये बहुत प्रतिमात्मक है कि वो SCO शिखर सम्मेलन से इतर हो रही है. Организации, которая позволяет объединять усилия глав государств глобального Юга и Востока. ये एक संगठन है जो ग्लोबल साउथ और ईस्ट के देशों के नेताओं को प्रयास मिलाने को एक मंच प्रदान करता है.
усилия по созданию в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности. यूरेशिया में समान और अविभाज्य सिक्योरिटी ढांचे को बनाने के लिए प्रयासों के लिए एक मंच प्रदान करता है. Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, 21 декабря исполняется 15 лет со дня принятия совместного заявления, в котором отмечен выход наших отношений на уровень особого привилегированного стратегического партнерства. महामहिम प्रधानमंत्री जी प्रिय दोस्त 21 दिसंबर को 15 साल पूरे हो जाएंगे जब से एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसमें हमारे स्पेशल प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप पर किस तरह हम पहुंचे. 15 साल हो गए. И можно уверенно констатировать, что многоплановые российско-индийские связи активно развиваются на этих принципах. और हम ये सच्चाई से बता सकते हैं कि हमारे रिश्ते इस सिद्धांतों पर बढ़ते हैं. Налажено многоуровневое взаимодействие. हमारे बीच बहुत बहुमुखी सहयोग चालू है. Торгово-экономическая кооперация в целом демонстрирует положительную динамику. व्यापार में सकारात्मक गतिशीलता देखने को मिलती है. Развивается туристический обмен. पर्यटकों का आदान-प्रदान विकसित हो रहा है.